Thank you. Bye. Hello. So welcome all. Hello. Welcome. Join. Hello. Welcome all. So this class, what I'm trying is I have selected around 39 questions, complete thermodynamics and above XC level. Above XC level. And questions are very good questions. So I'll be discussing all concepts like, heat and work, then first law of thermodynamics, first law for closed system, first law for open system, then steady flow, unsteady flow. Then we have second law of thermodynamics, entropy, pure substances, availability, thermodynamic relations. All questions I have taken. So one should have a lot of patience. Okay. Okay, now. So we'll start in 1 minute. We'll be starting in just 1 minute. Okay. See, I have selected terrific questions, sir. मतलब concepts देते हुए, what I personally feel is all varieties of questions are taken up. All varieties. So that आपको मुझे एक confidence है कि if you solve these questions, I think complete revision will happen neatly. Okay. चलो 1 मिनट दीजिए सर. ओके सो वॉट एवर द मस्त क्वेश्चंस करेंगे सर जस्ट 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं ओके आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम जस्ट इन 2 मिनट्स विल स्टार्ट ओके गुड विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट सब लोग एक बार ओके सर बोलो चलो विल स्टार्ट दैट इज द ग्रीन सिग्नल ओके सर बोलो
ओके सर बोलो। चलो विल स्टार्ट, दैट इज द ग्रीन सिग्नल। ओके सर बोलो। ओके, सो डेफिनेटली कंप्लीट रिवीजन होगा सर, कंप्लीट रिवीजन। और एक बात है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पेशेंट, बिकॉज आई हैव टेकन सो मच टाइम फॉर सेटिंग क्वेश्चंस। लेट मी एक्सप्लेन वेरी क्लियरली। आई हैव टेकन सो मच टाइम फॉर सेटिंग अप, मतलब सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर थोड़ा हाई लेवल है, वन शुड हैव पेशेंस। क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के हैं, दे आर हाई लेवल क्वेश्चंस, सो वन शुड हैव पेशेंस। ओके, और एक बात है सर, आई हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ऑल वैल्यूज आर रेडी, सो दैट कैलकुलेशन के लिए देर विल नॉट बी एनी वेस्टेज ऑफ टाइम. So because if I start calculating in class, it will be wastage of time. So I kept everything ready. Okay, sir? Start kare, sir. And dekho, the sequence is, let me explain very clearly. The sequence is, so आप लोग ready है, तो we will be doing. So this is just a motivation. अगर आप लोग अच्छे sincerely पढ़ रहे हैं, तो I will plan other subjects. Otherwise, must I'll enjoy. No problem at all. No problem at all. मुझे कोई टेंशन नहीं है सर. ओके, चलो. तो इधर ऐसे रखेंगे. ओके, सब लोग रेडी है? देखो, द सीक्वेंस इज हीट एंड वर्क. सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस इन हीट एंड वर्क. Please, though I have selected 39 questions, in each question there are minimum 2 to 3 questions. Suppose we solve these 39 questions, it means we will be solving around 102 questions. Complete हो जाएगा सर, लेकिन it depends on your patience. It depends on your patience. अब मुझे I am ready, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, I am ready. It depends on your patience. So the level is, देखो यही हमारे सब्जेक्ट्स के लिए मोटिवेशन है. अगर आप सब लोग इस सब्जेक्ट से रेडी है, तो आई एम रेडी विथ व्हाट सॉम रेडी है, फ्लूइड रेडी है, मैथमेटिक्स रेडी है, बट दिस इज जस्ट अ मोटिवेशन. ओके, राइट. हीट एंड वर्क. देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज्ड सिस्टम, फॉर ओपन सिस्टम, अगेन इन ओपन, स्टेडी, अनस्टेडी. इसके बाद सेकेंड लॉ के टेरिफिक क्वेश्चंस. हर एक में प्लीज नोट डाउन दैट हल्के फुल्के क्वेश्चंस नहीं दिया. आई हैव टेकन टफ क्वेश्चंस सो दैट आपको अगर इजी क्वेश्चंस आते हैं आराम से कर लेंगे. दैट इज माय प्रॉमिस सर, दैट इज माय प्रॉमिस. ओके, नेक्स्ट. अब ये मत बोलना सर क्वेश्चंस टफ है, बिकॉज इफ यू डू लाइक दिस देन ओनली, स्पेशली एंट्रोपी जनरेशन के मस्त क्वेश्चंस है सर. देन सेकेंड लॉ, देन सेकेंड लॉ के बाद सेकेंड लॉ में ही हम एंट्रोपी डिस्कस करेंगे, प्लस इसी में अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी सारे. उसके बाद हम प्योर सब्सटेंसेस, देन थर्मोडायनेमिक रिलेशंस एंड मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस. सो कंप्लीट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स विल बी कवर्ड टुडे. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सर. लेट अस स्टार्ट दिस. लेकिन कीप योर कैलकुलेटर्स रेडी. मैं तो सारे कैलकुलेट करके रखा, सो दैट आई डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम. सो लेट अस कीप कैलकुलेटर्स रेडी. चलो, रेडी. वी आर स्टार्टिंग सर. ओके, आर यू रेडी? आप लोग रेडी है? चलो, आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस करूंगा सर. बिलीव मी, बहुत मेहनत किया सर. ओके, आपको पता चलेगा. चलो, लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. एक देखो, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है सर. आई विल डू, मतलब सिंपल एक्सप्लेनेशन देते हुए, कॉन्सेप्ट्स नीटली डिस्कस करते हुए कर लेंगे सर. ओके, राइट. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, so we are starting in the name of God. I am a God feared man, so we are starting in the name of God. The first subject revision. तो completion के बाद अब बताना कैसा चल रहा है सर. ओके, चलो. Now, a tank is filled with an electric resistor of negligible mass, holds 1 kg nitrogen. मतलब एक टैंक में, देखो एक बार, कहां गए रहे हो? हाँ, एक टैंक है, उस टैंक में 1 kg नाइट्रोजन इज देयर, एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर इज केप्ट एंड द प्रेशर इज 0.2 मेगापास्कल. 1 मेगापास्कल इज 100 किलो पास्कल. 0.2 मेगापास्कल इज कितना होगा सर? मल्टीप्लाई विथ 100.
it will be 200 kilopascal. And you know, nitrogen can be treated as an ideal gas. नाइट्रोजन को हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे, तो यहां इमीडिएटली टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करना. 273 प्लस 27 इज ये, एंड मास इज गिवन एज 1. सवाल क्या है देखो, एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर. तो ध्यान से सुनिए सर, इज इट अ क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम? पहले आइडेंटिफाई करना, इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम. अब देखो नाउ, ओके ओके, ओवर 5 minutes of time, 5 minutes तक इलेक्ट्रिकल करंट इज पास, तो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 0.15 किलोवाट, मतलब 0.15 kilowatt electrical energy is passed. Okay, during the same period the heat transfer of magnitude occurs, this much occurs from nitrogen to the surroundings. Okay, assuming ideal gas behavior, which of the following statements are true? आप सोच रहे सर ये एक ही क्वेश्चन है, ना 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 ना, इसमें 3-4 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं. देखो, nitrogen's final temperature, the final temperature, the final pressure and nitro. So he is asking the final temperature and pressure of nitrogen. चलो, are you ready sirs? अगर आप रेडी है तो मैं आगे बढ़ूंगा सर. देखो मित्रों, चलो ये ले लेंगे एक बार. There is, लेकिन एक बार देखते हैं सर, ध्यान से सुनो. An electrical resistor is passed. Okay, what is the mass of nitrogen, sir? Mass of nitrogen is 1 kg. Hanji sir, the mass is 1 kg and initial pressure is 200 kilopascal and the initial temperature is 300 Kelvin. And for how long it is passed, sir? For how long? एक बार देखो, कितने समय तक? 5 minutes. So the time is 5 minutes. Okay, no problem at all. And what is the wattage of this resistor, sir? इसका पावर क्या है सर? इसका पावर है 0.15 kilowatt. So 0.15 kilowatt. So therefore electric power is 0.15 kilowatt. Can I write kilowatt as kilojoule per second? Absolutely fine. Now please understand the question properly. आप क्वेश्चन को समझो. इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम के अंदर पास हुआ, क्या नहीं टेक? अगर ध्यान से सुनो सर, अगर मैं इस सिस्टम को ले रहा, ऐसा ले रहा हूं, तो यहां से इलेक्ट्रिकल करंट इज पास. सो इलेक्ट्रिकल करंट पास का मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. सो करंट पास का मतलब वर्क इज डन. प्रॉब्लम हुआ सर? I think actually it is not the problem of my network, sir. It is not the problem of my network. So YouTube में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है सर. I have 2 connections, बहुत ही strong connections है सर, बहुत ही strong connections है सर. I don't know, there should be some. अभी ठीक है सर? I think actually it is not the problem. ठीक है, चलो. I'm really sorry for that. माफी चाहता हूं सर. Really sorry for that. Okay, ready है? चलो, I'm really sorry. तो कोई है मुझे डायरेक्ट, अगर मैं क्योंकि क्लास में बिजी रहता हूं, मतलब कमेंट्स थोड़ा कम देखता हूं, अगर कोई स्टकअप हुआ तो एनीवन कैन कॉल मी. कोई कॉल कर सकते मुझे? कौन है, कौन है कॉल करेंगे? नो, इफ देयर इज एनी टेक्निकल प्रॉब्लम समवन शुड कॉल मी, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाते ही जाता हूं. कौन कौन कौन? अच्छा, कोर विनय. अच्छा ठीक है, कोर विनय, थैंक यू बेटा, थैंक यू. तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं सर. मैं क्लास में पढ़ाते ही जाता हूं. ओके, चलो, वेरी गुड. अभी स्टार्ट करें सर? ओके ओके, राइट. अब देखो नाउ, देखो सर, ये सवाल है सर. देखो 12.25 मैग्नीट्यूड. तो एक काम करते हैं सर, लेट्स कैलकुलेट. All units should be kept in kilojoule. So heat transfer is given in kilojoule. Heat transfer is given in kilojoule. But this electrical work is per second. तो क्या करेंगे सर? इधर देखो. What is the electrical work, my dear students? It is for 1 second, 0.15 kilojoule of energy is transferred. So for, it is 5 minutes. So therefore 5 minutes means 5 into 60 seconds. So therefore 0.15 kilojoule per second. For 1 second इतना हुआ, इतने सेकंड्स के लिए 5 into 60 second. So therefore ये गया. ठीक है, तो कितना आ रहा है सर? What is the electrical work? एक बार देखता हूं कितना आ रहा है सर. इलेक्ट्रिकल वर्क कहां गया रे वो? डायरेक्टली मैं कैलकुलेट किया था, पता नहीं.
6 5 30 300 इंटू 0.15, तो ये आ रहा है 45 किलो जूल. नाउ आई हैव ए क्वेश्चन सर, विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सब लोग कैलकुलेटर रेडी रखना. विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव सर? इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देयरफॉर इट इज माइनस. इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम माइनस. नाउ इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम. तो क्लोज्ड सिस्टम का मेरा इक्वेशन क्या हुआ सर? फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम व्हाट इज माय इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ आई विल राइट दिस एज d dash q is equal to du plus d dash w. Excellent sir, no problem at all. So the tank is rigid, so there is no displacement work. तो टैंक रिजिड है, तो सिर्फ यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड देयर इज अ हीट ट्रांसफर. कितना हीट ट्रांसफर हुआ सर? फ्रॉम दिस हाउ मच इज द हीट ट्रांसफर? 12.25. शुड आई टेक 12.25 प्लस और माइनस? इट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, सो देयरफॉर माइनस 12.25 is equal to du plus work transfer is minus 45. So why have you taken this minus? Because from the system the heat is rejected. देखो मैं कहां से क्वेश्चंस लिया सर, लेट मी टेल यू. आई हैव टेकन फ्रॉम सेंजल एंड बोल्स, मोरान शेपेरो, सोनटैग, वैन वाइलन एंड देन पी के नाग. यहां से आपको रेफरेंस पूरा बताऊंगा सर कहां से लिया. चलो अब ये माइनस क्यों लिया पता चल गया सर, बिकॉज हीट इज रिजेक्टेड. सो डी यू, तो एनीवन विथ व्हाट इज डी यू सर? व्हाट इज डी यू? तो यहां से आपको डी यू मिलेगा. कितना आएगा सर? डी यू मिलेगा, देखो you will get the value of du. Excellent. तो एक बार कैलकुलेट करते हैं सर. 45 माइनस 12.25, तो ये आ रहा है 32.75 किलो जूल. एब्सोल्युटली. इज इट करेक्ट सर? सब लोग रेडी रखना. वेरी गुड. नाउ वन मोर थिंग, you know that nitrogen is an ideal gas. For an ideal gas, the internal energy change can be written as mcv T final minus T initial, that is 32.75. One more thing, if this is in kilojoule, this should be kilojoule per kg per Kelvin. So whenever it is a temperature difference, it doesn't matter whether it is in Kelvin or degree Celsius, no problem. So mass is given, I think. How much is the mass sir? Mass kitna diya sir? Mass is 1 kg. Most unfortunate thing is CV is not given. How can I calculate CV? For ideal gas, you can write CV as R by gamma minus 1. Nitrogen is a diatomic gas, so therefore gamma will be equal to 1.4, but R pata nahi. R can be written as R bar by molecular weight. R bar is 8.314 and the molecular weight of nitrogen is 28. So yahan put karna sir. So therefore CV is equal to 1 by gamma minus 1, 1.4 minus 1, 1 by into R. What is R? 8.314 by 28. As this is in kilojoule per kilomole per Kelvin, तो it will be kilojoule per kg per Kelvin. तो देखो 8.314 आप लोग कैलकुलेटर रेडी रखना, डिवाइडेड बाय 28 बाय 0.4, तो ये आ रहा है CV is equal to 0.7423. यहां से और कुछ छोटे क्वेश्चंस बन गए सर, 1 मार्कर क्वेश्चन. So when molecular mass is given, how to calculate R, ये भी आ गया. So when R is known, how to calculate CV, ये भी आ गया सर. पूरा रिवीजन चल रहा है सर, बहुत मस्त. तो यहां पुट करना, mass is 1 and CV is 0.7423. The final temperature I don't know and the initial temperature is 300. If this is in Kelvin, this will also be in Kelvin. That is 32.75. तो कितना आ रहा है सर? Into 32.75 plus 300, तो ये आ रहा है 3. Final temperature is 344.12 Kelvin. Final is 344. Is it clear, sir? Clear, my dear students. आ गया? If it is clear, I'll proceed, sir. So final temperature, एक बार ऑप्शंस देख लेना. 344. Yes, the final temperature is 344 point something. बिल्कुल सही है सर. This is correct. And one more thing. तो अगर 344 है, सेंटीग्रेड में कितना होगा सर? -273. तो ये 72 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है सर. लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं देता, एक बार केल्विन में एक बार सेंटीग्रेड में नहीं देता है. लेकिन अगर हमारा किस्मत खराब है तो दोनों भी दे सकता, बिकॉज सडनली व्हेन यू कैलकुलेट इन केल्विन यू फॉरगेट दिस. सो देयरफॉर you should check both. Is it okay, sir? This is also correct. Now I have a question, sir. My question is how to calculate the final pressure. Anyone in the class, what logic? So final temperature तो ये भी सही है, ये भी. How to calculate the final pressure? एक बार देखो. The tank is rigid.
so volume is constant. So देखो closed system है, mass is also constant, and you know it is an ideal gas. PV is equal to MRT. और एक point है sir, whenever you use ideal gas equation, pressure should be absolute, temperature should be in Kelvin. ये बहुत ध्यान में रखना sir. Sometimes to confuse you, he may be giving pressure in gauge. अगर gauge में देता है, you convert in absolute, then you can put it here. Very good sir. तो यहाँ पे देखो sir, P by T is equal to mR by V. Closed system, mass is constant, R is constant, rigid tank, volume is constant. All these are constants. So therefore, now I write P1 by T1 is equal to P2 by T2. What is the original pressure, sir? I think original pressure is 200 kilopascal is 0.2 megapascal because answers are given in megapascal. तो आप megapascal में ही रखना. So देखो मित्रों, अब देखो यहां से, please my dear students, इधर देखो. P1 is 0.2 मेगा, अगर ये मेगापास्कल में है तो ये भी मेगापास्कल में होगा. So the initial temperature is 300 Kelvin and P2 I do not know, and what is T2? Just now you calculated 344 point कितना आया था सर? 344.12 344.12. So यहां से please calculate the value of P2. Anyone with P2? फटाफट बोलो सर. I want P2. फटाफट बोलो सर. 344.12 into 0.2 divided by 300. तो ये आ रहा है 0.229 megapascal. So it is MSQ question. तो यहां से this is my 344.229 is the right answer. So I think C is correct now. Is ACD correct? So please note down that though it was a single question, but we calculated two values. So it is similar to your two questions. तो ये पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया सर? Is the first question clear, sir? Yes, bolo, sirs. Clear. Now we'll go to the second one. Second. ये पढ़ो sir. Please read the second question. Let's not waste the time. Yes, exactly, Mr. Riku. क्या है कुशावत? Yes, if you want to take as a heat transfer, yes, it will be heat supply. Okay, right, absolutely, you will get the same answer. Okay, now let's proceed, sirs. देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है सर. दिस इज अ वन क्लोज्ड सिस्टम में अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं सर हम. इन अ क्लोज्ड सिस्टम लेट्स डू सम लवली क्वेश्चंस. एयर यहां का कैच वर्ड है सर मेरे प्यारे दोस्तों. एक बार देखो यहां पे क्या है. द एयर इज कंटेन्ड इन एयर इन अ वेरिएबल लोड पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इक्विप्ड विथ पैडल व्हील. यहां पे पैडल व्हील है. सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. इनिशियली द एयर इज एट 400 kilopascal. ठीक है सर. एंड द टेम्परेचर इज देखो 17 डिग्री दिया है. Convert in Kelvin. 273 plus 17 is 270, 280, 290 Kelvin. These are the initial conditions. The wheel is now turned by external motor until 75 kilojoule per kg of work has been transferred. This paddle wheel is doing how much work, sir? 75 kilojoule of work. So W paddle wheel is equal to minus 75 kilojoule per kg. Why your teacher has taken minus? Because paddle wheel work is done on the system. Okay, right. यहां पे एक बात याद रखना. तो he is taking per kg. तो mass we will take it as 1 kg, sir. Let us take mass as 1 kg. So he said per kg बोला है. Because it is per kg, let us take mass. Okay. During this process, heat is transferred to maintain a constant temperature. Okay. तो जब पैडल व्हील वर्क चल रहा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ेगा. बट टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट द हीट इज ट्रांसफर्ड. हीट ट्रांसफर हो रहा है सर, कोई बात नहीं सर. एंड बट यहां पे कंडीशन क्या है? अलाउइंग द गैस वॉल्यूम टू ट्रिपल. सो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम सर? फाइनल वॉल्यूम इज थ्राइस द देखो. And one more thing, the temperature is kept constant. That is T1 is equal to T2. Okay.
द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज, कैसे करेंगे सर? मस्त क्वेश्चन है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मस्त क्वेश्चन है सर, क्या प्यारा सा क्वेश्चन है सर। यहां पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर सकते हैं सर। देखो एक बार, आई विल टेल यू व्हाट मिस, कितना लवली क्वेश्चन है सर। स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर सकते हैं, इधर देखो। इज इट अ क्लोज्ड सिस्टम? यस सर, फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम आई विल राइट d dash q is equal to du plus d dash w. Absolutely fine. Now I have a question. What will be the change in internal energy? It is an ideal gas. For an ideal gas, internal energy is a function of temperature only. So du is equal to mTV dt, that is T2 minus T1. Is there any change in the temperature? He clearly said, so temperature is remaining constant. When the temperature is constant, this T1 is equal to T2. So this will be 0. So du will be equal to what? 0. तो ये 0 बन गया. So whatever the heat transfer is there, that is equal to work transfer. Now I have a question. How many work transfers are there, sir? कितना अच्छा क्वेश्चन है सर. You love the explanation, sir. Don't think that it is an easy question, sir. बहुत मजेदार क्वेश्चन है सर. बहुत मतलब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है सर. मुझे बताओ, how many works are there, sir? How many works are there? One is paddle wheel work, which is given. Other, displacement. The piston is displaced. What is the process, sir? The piston is moving. What is the process, sir? Anyone? Anyone? What is the process? So, अगर आपको piston displacement work चाहिए, you should know the process. I am asking you a question. I'll wait for 1 minute. What is the process? बताइए सर. What is the process? What is the constant pressure? हाँ अच्छा, constant pressure, pressure constant. यही तो मिस्टेक कर रहे सर आप, यही तो मिस्टेक कर रहे सर आप, यही तो मिस्टेक कर रहे सर. पर्पसफुली दिया सर, आपना एक शब्द कैच नहीं किया सर. इधर देखो रे, इधर देखो, इधर देखो. विनय विनय, चेकिंग चेकिंग चेकिंग. ओके. सी अगेन आई एम टेलिंग ना, नेट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिकॉज नेट इज कंटिन्यूस मेरे पे. आई थिंक क्लियर. पता नहीं यार यहाँ पे. सो एवरीथिंग इज क्लियर. पता नहीं सर. थैंक यू बेटा. तो आप लोग मतलब थोड़ा आज आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. मैं तो रेक्टिफाई करवाऊंगा, लेकिन इट्स नॉट आवर एंड, यूट्यूब का प्रॉब्लम चल रहा है. तो एनीवे जो भी है, विल सी दैट द टेक्निकल टीम इज कमिंग ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे पूरा रेक्टिफाई होगा सर. ओके. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. यस, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. बट एनीवे थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, एंड इसको थोड़ा नेगेटिव में मत लेना. ओके. समवन सेड, समवन सेड, someone said, sir, it is a constant pressure process. It is not a constant pressure process. It is not a constant pressure process, because constant pressure में क्या होता है ना, डियर स्टूडेंट्स, constant pressure में so लोड सेम, पिस्टन का लोड सेम हो गए, सेम लोड पे जाता है, बट इट इज अ वेरिएबल लोड, इट इज अ वेरिएबल लोड एंड इट इज नॉट अ कांस्टेंट. पर्पसफुली आई हैव डिसीव्ड यू. मजा आ गया सर. पर्पसफुली डिसीव किया सर. ये वर्ड वेरिएबल लोड is not a constant process, not a constant pressure process. Hope you understood, sir. Hope you understood. Thank you, बेटा. मतलब जब बफर होगा तुरंत आप कॉल किए. Thank you, thank you. Okay, right. So this is not a constant pressure process. So what is the process? Clearly he said, देखो, temperature is constant. Temperature is constant. Absolutely fine. Absolutely fine. अब हम आगे बढ़ेंगे. So now when the piston is moving, it is a constant क्या बोलते हैं, temperature process. It is a constant temperature process. So therefore now my dear students, there are two words. So heat transfer is equal to, this is displacement work plus it is a, then there is a paddle wheel work. Excellent sir, excellent. Now can you tell me what is displacement work? So the displacement work is given by, it is isothermal process. Isothermal का वर्क क्या होता है? MRTLN V2 by V1. क्या ये सही है या गलत है सर? और
P1 V1 ln V2 by V1 और MRT ln V2 by V1। क्या ये बात सभी को समझ में है सर? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वर्क, जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंड मास इज टेकन एज 1। देखो एक बार, सो मास इज टेकन एज, सो आई राइट पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क, मास इज 1, आर इट इज एयर 0.287। मित्रों थोड़ा इसको मैं इरेज कर दूंगा सर, हाँ 0.287। देखो दिस कैन बी रिटन एज P1 V1 ln V2 by V1 और MRT ln आइसोथर्मल वर्क जानते हैं ना, सो व्हाई आई हैव रिटन इन दिस फॉर्मेट, बिकॉज टेम्परेचर इज नोन। व्हाट इज द टेम्परेचर सर? इट इज 290 केल्विन, तो इनटू 290 into ln। Can you tell me what is V2 by V1? Clearly he said V2 by V1 is 3. It is expansion. V2 by V1 is 3 ln 3। Excellent sir. So यहां से ये वर्क निकल के आ जाएगा सर, it is ln 3 into 290 into 0.287, so this is 91.43 ये हो गया सर। And what is the, this is per kg, why it is per kg? Because already have taken mass as 1. So now what is the paddle wheel work sir? -75. So therefore the heat transfer is equal to, so heat transfer is work, total work is displacement, that is 91.43. It is a positive work because piston is moving up, so expansion work, volume is increasing, so gas is raising the piston। Okay, समझ में आया? So and paddle wheel work is on the system, it is -75। So now you tell me what is the value sir? थैंक यू बेटा, थैंक यू सुमेश। तो आपके लिए आएगा सर, हाँ, देन इट इज कांस्टेंट प्रेशर, एग्जैक्टली -75। तो आंसर आ रहा है 16.4। एक्सेलेंट क्वेश्चन सर, एक्सेलेंट क्वेश्चन, मतलब मजा आ गया सर आपको। इसका आंसर है 16.4 इज द राइट आंसर। इज द क्वेश्चन क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर सर? इज द क्वेश्चन क्लियर सर? वाह वाह, जबरदस्त क्वेश्चन सर, जबरदस्त क्वेश्चन। तो लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम। ये देखो सर, ये देखो सर, कंसिडर अ क्वांटिटी Z। इस बार ना थोड़ा टाइपिस्ट थोड़ा फास्ट में किया, थोड़ा करेक्शंस है तो माफी चाहता हूं सर, बट एनीवे आई विल करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, dz इज इक्वल टू दिया है, तो देखो दो ऑप्शंस दिया है, dz इज mdx प्लस ndy, तो z इज अ प्रॉपर्टी, z इज नॉट अ प्रॉपर्टी, एंड द वैल्यू ऑफ z इज, यहां पे मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, थर्मोडायनेमिक्स भी इन्वॉल्व है, तो मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कर रहे हैं सर अभी। ओके सर, अरे बीच बीच में सब बोलो, आई एम कवरिंग ऑल कॉन्सेप्ट सर। ओके राइट, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखना सर, टेक दिस, dz इज इक्वल टू mdx प्लस ndy। तो यहां पे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, कंपेयर दिस विथ dz इज इक्वल टू 4xy प्लस 4y स्क्वायर इंटू dx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8xy इंटू dy। कंपेयर करना, देखो dx dx, तो m के प्लेस में क्या है मित्रों, so therefore now I'll write m will be equal to, कंपेयर करो, m is equal to 4xy plus 4y square m, and n is equal to, n क्या होगा, n dy, n is 2x square plus 8xy। So you know the condition for exactness. In mathematics we have seen, for the if you want that parameter to be exact, dou m by dou y at constant x must be equal to dou n by dou x at constant y। क्या ये बात सबको समझ में आई सर? This should satisfy. If this is satisfied, then the given differential equation will be exact. All exact differentials are properties. तो z will be property provided this condition is satisfied. अगर हमारा z इस condition को satisfy करता है, then it is a property. Is it okay? चलो, now dou m by dou y, क्या मतलब है सर? डो का मतलब है पार्शियली, सो व्हेनेवर यू राइट पार्शियल यू विल डिफरेंशिएट ओनली विथ y कीपिंग x एज कांस्टेंट, सो देयरफॉर 4 x इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज 1 प्लस यहां पे y है, तो y स्क्वायर इज 2y, already 4 is there, तो 8y, so this will be equal to 4x plus 8y। now dou n by dou y, dou n by dou x, तो देखो
2. X square differentiation is 2x plus you are differentiating with x. So x is 1, y is treated as constant. It is 4x plus 8y. This is 4x plus 8y, 4x plus 8y. So both are equal. So can I say z is a property? So z is a property, mitro. Z is a property. Lekin the problem is not over, sir. It is beyond that. It is beyond that. The problem is not over, sir. It is beyond that. देखो एक बार. So let us take the answer. Let us देखो. The following quantity z is a property. So first, no problem, sir. No problem. होता है. मेरे को नहीं आ रहा है. हाँ. So z is a property. A is correct. Now, what is the value of z? ध्यान से सुनो सर. मित्रों, now we'll do beyond that. Beyond that. देखो देखो. My z is equal to, देखो ये वाला ले लो, dz is equal to 4xy plus 4y square dx plus 2x square plus 8xy into dy. So I think in maths we have studied, sir. ध्यान से सुनो सर. In maths we have studied, sir. मेरे प्यारे सज्जनों, in maths we have studied. What is that we have studied? इधर देखो सर. देखो सर, अगर आपको z चाहिए, you integrate this. If you want z, you integrate this with respect to x. Then you integrate this with respect to y, provided अगर इसमें there should not be any x term. If there is x term, you drop that. यहां पे x term है, ड्रॉप करो. यहां पे x term है, ड्रॉप करो. So therefore this complete will, yes, ये मैथमेटिक्स है सर. अब मुझे ब्लेम मत करना सर. This I have taught very clearly in क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में. मान लो अगर यहां पे एक थर्ड टर्म होता है y dy, मान लो there is a third term which is independent of x, then you should integrate y dy is y square by 2. वो लेना है. लेकिन इस टर्म में x है तो you drop this. इस टर्म में x है, drop this. तो ये नहीं आएगा सर. Simply you integrate this with respect to x. तो क्या होगा? 4y, what is x dx? X square by 2 plus 4y square. What is integral dx? It is x. So therefore my equation will be 2x square y, z is equal to 2x square y plus 4xy square. Please do not blame me because it is simple mathematics. So whatever x is there, you integrate with respect to x, treat y as constant, and here you integrate with respect to y. But in this second term, there should not be any x term. If there is an x term, drop. If there is x term, drop. If there is y term, just integrate and put it here. Put it here. Is the concept clear, sir? Is the concept? Must questions chal rahe, sir. I'm so happy. So 2x square y plus 4xy, 2x square y plus 4xy square. 2x square y plus 4xy square. I think option C is correct. I think option C is correct. Option C is correct. Is it okay? D is wrong. D is wrong. D is wrong, sir. मित्रों सही है? Please explain again this. Okay. मुझे पता था सर. हम I know, sir. I know. I know, sir. I said this is mathematics. इधर देखो एक बार. Now we have, when it is a property, yes, when it is an exact differential equation, z is equal to 4xy plus 4y square dx. I said this is mathematics. dx. अरे मैथ्स में नहीं पढ़े रे. 2x square plus 8xy dy. तो मैं बोला था, एंड देखो देखो, दिस शुड बी, इफ दिस इज dz, आई एम सॉरी, अगर z चाहिए यू इंटीग्रेट दिस. तो मैथमेटिक्स में हम एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए सर. अब ये कोई थर्मोडायनेमिक्स नहीं है सर. नाउ फ्रॉम नाउ ऑन इट इज प्योर मैथमेटिक्स सर. प्योर मैथमेटिक्स क्या है? इसको क्या है ना, x के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट करो फर्स्ट वाला. तो क्या होगा? when you are integrating, treat y as constant. what is x dx sir? x square by 2 plus 4y square. what is integral dx? x plus, is there any only y term? इसमें सेकंड में there should be only y term. if there is x term तो drop.
देयर इज 8xy x है ड्रॉप, तो ये कुछ नहीं आ रहा है, तो ये 0 हो गया है सर। ध्यान से सुनो। सो अगर यहां पे केवल इफ देयर इज ओनली वाई टर्म, यू शुड इंटीग्रेट दैट वाई टर्म एंड पुट इट हियर, यू शुड रिमूव एक्स। ये सर मैथमेटिक्स है सर, आई हैड एक्सप्लेन वेरी क्लियरली इन माई डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी भी नहीं है सर ये अनिल। सो अनिल, आई नो दैट यू आर वेरी वीक। अभी क्लियर है या नहीं है सर? देखो अनिल सेड एक्सप्लेन अगेन एंड भाग गया वो। डिफरेंशियल इक्वेशंस अभी भी नहीं है सर। क्लियर क्लियर क्लियर, राइट। ये क्वेश्चन देखो सर, ये क्वेश्चन देखो सर, मस्त क्वेश्चन है सर। प्लीज रीड दी फोर्थ क्वेश्चन, प्लीज रीड दी फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर सर, वेरी गुड, मस्त क्वेश्चन है सर। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, रीड। अच्छा चल रहा है सर? आर द थिंग्स गोइंग ऑन वेल? आर द थिंग्स गोइंग ऑन वेल? A system consists of 1.2 kg of ideal gas at 4.8 bar pressure and 0.02 meter cube. Executes a cyclic process. Suno carefully. The initial conditions are pressure is 4.8 bar and the volume is 0.02 meter cube. It executes a cyclic process comprising of following three distinct operations. Okay, reversible expansion 2.02 and देखो एक सेकंड, good sir, very good. Now see the question properly. Let me plot it on PV diagram sir. एक बार मैं PV diagram पे प्लॉट करूंगा सर। ठीक है सर। What is the initial pressure given sir? Initially एक काम करते हैं सर, anyway we are calculating the answer is in, देखो एक बार आंसर देखो, आंसर is in किलोजूल सर। एक्चुअली देखो नेट वर्क ट्रांसफर इन किलोजूल, इन किलोजूल। ओके, as the answer is asked in किलोजूल, आप ऐसा करो सर मेरे प्यारे सज्जनों, इस 4.8 बार को किलो पास्कल में कन्वर्ट करना। 1 बार इज 100 किलो पास्कल, 4.8 बार इज इंटू 100 करो तो कितना होगा सर? 480 किलो पास्कल। तो इनिशियल प्रेशर इज 480 किलो पास्कल एंड द इनिशियल वॉल्यूम इज 0.02 मीटर क्यूब। ओके, देखो एक बार 0.02 मीटर क्यूब, देखो एक बार। व्हाट इज द इनिशियल प्रेशर? इनिशियल प्रेशर इज, यहां पे इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे सर। व्हाट इज द इनिशियल प्रेशर? देखो let us take this as 1. This initial pressure is given as 480 kilopascal because 480 bar diya hai. Very good sir. And what is the initial volume given sir? The initial volume is given as 0.02 meter cube. 0.02, is it correct sir? Initial volume is 0.02 meter cube. ठीक है sir, no problem at all. तो initial conditions are given. ठीक है sir जी। ओके, नाउ और क्या बोला है सर? देखो व्हाट इज 1 to 2 process sir? 1 to 2, it is an expansion and please note down that the final volume is 0.08, means original volume is 0.02, the final volume is 0.08, means the volume is increasing, so expansion, it is a positive work. And the pressure is 1.6 bar, matlab it is expanding from 4.8 bar to 1.6 bar. 1.6 bar means 1 bar is 100 kilopascal, 1.6 is 1.6 into 100, that is 160 kilopascal. Okay sir, idhar dekho. Now this pressure is given as, next pressure is given as 100 and ye wala pressure hai 160 kilopascal and what is the volume given sir? Dekho ek bar. And this volume is given as, this is 1 and this is 2 and this volume is given as 0.08. Am I right sir? This is given as 0.08. So but what is the process 1 to 2? ध्यान से सुनो सर, एक बार देखो सर, what is the process 1 to 2? 1 to 2 and the pressure and volume are following linear sir. P is equal to A plus BB. Linear का मतलब straight line. Linear means straight line. Linear means straight line. So you connect the process by a straight line. मित्रों ये straight line है। This is 1 to 2. ठीक है सर, this is 1 to 2. Excellent sir. It is linear.
तो आपको डाउट आ रहा होगा, सर P इज इक्वल टू ए प्लस बीवी, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ना चाहिए सर, तो लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर तो घट रहा है। ये डाउट आया किसी को? किसी को ये डाउट आया सर? Anyone? This is my question. Answer. ये डाउट आया सर? ये डाउट आया सर? किसी को आया सर? नहीं आया। सो एक्चुअली P is equal to A plus B, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, so when the volume is increasing pressure should increase. Anyone? What argument can you give? Already P1 V1 P2 V2 values are given, so it should follow this only. तो क्या होगा सर? अरे यार आइडिया क्या सर, ऐसा होना क्या यार कि आप भी मजाक कर रहे हैं सर? बोलो सर, बोलो, व्हाट आर्ग्यूमेंट कैन यू गिव? अरे यार, कांट बी बी नेगेटिव? क्या बी नेगेटिव नहीं हो सकता है? अगर बी नेगेटिव है, इवन द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव वैल्यू इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। अरे यार बी, यस, एक्सलेंट संचिता, एक्सलेंट एक्सलेंट। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये सब डाउट्स आना चाहिए सर, यू शुड गेट ऑल दिस डाउट्स। यस, when so according to the given information, this is the line, but clearly he said this is the line, so B must be negative, that's it sir, B must be negative। concept आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, okay, no problem, great great। 1 to 2 हो गया। now reversible cooling at constant pressure, ठीक है सर। next is 2 to 3 is reversible cooling at a constant pressure। what is 2 to 3? इधर देखो, constant pressure heating, right, volume बढ़ता है, constant pressure cooling, all these I had explained in my earlier classes। in a constant pressure process, when you are heating it will, the volume will increase, in a constant pressure process when you are cooling, the volume will decrease। okay, so therefore constant pressure cooling बोला है, so this is 2 to 3, this is 2 to 3। I don't know. So you may be wondering, sir, why are you stopping here? I don't know. I can go here also, but stop करके एक बार देखेंगे। This point 3 can be here also. Don't worry, here also. But अब देखते हैं सर, 2 to 3 होगा। Now 3 to 1. Reversible compression according to PV is equal to constant। Can you tell me what is PV is equal to constant, sir? देखो, PV is equal to MRT and mass is constant, R is constant, तो PV कब constant होगा? Only when the temperature is constant। PV constant means rectangular hyperbola, and moreover he said compression। What do we mean by compression, sir? मित्रों, what do we mean by compression? मित्रों, कंप्रेशन का मतलब डेफिनेटली ये वॉल्यूम शुड बी मोर, डेफिनेटली ये वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। दैट्स व्हाई ये इधर नहीं जा रहा है। अगर ये इधर, इससे भी इधर गया तो ये एक्सपेंशन होगा सर, यहां से यहां। बट ही सेड कंप्रेशन मींस कंपेयर टू दिस वॉल्यूम शुड बी लो, बिकॉज ही सेड कंप्रेशन। सो इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, this is my complete cycle। So the same question can also be asked in this way। so he may be giving you the process, represent the cycle on PV diagram। तो क्या ये सबको समझ में आया सर? क्या ये सभी को समझ में आया सर? मित्रों, if this is clear, I'll proceed sir। क्या पूछा है सर? नेटवर्क पूछा है। now you tell me, is it a clockwise cycle or anti-clockwise cycle? Sir, it is a clockwise cycle। For a clockwise cycle, the work will be positive। Network, it is a power producing cycle। Absolutely fine। ध्यान से सुनिएगा सर, absolutely fine। तो मेरे प्यारे दोस्तों, there are two ways to solve this। How can I find work in 1 to 2? Very simple। Work is equal to, it is a closed system, integral PdV। P को A plus B भी रखना and integral dV, volume is varying from 1 to 2। ये एक तरीका है, लेकिन I don't follow that तरीका because it is a straight line। अगर straight line है, can't I find work in 1 to 2? just एक बार देखो सर, कितना सिंपल वे में, मैं दो तरीके से कर लेंगे सर, लेकिन देखो एक बार देखो सर मित्रों। so one way, what is the process followed? pressure is equal to A plus BV। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास के बाद आपको क्या करना है? P1 is given, P2 is given, V1 is given, V2 is given, P1 V1 P2 V2 are known, I can calculate AB, but that is a lengthy process। कुछ मत करना, इधर देखो सर, I want to calculate work in 1 to 2 सर। देखो, this is 1 to 2 process, this is 1 and this is 2, 1 to 2। ये है हमारा P1 और ये है हमारा V1, ये है हमारा P2 और ये है हमारा V2। so therefore
अगर आपको वर्क चाहिए तो प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट करो, इस कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट करो, इसके नीचे। तो व्हाट विल बी द वर्क इन 1 to 2 प्रोसेसर, 1 to 2 के 1 to 2 का बताओ सर एरिया। इट इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है सर, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाफ इंटू दिस हाइट इज 480 and this height is P2. What is P2? 160 into distance between them, V2 minus V1, V2 minus V1. V2 is 0.08 and V1 is 0.02. So can you give me work in 1 to 2 processor? कोई work in 1 to 2 दे सकते सर? Excellent sir. 19.2 is correct. Excellent sir. 19.2 is correct. Yes, yes, yes. 19.2 is correct. You tell me, will it be a positive work or negative work? It will be positive work because it is expansion, volume is increasing, work is done by the system. ये positive work है sir, ये positive work है sir, absolutely fine. Now let's go to 2 to 3. इधर देखो 2 to 3. Can you tell me what is the work in 2 to 3? Constant pressure work is pressure into change in volume. So pressure into what is the change in volume? Final minus initial. So process is taking place from 2 to 3. So final is V3, initial is V2. So it is V3 minus V2. I know the pressure sir. What is the pressure sir? What is the pressure for 2 to 3? ये pressure already मुझे पता है sir. What is the pressure? It is 160 sir. And definitely ये work negative होगा because volume is decreasing. So it is a compression work. So unfortunately I do not know the value of V3. क्या कोई क्लास में बता सकते how to calculate the value of V3? Chocolate दूंगा sir. How do I calculate the value of V3? Anyone in the class? Very simple. 3 to 1 is isothermal, PV is equal to constant. तो can I write my dear, इसको थोड़ा मैं निकाल दूंगा सर, इसको मैं निकाल दूंगा सर, let me, I need, what is the work in 1 to 2? 19.2, इसको काटूं टाका, yes. अब देखिए सर, now देखो, can I write this as P3 V3 is equal to P1 V1 because 3 to 1 is isothermal, PV constant. So P3 V3 is P1 V1. P3 is same pressure. 2 to 3 is a constant pressure. P2 is equal to P3. It is 160. And V3 we do not know. And P1, what is P1 sir? It is 480 into देखो V1 is 0.02. क्या आप मुझे V3 का वैल्यू दे सकते सर 3? आई थिंक आई एम गेटिंग दिस एज 0.06. कैसा? देखो 161 163 देखो 0.023. So this is 0.06 equal to this pressure is 160. 2 to 3 का प्रेशर है 160 into V3 is 0.06 and V2 is 0.08. तो कैन यू गिव मी द वर्क ट्रांसफर इन 2 to 3? यू शुड गेट नेगेटिव. कितना आ रहा है सर? एनीवन? अरे नो वन इज गिविंग आंसर सर, मुझे दुख लगता है सर, थोड़ा दुख लगता है सर. ओ गॉड. यस, इट शुड बी -3.2. नेक्स्ट, नाउ 3 to 1. मित्रों, ऑलरेडी 1 to 2 वर्क इज 19.2 kilojoule. 2 to 3 is this. Now I'll go for mitro 3 to 1. So how to calculate 3 to 1? ध्यान से सुनो. Work in 3 to 1 is isothermal. Isothermal को क्या लिखेंगे? P initial V initial ln V final by V initial, or this can also be written as MRT initial. देखो P1 V1 ln V2 by V1 if the process is occurring from 1 to 2. Initials यहां पे हम P final V final भी लिख सकते सर, because in isothermal PV is constant. This 3 to work 1 can also be written as P final V final ln V final by V initial. ये भी लिख सकते सर because it is isothermal work. Okay, what is initial? Either I can write P3 with, देखो यहां पे मित्रों एनीथिंग इज ओके फॉर मी. सो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं सर, एटलीस्ट आर यू फॉलोइंग सर? यस. अब देखो 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 तो वर्क इन 3 to 1 इज
P initial, V initial. So isothermal is starting from here, ending here. Starting is 0.3. So I can write this as P3, V3, ln. The final is 1, initial is 3. So final is 1, initial is 3. Or this can also be written as, instead of P3, V3, I can write P1, V1 also. So W31 is equal to P3. What is the pressure at 3? 160. And what is the volume at 3? Ye volume 0.06 into ln V1 by V3. V1 is 0.02. V1 is 0.02 and this is V1, 0.02 and V3 is 0.06. थोड़ा जल्दी बता दो सर, let's not waste time. ln 1 by 3 into 0.06 into 160. ये आ रहा है minus 10.54. Excellent, sir. Excellent. I'm so happy with you. Minus 10. So net work is a path function. If you want the total work or net work or summation of work in a cycle, it is the individual work transfer ka summation. So therefore, now I'll go for this. Therefore, net work will be equal to work in 1 to 2 plus work in 2 to 3 plus work in 3 to 1. So therefore, the net work is given by, what is 1 to 2 work, sir? Mitro, 1 to 2 work is 19.2 and 2 to 3 is minus 3.2 and 3 to 1 is minus 10.5. So if I calculate, he is asking net work, I should get a positive work. Kitna aa raha hai, sir? I think I'm getting this as 5.45 kilojoule. Anyone got this answer, sir? Excellent, sir. Excellent. So if I calculate, chale? I'm getting it as 5.45. Let me see. Sorry. D, positive work. So if it is an anti-clockwise cycle, then it will be minus. Okay, sir. We'll go to the next question. आराम से, टेंशन नहीं लेने का सर, आराम से. All varieties of questions will be covered. Do not worry. So एक बार you surrender हो जाओ सर. मैं ये शब्द कभी नहीं बोलूं. देखो एक सेकंड. I never use the word surrender. तो आज क्यों बोल रहा हूं? There is a reason for that, because I have taken such a great quality questions कि एक बार कंप्लीट होने के बाद आपको लगेगा सर ये आप शब्द सही किए. आई एम आस्किंग यू टू सरेंडर ओनली फॉर टुडे बिकॉज आई वांट टू गिव यू समथिंग वेरी ग्रेट फॉर यू पीपल. एक्सी के अबव लेवल आए, आप देखते जाएंगे, पसीना छूटेगा सर. यू विल बी सीइंग, आई एम प्रॉमिसिंग. ये करो, देखो, mass is 3 kg, and the initial pressure is 100 kilopascal. ठीक है सर. And the temperature is 300 Kelvin. ठीक है सर. Is compressed polytopically until the pressure is 1500 kilopascal. And the temperature is 500 Kelvin. ठीक है सर. So it is compressed polytropically. सवाल देखो, क्या हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं सर? ना, in that question we are doing all our MSQ sir. Purposefully I have given. देखो, वेरी गुड सर, थैंक यू. देखो, एक्सेलेंट. यही तो है, आप थोड़ा क्लास के बाद बैठ के देख लो, सारे प्रोसेसेस के रिवीजन हो जाएगा सर, क्लोजर सिस्टम के. उसके बाद ओपन सिस्टम, मजा आएगा सर. जिनको इंटरेस्ट है वही रुको सर. दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड एंड दोज मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स, मतलब जिनको इंटरेस्ट नहीं, कैजुअल है, प्लीज लीव. इवन इफ देयर इज वन कैंडिडेट आई विल टीच, बिकॉज मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ाना है. अगर ज्यादा लोग, देखो आप, यू माइट हैव सीन दिस आल्सो. इफ आई सेड आई विल बी स्टार्टिंग एट 2 o'clock, मैं 2 o'clock स्टार्ट करता हूं. ऐसा नहीं, माहौल बना दो, लोग जमने दो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ये सब नहीं. बिकॉज हमारा फर्ज है आपका टाइम सेव करने का. दैट्स इट. ओके, राइट. देखिए सर, तो व्हाट इज योर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स? मैग्नीट्यूड ऑफ हीट इंटरेक्शन. वाह 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 वाह. It's not a single question, sir. Again, in this question, there are 3 questions. He is asking polytropic index, then work transfer, then heat transfer. Polytropic में heat transfer, work transfer index.
तो व्हाट इज द प्रोसेस सर? मित्रों मजा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग सर, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, गॉड नोस। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज गिवन बाय पीवी पावर एन इज कांस्टेंट, ठीक है सर। यहां पे इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम्स आर नॉट गिवन, तो हाउ कैन आई कनेक्ट? प्रेशर टेम्परेचर्स आर गिवन, कैन आई राइट माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, कैन आई राइट P2 by P1 is equal to P2 by T1 power n by n minus 1? Excellent, sir. Or the same can also be written as P2 by T1 is equal to P2 by P1 power n minus 1 by n. ये भी लिख सकते सर, either I can write this or this, both are same, because अगर ये adiabatic होता है, if it is adiabatic, instead of n it will be gamma. देखो please note down that temperature should be strictly in Kelvin. Temperature should be strictly in Kelvin. चलो सर, T2 is, सब लोग कैलकुलेटर रेडी रखो, by T1 300, P2 is 1500, P1 100 power n minus 1 by n, तो ये हो जाएगा आपका, यू टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, ये तो कट जाएगा, तो log ऑफ 5/3 इज इक्वल टू log, ये जीरो log, तो क्या होगा, ये नीचे आएगा सर, सो ये नीचे आएगा ln 15, क्या ये सही है सर? डायरेक्टली आई एम राइटिंग log a power m is m log a, तो ये नीचे आएगा log 15, so therefore this can be written as n minus 1 by n is equal to ln 5/3 by ln 15. चलो फटाफट, ln 5/3 by ln 15, तो ये आ रहा है सर आपका n minus 1 by n is 0.1886. मेरा कैलकुलेशन भी फास्ट हो रहा है सर, क्योंकि अगले साल मैं भी गेट लिख रहा हूं, आपको कंपटीशन होगा अगले साल, तो दिस कैन बी रिटन एज n बाय, सेपरेट करो सर, n by n is 1 minus 1 by n is 0.1886, तो -1, तो ये आएगा, तो 1 by n is equal to 0.81136 और n is equal to 1 by 0.81136, so ये आ रहा है, so I'm getting the index as 1.23. Is it okay, sir? Excellent, sir. Excellent. Everyone should, ऐसा नहीं कि सर बता रहे चिप्स खाते हुए, you should be serious. यहाँ इस क्लास से there are around 30 students now. From these 30 students, I want 20 ranks. Within 1020 ranks. It is possible only when you do along with me. It is quite possible, sir. So now, देखो, this is correct, sir. This is correct. Now work. Do I know, my dear students? मित्रों, I want work. तो एक काम करता हूं सर, देखो, what is polytropic work? The polytropic work is given by P1 V1 minus P2 V2 by n minus 1. This is polytropic work, sir. This is polytropic work, exactly. So therefore, but unfortunately, volumes are not given. क्या करें सर? Unfortunately, volumes are not given. What is given? Temperature, pressures are given. क्या करेंगे? PV is equal to MRT. So work is equal to PV is MRT1, MRT2. So therefore, excellent, sirs. Excellent. So P1 V1 is MRT1, P2 it is MRT2 by n minus 1. Now, is the mass given? Yes. R. What is the working fluid, sir? देखो वर्किंग फ्लूइड क्या है मित्रों? द वर्किंग फ्लूइड इज एयर. वर्किंग फ्लूइड इज एयर. सो देयरफॉर लेट मी कैलकुलेट सर, लेट मी कैलकुलेट. सो वर्क इज इक्वल टू मास इज गिवन एज, मास कितना दिया रे? मास इज 3 kg. मास इज 3 kg. Mass is 3 kg. R is 0.287. What is the initial temperature, sir? Initial temperature is 300 and the final temperature is 500 given by n minus 1, 1.23 minus 1. So can you give me the value of work? Mass is 3 kg. R is, come on. कितना आ रहा है सर वर्क? Minus 500 given minus 748. Excellent.
748.7 बिल्कुल सही है सर. Is it correct? 3 into 0.287. हाँ गलत आ रहा है क्या? 3 into point. 748.69. So will it be positive work or negative? It will be negative work because it is a compression work on the system. तो माइनस ही आना है सर. Is it okay? So एक बार ऑप्शन देखना सर. एक बार just see the option. Option. The magnitude of work is देखो the magnitude of work is plus. Wrong. The magnitude of work interaction is yes 7. This is correct. Heat interaction. Now I have a question, sir. How can I calculate heat, sir? Can anyone in the class tell how to calculate heat? मैं आपको दो तरीके बताता हूं. देखो d dash q is equal to, it is a closed system. Okay, fine. Now he is asking heat transfer. So it is an ideal gas mcv T final minus T initial plus work transfer. Excellent. So the heat transfer is equal to, so mass is 3 kg. For air, what is the value of CV for air? 0.718. The final temperature is 500. Initially is 500. And the work is minus 748.7. So from here, you tell me what is the heat transfer. Anyone? तो ये आ रहा है 200 into 3 into 0.718. This is one way of calculating the heat transfer. देखो एक बार 300 and something. Yes, 318 na? Yes, 318. So this is also correct, sir. This is also correct. This is also correct. So can you tell me, now are we okay? Now is it okay? Clear? Hello? क्या बेटा? Thank you. See, hello? Now are we okay? Now is it okay? See, actually, I don't know आज ये problem क्यों हो रहा है. To be honest, net तो सही है sir. It's not the problem of net. I don't know the reason. Thank you. Is it okay? See, देखो थोड़ा पेशेंस रखो सर. ठीक है. Someone said, sir, I have taken 1.23. Definitely ऐसे question में there will be a good range given, sir. There will be good range given. You don't have to worry, sir. Good range will be given. Okay, don't worry. So even if the range is very narrow, we can challenge. And the बहुत बार गेट में क्या हुआ ना, जब रेंज नैरो दिया था, we challenged and range increased also. Don't worry about the range. Who asked this question? Arpit. Okay. So is it okay? Is it okay, sir? चलो अब देखते हैं सर. दिस इज अदर वे. देखो gamma is 1.4 because it is air. It is 1.23 by 1.4 minus 1. And what is polytropic work, sir? Already we got it as minus 748.7. So you calculate and tell me. आप बताइए सर. This is another way. Sir. This is another way. 1.4 minus 1.23 by 0.4. I think you are getting the same as minus 318.2. So are you getting the same thing, sir? Because no matter what, whatever may be the procedure is a path function, but your answer is a point function. You follow any path. Is it okay? I think you are getting the same as minus 318.2. Is it okay? Okay. It's not that question, sir. ये beyond है. We calculated index. Did he ask index in GATE 2025? बताओ sir. Did he ask adiabatic index in 2025? No. Did he ask work in 2025? No.
तो ये मत सोचो कि हम एक ही क्वेश्चन कर रहे सर, वी आर डूइंग मल्टीपल क्वेश्चंस, ओके सर। ये समझ में आया सर? तो आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट। वाह, व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ क्वेश्चन सर, व्हाट अ क्वेश्चन, वाह, कम ऑन डू इट। सो बीच बीच में अगर इंटर स्ट्रीमिंग का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो सर, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, टू बी ऑनेस्ट। चलो देखिए सर, a fluid contained in a cylinder receives 150 kilojoule of energy by means of paddle wheel. Must question है sir, really you will enjoy sir, you will enjoy sir, okay, right. A fluid contained in a cylinder receives 150 kilojoule of energy by paddle wheel. So should I take this work, paddle wheel work, as positive or negative? I should take it as negative. Therefore यहां पे लिखेंगे W paddle is equal to 150, इसका मतलब 150 किलो जूल, ठीक है सर। टुगेदर विथ 50 किलो जूल इन द फॉर्म, देखो देखो एक सवाल देखो, इट इज रिसीविंग 50 किलो जूल ऑफ हीट, ओके। तो शुड आई टेक प्लस और माइनस, ध्यान से सुनिएगा सर। सो द हीट ट्रांसफर इज प्लस 50 किलो जूल। So hope this is clear, sir. Hope this is clear. Excellent, sir. So it is receiving heat. When it is receiving heat, it is plus. At the same time, the piston moves in such a way that the pressure remains constant. Okay. Constant during the fluid expansion from 2 meter cube to 5. So the initial volume is 2 cube meter and the final volume is 5 cubic meter. Okay. The change in internal energy and enthalpy, क्या सवाल है सर, मस्त, मतलब मस्त क्वेश्चन है, लेकिन फिगर भी दे रखा है सर मित्रों। देखो ये सवाल है सर मित्रों, दिस इज द क्वेश्चन। देर इज एन इलेक्ट्रिक वर्क, देर इज, देखो देर इज इलेक्ट्रिक वर्क, देर इज, सॉरी, देर इज अ मोटर, पैडल व्हील है और ये पिस्टन मूव हो रहा है सर, पिस्टन इज मूविंग। देखो एक बार, देखो देखो, हाँ ये है सर ना, प्लीज नोट ऑन दैट फ्लूइड मोशन सर टुगेदर विद मैकेनिकल दिस इज 150 पैरेलल टुगेदर विद 50 होल इन द फॉर्म ऑफ हीट। अच्छा ठीक है सर। देखो अभी हम इसको कैसे करेंगे सर, ध्यान से सुनिए क्या सवाल है सर। देखो देखो एक सेकंड, देखो डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू, ठीक है सर। पे कितने वर्क्स है सर, दो वर्क्स है सर। वन इज पिस्टन, देखो देखो, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस वर्क्स आर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क प्लस पैडल व्हील वर्क। Excellent sir, excellent. So what is the heat transfer given? It is plus. So du, what is the piston displacement sir? It is a constant pressure process, so piston displacement work can be written as P into V2 minus V1. So therefore what is the pressure sir? It is 200 and V2 is 5 and V2 is 5. देखो piston displacement, constant pressure work is P into V2 minus V1. So piston displacement P is 200, V2 is 5, V1 is 2. तो ये कितना आ रहा है सर? 3. I think you are getting this as 600. Am I right? 3. Yes. This is 600 plus paddle wheel work. What is paddle wheel work? Minus 150. So therefore, तो ये इधर आएगा सर, तो ये 200 होगा। तो what is the change in internal energy? Can I write it as minus 400? Is the change in internal energy correct, sir? Is the change in internal energy correct, sir? I think the change in internal energy is correct. Yes, yes, yes. So, okay, D is minus 400, minus, this is wrong. This is wrong. So, now let us calculate the change in enthalpy. Let's calculate the change in enthalpy. देखो देखो मस्त सवाल है सर। D dash Q is equal to du plus D dash W. So here
डी डैश क्यू इज इक्वल टू, मित्रों कितना प्यारा सा सवाल है सर। डी यू कैन बी रिटन एज यू टू माइनस यू वन। ओके, पहले ऐसे ही लिखेंगे, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, डोंट वरी डोंट वरी। तो डी यू, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्क एंड पैडल व्हील वर्क। ठीक है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वर्क, देखो P into V2 minus V1 is the displacement work plus paddle wheel work is कितना आ रहा है सर paddle wheel work, somewhere it is given, where is the paddle wheel work, minus 150, this is minus 150, excellent sir। इधर देखो already the heat transfer is given, what is the heat transfer sir, this is 50 is equal to U2 minus U1, du is U2 minus U1, excellent sir। And one more thing, so this is PV2 minus PV1 minus 150. You know very well, P1 is equal to P2 is equal to P. So therefore, 50 is equal to U2 minus U1. PV2 can be written as P2V2. PV1 can be written as P1V1 because the pressure P is either, because the pressure is constant, so P1, P2 are same. So hope you understood, sir. Okay. So आप बताइए minus 150, let us take this minus 50 to this side, तो ये minus 150 इधर आएगा, 50 plus minus 50 is 200, 200 is equal to what is U2 plus P2, H is U plus PV, तो U2 plus P2 V2 is H2 माइनस ऑफ माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे, U1 plus P1 V1, this is H1, so what is the change in enthalpy, so therefore delta H change in enthalpy is plus 200, so therefore must question है sir, it is plus 200, so therefore it is minus 200 is the internal energy change and enthalpy change is plus 200, option C is correct। क्या ये बात सबको समझ में आया सर? This is H1. So what is the change in enthalpy? So therefore delta H change in enthalpy is plus 200. So therefore if you say yes then I'll proceed sir। अच्छा क्वेश्चन था सर। मस्त क्वेश्चन सर। अच्छा रुद्र प्रकाश आ गए, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये करो, वाह 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 वाह, मॉन्स्टर्स। अभी हम ओपन सिस्टम की तरफ आए सर, नाउ वी हैव कम टू ओपन सिस्टम, अब आइए सर, नाउ वी हैव एंटर ओपन सिस्टम। तो क्लोज्ड सिस्टम में we have calculated internal energy change, enthalpy change, then gas constant, then all types of work, polytropic, isothermal, adiabatic, all we have done। so ठीक चल रहा है सर? एक बात देखो, दैट्स व्हाई आई सेड आज सरेंडर हो जाना बोला मैं आपको, पूरा कोर्स मतलब पूरा ये ऑल दिस क्वेश्चंस होने के बाद बैठ के एक बार 5 मिनट सोचो कितना मेहनत किया होगा, क्योंकि आई वांट टू सेव योर टाइम, दैट इज माय इंटेंशन, सेव स्टूडेंट टाइम, दैट इज माय इंटेंशन। भारत का नारा सेव टाइगर, सेव स्टूडेंट टाइम। नो प्रॉब्लम बेटा, चलो ये करो, कम ऑन कम ऑन। देखो ना ओपन सिस्टम, देखो सर, देखो, कंसिडर अ टैंक इन विच देर इज वन इनलेट एंड वन एक्सिट, मतलब ये ओपन सिस्टम है, फ्लूइड इज एंटरिंग एंड फ्लूइड इज लिविंग। फ्लूइड मास एंटर्स द टैंक at the rate of, it enters at 2.5 kg per second. At the exit, the fluid leaves at the rate of 2.5 into 1 minus e power minus 0.025 t। Oh, बोलो एक बार, oh, बोलो एक बार, oh, बोलो, हाँ, the exit is this, देखो exit, देखो, where m dot is in kg per second, okay, t is time in second। If the tank initially contains, देखो देखो, m1 is equal to 100 kg mass, after 10 seconds the amount of mass in the tank, देखो मस्त क्वेश्चन है सर, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो एक बार, देखो एक बार,
ठीक है सर, mass is entering and leaving. Initially, in the control volume, there is 100 kg mass. So he says, but the exit mass is following something like this. Okay, if this is the situation, in after 100 seconds, how much mass will be present in the tank? ये बोला. Is it okay, sir? Have you understood the question? जबरदस्त क्वेश्चन है सर. Have you understood the question, sir? मित्रों, कैसे करें इसको? मजा आएगा सर. वेट, बचपन में आपके टीचर ने पढ़ाया था फॉर अनस्टेडी स्टेट दो चीजें बताया था. वन इज मास कंजर्वेशन, वन इज एनर्जी कंजर्वेशन. व्हाट इज मास कंजर्वेशन? देखो, dm by dt in the control volume is equal to m dot I minus m dot E. क्या ये सही है सर? I think you know this. I think you know this. I think you know this. 100% we know, sir. 100%. अब देखिए, so therefore dm by dt जो भी चेंज कंट्रोल वॉल्यूम में हो रहा है, that is m dot I. What is m dot I? 2.5 minus m dot E. What is m dot E? 2.5 into 1 minus e power minus 0.025 t. Excellent, sir. ये हो गया. So therefore now I'll write, my dear students. मित्रों इधर देखो, देखो dm by dt इन द कंट्रोल वॉल्यूम. आप भी प्रैक्टिस करना सर. तो 2.5 माइनस, ब्रैकेट ओपन करना, 2.5 इंटू 1 इज 2.5, 2.5 इंटू 1 इज 2.5, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 2.5 ई पावर माइनस 0.025 टी. होप दिस इज करेक्ट. एक बार देखता हूं सर. 2.5 माइनस 2.5, करेक्ट. दिस इज गॉन. So therefore, my dear students, so therefore dm by dt in the control volume is equal to 2.5 e power minus 0.025 t. ऐसे क्वेश्चंस एक्सी में आएंगे, डरना मना है. So I am making you strong by giving such questions. Okay sir, सब लोग एक बार वाह. Who said 191? रुद्र प्रकाश जिंदाबाद, रुद्र प्रकाश जिंदाबाद. So dm is equal to 2.5 e power minus 0.025 t into dt. अब इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करना. ये कंट्रोल वॉल्यूम का मास है. इनिशियली कंट्रोल वॉल्यूम में मास m1 है, फाइनल कंट्रोल वॉल्यूम का मास m2 है. इनिशियली टाइम 0 था. कब पूछ रहा है सर? 100 सेकंड के बाद. बहुत बढ़िया सर. देखो ये टाइम के रेस्पेक्ट से इनिशियली टाइम 0, तो इनिशियल मास m1 था. फाइनली टाइम 100 सेकेंड, तो फाइनल मास इज m2. सो लेट्स इंटीग्रेट दिस. मित्रों, दोस्तों, जब मैं आपको मित्रों बोलूंगा तो आपको क्या बोलना है? दोस्तों बोलूंगा. और एक बात है सर, आप लोग मुझे दादा बोल के बुलाना चाहिए. ये मुझे अच्छा लगता है. इट्स ओके दादा बोलना, दादा बोलना. क्या बोलना है? दादा बोलना है. आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? दादा का मतलब ब्रदर रे. क्या स्टूडेंट्स है रे? दादा बोलो मुझे. इंटीग्रल dm इज m. Integral dm is m, upper limit minus lower limit. That should be equal to 2.5 is constant. 2.5 को बाहर लेना. What is e power x dx? E power x dx is e power x only. तो इंटीग्रेशन तो जानते हैं. तो e power mx है तो m नीचे आएगा. e power mx है तो e power mx से होगा. This will come down. तो minus 0.025. And my timing, so our time is 0 to 100 second. So m2. What is the initial mass given? 100. That should be equal to minus 2.5 by minus ये इसका लिया तो ये माइनस है यहां पे, तो ये माइनस इधर अटैच किया 0.025. ओके, e power minus 0.025 and the time is 100 minus e power minus 0.025 and the time is 0. I repeat sir, अपर लिमिट t को 100 पुट करना माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करना. बहुत बड़ी असर. आप जस्ट सब्स्टिट्यूटेड लिमिट्स. मित्रों देखो, m2 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 2.5 बाई 0.025. तो ये आ रहा है, आई डू नॉट नो सर, आई डू नॉट नो सर, माइनस 0.025 इंटू 100. ये आ रहा है 0.08208 minus 0 into something is 0. e power 0 is 1. So ये होगा आपका
तो ये माइनस आ रहा है सर, -2.5 बाई 0.025 इंटू 0.9179, तो ये होगा इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 0.025. So M2 minus 100 is equal to 91.79. So final mass is asked, तो ये उधर जाएगा 191.79 किलोग्राम is the right answer. मस्त क्वेश्चन था सर. बोलो 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 रे बोलो बोलो रे बोलो. I am enjoying. मैं बोला ना सर, मुझे एंजॉय करने का है. आई विल एंजॉय. वाह, डोंट वरी सर, आफ्टर 2.5 hours आई विल गिव यू ब्रेक. आज थोड़ा लंबा क्लास होगा. मस्त क्वेश्चन आ गया सर. हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन सर? सब लोग समझ में आए सर? हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन सर? आए सर जी? थोड़ा मैं भी चाय पी लूंगा, डोंट वरी. मजा मजा रे, मजा मजा रे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह ओह, क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन है सर. आई विल टेल यू, स्टेडी स्टेट प्रोसेस में एक ही क्वेश्चन में सारा खत्म सर. मतलब ऑल कॉम्प्लिकेशंस, जितना प्रॉब्लम हो सकता है उतना है सर. एक बार प्रॉब्लम पढ़ो. दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ स्टेडी फ्लो. क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन है सर. आई विल टेल यू, स्टेडी स्टेट प्रोसेस में स्टेडी फ्लो में वन क्वेश्चन खत्म सर. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, वर्क, मिक्सिंग, वो. एंड फाइनली आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स का एक ही क्वेश्चन हो जाएगा सर. आज बताऊंगा वो. थोड़ा एंथुसियाज्म से पढ़ेंगे सर. लेट्स स्टडी विथ एंथुसियाज्म. आप पढ़ो. इन ए कूलिंग वाटर, एयर एंटर्स एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर. ठीक है. अबव द ग्राउंड लेवल एंड लीव्स एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर. मतलब एयर इज एंटरिंग एट 1 मीटर, एयर इज एंटरिंग एट 1 मीटर एंड लिविंग एट 6 मीटर हाइट. 1 मीटर हाइट से 6 मीटर हाइट पे जा रहा है. द इनलेट एंड आउटलेट, एयर का द इनलेट एंड आउटलेट वेलोसिटीज आर, ओहो, 20 एंड, क्वेश्चन नंबर क्या है सर? ये 8th. इनलेट 20 एंड 30 सर. ओके, तो यहां पे डेटा लिखूंगा सर. आई राइट द डेटा हियर. एक सेकेंड. एयर के लिए, एयर के लिए एक सेकेंड, थोड़ा डेटा लेना है सर. थोड़ा पेशेंस रखो सर. इफ यू कीप अ बिट ऑफ पेशेंस, मैं आपको जन्नत दिखाऊंगा सर. ये मेरा वादा है सर. ये मेरा वादा है सर. प्लीज, वन क्वेश्चन ऑल, वंस फॉर ऑल. आप बोलेंगे क्या सिलेक्शन है सर? देखो, एयर हाइट्स दिया है, तो हाइट्स नहीं लिख रहा हूं सर मैं. क्यों? एक बार देखो. ऑलरेडी एयर के लिए ये हाइट दिया है. तो इस फिगर में आई विल, वॉट एवर द डेटा इज मिसिंग इन दिस फिगर, वो मैं कॉपी करूंगा. मतलब क्या है सर? इधर देखो, एयर इज एंटरिंग हियर एंड लीविंग हियर. तो हाइट ऑफ एयर इज 1 मीटर and the height of air is 6 meter. So definitely the height of air is changing. So potential energy change हो रहा है. Similarly, water is entering at 8 meter and water is leaving at 0.8 meter. So there is a potential energy change also. अब देखो, air के लिए inlet velocity लिखेंगे सर, it is 20. Air के लिए the exit velocity लिखेंगे सर, it is 30. Correct है ना सर? 20, 30. Excellent sir. Back. Water enters at height and, okay, the velocity of water is, देखो, velocity of water, entry is 3, exit is 1. Entry is 3, exit is 1. Entry is 3, exit is 1. ठीक है सर जी. और कुछ? And water temperatures are 77 and 47. 77 and 47. 77. एक सेकंड. 77 and 47. एंड एयर टेम्परेचर देखो,
Air temperatures are 30 and 70. 30 and 70. All are in degree centigrade given. Okay. 30 70 एयर का 77 77 47 और कुछ दिया सर और कुछ दिया सर द कूलिंग टावर इज वेल इन देखो देखो द कूलिंग टावर इज वेल इंसुलेटेड तो व्हाट इज द हीट ट्रांसफर द कूलिंग टावर इज वेल इंसुलेटेड तो हीट ट्रांसफर इज जीरो you incorporate that also. Okay, no, no. Okay, the cooling tower and a fan of 2.5 drives air. मतलब इस fan is nothing but a paddle wheel की तरह. So fan is nothing but work input paddle wheel की तरह. तो what is the work or the paddle wheel work or fan work? It will be minus sir. कितना आ रहा है सर? एक सेकेंड 2.5 किलोवाट. Why your teacher has written negative sir? आपके टीचर ने इसको नेगेटिव क्यों लिया? आपके टीचर ने नेगेटिव क्यों लिया? पैडल व्हील वर्क इज ऑन द सिस्टम. और कुछ डेटा दिया सर? हाँ, ओके. द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर 1 kg per second ऑफ वाटर. अच्छा, अगर वाटर का मास फ्लो रेट है 1 kg per second, what is the mass flow rate of air? ये सवाल है सर. What is the mass flow rate of air? What a question. वाह. सर ठीक है सर. सर ठीक है सर. एक बार क्वेश्चन पढ़ो. Read the question, sir. I have transferred all the data. And one more thing, sir. The specific heat of air is given as 1.005. And the specific heat of what is 4.187. He is asking mass flow rate of air. Water mass flow rate is given. See the question. Let's see the question. Water is entering and water is leaving. So water is entering at 77 degrees centigrade and water is cooled. Water is losing heat to air. जो भी हो रहा है अंदर अंदर हो रहा है सर, because this is completely insulated. ठीक है सर. कैसे करें सर इसको? क्या क्वेश्चन है सर? 2 मिनट टाइम दीजिए. नहीं दूंगा सर, टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना. हाउ डू वी डू दिस सर? हाउ डू वी डू? कुछ नहीं है सर. इट इज अ स्टेडी फ्लो. फॉर स्टेडी फ्लो टोटल एनर्जी एंटरिंग शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी लिविंग. देखो, वाटर अंदर आ रहा है, एयर अंदर आ रहा है, टोटल एंटरिंग प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू व्हाट एयर इज लिविंग, वाटर इज लिविंग. तो आप तो स्टेडी फ्लो एनर्जी जानते हैं सर. इनलेट H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1G प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस. अगर एक फ्लूइड है, अब यहां पे हम लिखेंगे सर. देखो देखो, सो विच फ्लूइड इज कमिंग यहां पे? वाटर इज एंटरिंग, एयर इज एंटरिंग. हीट ट्रांसफर शुड बी इक्वल टू वाटर इज लिविंग एयर. अब मैं इक्वेशन लिखूंगा सर. एक बार देखो, जस्ट से देखो, मास फ्लो रेट ऑफ एयर H1 plus C1 square by, actually it should be 2000 plus Z1G by 1000 plus there is water also entering. ये this is for air. ये है air. H1 plus C1 square by 2000 plus Z1G by 1000. This is for water. Okay. So ये water plus Q, this is the total inlet energy, should be equal to, अरे आप जानते हैं ना, H1 plus C1 square by 2 plus Z1G plus Q. तो H1 plus C1 square by 2 plus Z1G is this total plus Q should be equal to mass of air H2 plus C2 square by 2000 plus Z2G by 1000 plus mass of water H2 plus C2 square by 2000 plus Z2G by 1000 plus 1. Hope the construction of equation is clear. मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, is the construction of equation clear sir? Entering air energy plus entering water energy plus heat transfer should be equal to exit
air energy plus exit water energy plus work. The same equation h1 square देखो h1 square plus देखो h1 plus c1 square by 2000 plus z1 g plus q should be equal to h2 plus c2 square by 2000 plus z2 g plus work. This is the equation. If the construction of equation is clear, then I'll proceed, sir. If the construction of equation is clear, then I'll proceed, sir. H2 plus C2 square by 2000 plus Z2G plus 1 is the equation. If the construction of equation is clear, then I'll proceed, sir. देखो 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 क्लियर 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 विनय विनय said yes. विनय said yes. Only Vinay said yes. Himanshu Mukati. अरे no one is saying yes. अरे क्यू को जीरो पुट करेंगे सर, पहले तो इक्वेशन लिखेंगे सर. फर्स्ट विल राइट द इक्वेशन. व्हाई आर यू वरीड? हाँ अनिल, क्यू जीरो है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. इज इट ओके? आई एम आस्किंग यू द इक्वेशन. यस यस. अब देखो, नाउ स्टॉप. हैव अ क्वेश्चन. एक सेकंड. मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी इधर देखना सर. इसको थोड़ा मैं बोल रहा हूं सर, वेदर आई टेक एंथैल्पी कैन बी रिटन एज, देखो एंथैल्पी कैन बी रिटन एज सीपीटी. ये एयर का है सीपीटी. सो एंथैल्पी कैन बी रिटन एज सीपीटी. एंथैल्पी कैन बी रिटन एज सीपीटी. नाउ द क्वेश्चन इज, शुड आई टेक इन केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड? मैं बताता हूं, एक्चुअली यू शुड टेक इन केल्विन, बट यहां पे लकीली इट डजंट मैटर वेदर यू टेक इन केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड. कैन एनीवन टेल द रीजन? देखो ये भी एयर है, ये भी एयर है. अगर मैं इसको, ये तो इक्वल है, अगर इसको इस साइड ले जाता हूं तो इट विल बी h1 माइनस h2. h1 माइनस h2 का मतलब cp इंटू t1 माइनस t2. सो देयरफॉर ये डिफरेंस हो रहा है. सिमिलरली इसके लिए भी, वाटर के लिए. सो अगर मैं इसको उस साइड ले जा रहा हूं, सो अगर मैं इस साइड ले जा रहा हूं तो ये इक्वल है सर. अगर मैं इसको इस साइड ले जा रहा हूं तो क्या होगा सर? नहीं आ रहा समझ में. इस साइड ले जा रहा हूं तो क्या होगा सर? h1 माइनस h2. तो cp t1 माइनस cp t2, t1 माइनस t2. इट डजंट एक्चुअली, यू शुड टेक इन केल्विन. लकीली यहां पे डिफरेंस दोनों साइड इक्वल है रे. अरे बर्नौलीस इक्वेशन में इस साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करो या फिर ऐड मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज दो सर, इज इट क्लियर सर? अरे यार मैं बोल रहा था. सो ये इक्वल है सर, दिस इक्वल. ये एयर का है सर, एयर का इधर ले जाओ तो h1 माइनस h2 होगा. सो cp t1 माइनस t2. सो देयरफॉर इट इज बिकमिंग डिफरेंस. जब डिफरेंस हो रहा है, इट डजंट मैटर वेदर इट इज इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस. दैट एक्चुअली यू शुड टेक इन केल्विन, बट यहां पे मैं सेंटीग्रेड में भी लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंस आ रहा है. सो अगर आप यस बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा सर. क्रिस्टल क्लियर. अनिल इज ग्रेट. अनिल को तारीफ करो सब लोग. अरे नमूने यूजलेस फेलोस. सो अब MH1 प्लस Q इज इक्वल टू MH2 प्लस W है. तो मैं बोल रहा हूं इसको इधर लाओ, तो M इंटू H1 माइनस H2 प्लस Q प्लस W जो भी है. तो व्हाट इज H1 माइनस H2? CP T1 माइनस T2. तो डिफरेंस हो रहा है सर. फाइनली इट इज बिकमिंग डिफरेंस. तो इसीलिए इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू टेक इन डिग्री और सेंटीग्रेड. अगर मैं देखो, नाउ आई विल टेक इन सेंटीग्रेड. आप क्लास के बाद केल्विन लेना. एक्चुअली इट शुड टेक केल्विन, तो आंसर सेम आएगा. चलो कोई बात नहीं सर. होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. व्हाट इज द मास ऑफ एयर? मित्रों ये एयर का है सर, तो मास ऑफ एयर आई डोंट नो इनटू h1. H1 is CPT1. CP is 1.005. Air है. तो what is the temperature of air at inlet? What is the temperature of air at inlet? Temperature of air at inlet. Air inlet 30 डिग्री. 30 सेंटीग्रेड में ही लेना सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 30. So 30 plus C1. Inlet temperature is 20 sir. एयर का बाई 2000. इज इट 20 सर? एक बार देखते हैं सर. एयर इनलेट इज 20. ओके. एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ एयर सर? इनलेट हाइट देखो, एयर इज एंटरिंग, एयर इसका हाइट है 1 मीटर. सो देयरफॉर 1 मीटर प्लस z इज 1 मीटर, g इज 9.81. सर सबको समझ में आया सर? व्हाई आर यू डिवाइडिंग विथ 1000? यस, यूनिट्स मैच करने के लिए. प्लस मास ऑफ वाटर इज 1. ये वाटर का है सर, वाटर का है CPT. नाउ CP ऑफ वाटर इज 4.187.
and this is CpT1. This is T1 is for water. What is the inlet temperature of water? Water inlet temperature is 77. 77 sir. Sir confuse मत होना sir. Confuse मत होना, इतना डेटा है 77. हाँ जी sir. C1. What is the inlet temperature of water? Water inlet temperature is 3 and water height कितना है? Water inlet C1 is 3 and the height is 8 meter. देखो, what I have done is, my dear students, मैंने क्या किया इधर देखो एक बार, मैं क्या किया देखो, ये वैल्यूज पुट किया सर. मास ऑफ एयर आई डोंट नो, H is CpT1, Cp of air is 1.05, initial temperature is 30, C1 is 20 square by 2000, height of air is 1, तो मास ऑफ वाटर ये होगा प्लस Q, ऑलरेडी Q इज 0, तो मैं नहीं लिख रहा हूं सर. ऑलरेडी अनिल इज 0, ऑलरेडी अनिल इज 0, अनिल को मैं निकाल दे रहा हूं. तो इज इक्वल टू ये is equal to, this total should be equal to mass of air, I don't know, CpT2, Cp of air is 1.005, and what is the final temperature of air? The temperature of air is 70 degrees Celsius. Final 70 degree है, air inlet, air is 70, plus C2 square. What is the exit velocity of air, sir? Air का exit velocity is 30 and the height of air is 6 meter. 30 square by 2000, and air is leaving at what height, sir? Air is leaving at 6 meter. Okay, this is air plus mass of water is 1, mass of water H 4.187 into T2. What is the exit temperature of water? Water exit temperature is 47, sir. This is 47 plus exit temperature, exit velocity of air, exit velocity of water exit is 1 square by 2000 plus at what height it is leaving, sir? किस height पे जा रहा है सर? Water किस height पे जा रहा है? 0.8. So 0.8 मतलब 0.8 into 9.81 by 1000 plus work, and you know the work is, एक बार देख लेना सर, एक बार देख लेना. What is the work, sir? देखो एक बार. The work is minus 2.5. So therefore the work is minus 2.5. एक बार I'll move it and आप देख लेना सर. देखो, everything I have written, sir. Everything I have written. Now the only thing that you need to do is calculation. देखो, 2.5. Work is minus 2.5. एक बार I'll move it and आप देख लेना. मैं एक बार चेक कर लेता हूं सर. I'll check. 1.00 for 30, 20 square, 9.81 plus 4.77, 3 square, 8 into this is equal to mass of air. Close करो रे. अरे यार, कहाँ गया? हाँ, mass of air 1.070 plus 30 square by 2016 to 9.81 plus 4.170. Yes, correct. ये 2.5 मिस हो रहा सर. अरे क्या करे रे, इसको मिनिमाइज कर सकते? एक बार मैं देखता हूं, जूम इन. हाँ, कैलकुलेट करो सर. नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. क्या 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 सर जी? वाटर वैल्यू को एक तरफ करके प्लस वर्क कर दीजिए और एक तरफ एयर.
अरे जो हो रहा है वो करे ना, एयर इज एंटरिंग वाटर इज एंटरिंग, ऐसा कैसा करता रे कि वाटर इधर से इधर जा रहा है तो इधर के वाटर को इधर कैसा लाता रे तू? तो यहां से एयर भी आ रहा है वाटर आ रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ एयर प्लस टोटल एनर्जी ऑफ वाटर प्लस देयर इज हीट ट्रांसफर शुड बी इक्वल टू वाटर इज लिविंग एयर इज लिविंग, वही तो लिखा। ओ चंदन ने एक सवाल पूछा, सर वर्क इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ किलोवाट। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इधर देखो, एक सेकंड इधर देखो, एक सेकंड एक सेकंड चंदन, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। देखो देखो, mass flow rate of air is kg per second. What is the unit of each quantity, whether it is this or this or this, anyone? C is kilojoule per kg per Kelvin and temperature difference है केल्विन और डिग्री सेल्सियस तो सेम है, तो ये कट गया तो केजी केजी गया। किलोजूल पर सेकंड क्या होगा? किलोवाट नहीं होगा सर, ऑल आर इन किलोवाट ओनली। समझ में आया सर? आया नहीं है सर, बोलो। एब्सोल्युटली इट इज द सेम यूनिट सर। नहीं है आपको? अरे यार दिस इज व्हाट इज सी स्क्वायर बाई 2000 किलो जूल पर केजी। किलो जूल, ये हर एक टर्म किलो जूल पर केजी में है सर, हर एक टर्म किलो जूल पर केजी, और मास फ्लो रेट केजी पर सेकंड है, तो केजी केजी गया, किलो जूल पर सेकंड किलोवाट अभी नहीं आया सर। अगर क्लियर है या नहीं है सर आप बताएं। ये कौन है रे? विकास चंद्र, हाय अभिनव महाराज, ये क्या है रे? पता नहीं है कौन है ये विकास वाला। नहीं ऐसा मत करो सर। आप बताएं कौन है विकास चंद्र, हाय अभिनव महाराज, ये क्या है? ऐसा मत करो सर, डोंट डू इट, ओके। सो क्या है समझ में आया? रुद्र, आर द यूनिट्स ओके? नो, आई वांट एवरीथिंग इज नोन, आई सब पता है सर। एक बार देखो, एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट एवरीथिंग इज नोन। एम ए, देखो मैं अभी करता हूं, आपको ना मुश्किल लग रहा है सर आपको, ये एम ए इंटू ये पूरा ऐड करो, ये पूरा ऐड करो, ये आ रहा है 30.36, ये पूरा वैल्यू, ये पूरा ऐड किया सर, ये वाला ऐड करो, दिस इज 322.482 शुड बी इक्वल टू एम ए इंटू 70.86, ये वाला। when you are adding all this it is 70 point, ये total term आ रहा है, this term is coming out to be 196.8 minus 2.5 as it is, so everything is known except MA। तो कितना आ रहा है सर? MA is equal to 3.165 किलोग्राम पर सेकेंड। सो थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन यू नो, क्लियर क्लियर। 196.8 minus 2.5 as it is, so everything is known except MA। कितना आ रहा है सर? MA is equal to 3.165 किलोग्राम पर सेकेंड। सो थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन यू नो, कैलकुलेशन में क्या बताऊं सर, ये देखो स्टेडी फ्लो है सर, इनलेट में जो अरे रे 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 स्टेडी फ्लो है सर, वॉट एवर द मास फ्लो रेट ऑफ एयर इज कमिंग द सेम मास इज गोइंग आउट, वॉट एवर द मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इज कमिंग द सेम। इसीलिए यहां पे देखो एक बार देखो, अरे यार मैं क्या करूं सर, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? अरे यार डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? Is this clear or not clear? If this is not clear, I'll explain again. ये तो steady flow है सर। देखो मैं इक्वेशन क्या लिखा एक बार, let me explain sir, let me explain the equation, very sad sir,
वेरी सैड सर, वेरी सैड का मतलब वेरी सैड। मैं क्या लिखा इधर देखो, ये तो स्टेडी फ्लो है सर। वेन एवर इट इज अ स्टेडी फ्लो, मास फ्लो रेट एट द स्टेडी होने के लिए इनलेट एग्जिट पे सेम होना चाहिए। इधर देखो, मास फ्लो रेट ऑफ एयर H1 plus C1 square by 2000 plus Z1G by 1000. This is the total energy of air which is entering the cooling tower. Water is also entering. This, but please note down that this H1, this H1 is not same. ये एयर का है, ये मास, ये पूरा एयर का है, ये वाटर का है सर, समझ में आ रहा है? तो इसलिए CpT1 जब लिख रहे हैं, ये ऑल इनलेट ऑफ वाटर, इनलेट ऑफ एयर, एयर इज एंटरिंग, वाटर इज एंटरिंग, देन मे बी देयर इज अ हीट ट्रांसफर। मेरा स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन क्या बोलता है? H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1G। H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 Z1G एक फ्लूइड का, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 Z2G दूसरे फ्लूइड का, टोटल एंट्री प्लस Q शुड बी इक्वल टू m dot A H2 plus C2 square by 2000 plus Z2G by 1000, हाँ जी सर, प्लस m dot of water H2 plus C2 square by 2000 plus Z2G by 1000 plus work। देखो, दिस इज द एग्जिट एनर्जी ऑफ एयर, एग्जिट एनर्जी ऑफ वाटर। अभी भी क्लियर नहीं हुआ सर? फोन में कैलकुलेटर से किया है, एक्चुअली आंसर इज बिल्कुल सही है। क्या प्रॉब्लम है रे रुद्र प्रकाश? क्या बात सभी को समझ में आई सर? इज इट क्लियर? अब देखो क्या प्रॉब्लम है सर। दिस इज ऑल एयर इनलेट कंडीशंस, दिस इज ऑल वाटर इनलेट कंडीशंस, दिस इज ऑल एयर एग्जिट कंडीशंस, दिस इज ऑल वाटर एग्जिट कंडीशंस। तो आप देखो, जो एयर अंदर आ रहा है सेम एयर ही बाहर जा रहा है ना सर, बिकॉज स्टेडी फ्लो है। जो वाटर अंदर आ रहा है सेम वाटर बाहर जा रहा है। अरे यार नहीं आ रहा है आपको? इफ दिस इज क्लियर आई विल प्रोसीड। अरे एच इज, अरे रे 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 रे, देखो देखो, एक सेकंड एक सेकंड, कौन पूछा है ये सवाल? आदित्य फिर स्टक हो गया। विनय, आई एम चेकिंग विनय। ओके ओके, क्लियर होगा? इज इट क्लियर? अभी क्लियर, क्लैरिटी है? ओके, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? थोड़ा पेशेंस रखो सर, आई रिक्वेस्ट, थोड़ा पेशेंस रखो सर। पता नहीं क्या हो रहा है। विल ऑल्सो फिक्स इट, विल ऑल्सो फिक्स इट सर, डोंट वरी। नहीं, इतना तो टॉलरेट करना पड़ेगा सर, क्योंकि हम आपके घर को आके पढ़ा रहे हैं। सो एक्चुअली यू आर सिटिंग एट योर होम एंड आई एम टीचिंग ना, तो इतना तो टॉलरेट करना चाहिए। इज इट ओके? पता नहीं क्या हो रहा है। विल ऑल्सो फिक्स इट, विल ऑल्सो फिक्स इट सर। अच्छा क्वेश्चन था या नहीं सर? ऑनेस्टली यू टेल मी, इज इट अ गुड क्वेश्चन? टॉलरेट करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था या नहीं सर? ऑनेस्टली यू टेल मी। देखो, आई थिंक इन दिस यू नीड अ बिट ऑफ कैलकुलेशन, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट हेवी है सर, दैट इज द ओनली कंसर्न। दमदार क्वेश्चन था सर, बिलीव मी, बिलीव मी। ओके चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं सर, आई एम मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं सर। चलो टेक दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go to the next question. Sir, I'm making stronger. I think what you are there. चलो देखो ध्रुव, आप लेट हो गए बेटा। टेक दिस क्वेश्चन। डोंट वरी, अभी ब्रेक नहीं देंगे सर, प्लीज अभी नहीं देंगे। स्टार्ट होके 2 घंटे हो गए। लेट मी टेक अनदर हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, तब ब्रेक दे दूंगा सर। लेट्स डू अनदर। देखो पेशेंस चाहिए सर, ओके। नो ब्रेक, आई विल कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। देखो ये क्वेश्चन करो। A hair dryer is basically a duct in which a few layers of electrical uh, resistors, not restors, are placed. A small fan, हमारा टाइपिस्ट गड़बड़ कर दिया। ए स्मॉल फैन पुल्स एयर इन ए इन। अब बोले ना सर एक्सी लेवल के क्वेश्चंस करवाओ, एक्सी लेवल के क्वेश्चंस कराओ। व्हेन आई स्टार्ट डूइंग दैट क्वेश्चन आप भाग जाते हैं, है नहीं? इट हर्ट्स सर, इट हर्ट्स, यू नो। क्योंकि एक टीचर मेहनत कर रहा है तो आप लोग उस, आपको ना हवाबाजी चाहिए। ओ ऐसा बोलेंगे तो बस भाग के आते हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं। A small fan pulls air in and forces it through resistors where it is heated. Air enters a 1200 watt dryer at 100 kilopascal and 22 degrees and leaves at 47 degrees centigrade. Must question है sir. Again I am telling you ना, जबरदस्त क्वेश्चन है सर। Again I am telling you ना, जबरदस्त क्वेश्चन है सर। देखो फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझो सर। फर्स्ट यू डेफिनेटली एक्सी लेवल के ऊपर है सर, आपको स्ट्रांग बना रहा हूं। जैसे मेरे सॉम के और फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस का सिलेक्शन देखना, तभी भी पता चलेगा। देखो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। ए हेयर ड्रायर इज बेसिकली ए डक्ट इन विच फ्यू लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स आर प्लेस्ड। ए स्मॉल फैन पुल्स इन एयर and forces it where it is heated. Air enters this 12 watt dryer, 1.2 kilowatt dryer at 100 kPa and 22 and leaves at 47. The cross sectional area of the dryer at the exit is given. Neglecting the power consumed by fan and the heat losses through walls of the hair dryer, neglecting changes in kinetic and potential energy, which of the following are correct? पहले देखो, the volume flow rate at the inlet, the volume flow rate at the inlet, the velocity at the exit. So he is asking volume flow rate at the inlet and velocity at the exit. एक बार क्वेश्चन फिगर देखो सर, फिगर इज गिवन, दिस इज द फिगर सर। दिख रहा है सर, कैन यू सी द फिगर? Which of the following are correct? पहले देखो, the volume flow rate at the inlet, the volume flow rate at the inlet, the velocity at the exit. तो यही क्वेश्चंस आएंगे सर, ऐसे लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन फिगर देखो सर, फिगर इज गिवन, दिस इज द फिगर। देखो एक्चुअली क्या है ना, मैं बताता हूं। एयर इज फ्लोइंग, ही क्लियरली सेड नेग्लेक्ट द फैन कैपेसिटी, जो फैन का वर्क है वो नेग्लेक्ट करने के लिए बोला, और ये बोला ये इंसुलेटेड है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एंड दिस ड्रायर से यहां से कितना इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट जा रहा है, कितना इनपुट जा रहा है? 1200 वॉट। So this can be written as 1.2 kilowatt. Okay, but I will write this as minus because ये electrical work है सर, electrical work है, so minus. Now air is entering at 100 kilopascal 22 degrees centigrade and leaving at 47 degrees centigrade and the area of the dryer at the exit is given and the pressure is given. कैसे करें सर? आराम से करेंगे सर, टेंशन नहीं लेने का। ये क्वेश्चन नंबर क्या है सर? क्वेश्चन नंबर क्या है सर? आराम से करेंगे सर। देखो, अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, लेट दिस बी 1, जो भी है इनलेट कंडीशंस, एंड लेट दिस बी 2। अप्लाई करो एंड इक्वेशन अप्लाई करो, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस Z1G प्लस Q इज इक्वल टू
H2 plus C2 square by 2000 plus Z2G by 1000 plus work. तो यू मे बी आस्किंग वन क्वेश्चन सर, आप एक सवाल पूछ सकते हैं, सर लास्ट टाइम आपने मास से मल्टीप्लाई किया, इस बार क्यों नहीं कर रहे? करो, देखो सेम एयर अंदर आ रहा है, सेम एयर बाहर जा रहा है, तो इधर Na से मल्टीप्लाई करो, इधर Na से, दोनों कट जाएंगे. बट प्रीवियस केस में एयर वॉज डिफरेंट, वाटर वॉज डिफरेंट, दैट्स वाई आई टुक दैट. सो हियर ऑल्सो आई एम मल्टीप्लाइंग टोटल विथ मास ऑफ एयर, बट वो कैंसल हो जाएगा. सो इज इट ओके सर? क्लियरली ही सेड. एक बार सवाल देखो सर, एक बार देखो, neglect the change in kinetic energy and potential जी, and neglect losses through and देखो, neglect the power consumed by the fan. Actually fan is consuming some power, but he said neglect that, and he also said neglect heat transfer through walls. चलो कोई बात नहीं, तो इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा सर. काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी गया, हीट ट्रांसफर गया, तो H1 इज इक्वल टू H2 प्लस W. यहां पे एक दिक्कत आएगा सर, एक सेकेंड, यहां पे क्या दिक्कत आएगा सर प्यारे दोस्तों? आई टेल यू व्हाट इज द दिक्कत. व्हाट इज सर 150. देखो ध्यान से सुनो, तो क्या हम इसको मेरे प्यारे दोस्तों आराम से देखो, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू W लिख सकता हूं सर, 100% लिख सकते सर. H1 माइनस H2, हाँ देखो सर, H1 माइनस H2 W. सुनो प्रॉब्लम क्या है पता हो, ऑलरेडी W इज माइनस 1.2 किलोवाट. ये किलोवाट का मतलब किलो जूल पर सेकंड. अगर ये किलो जूल पर सेकंड में है तो ये तो किलो जूल पर केजी है सर. दिस इज किलो जूल पर केजी. इफ यू वांट यू कैन इक्वेट ओनली विथ सेम यूनिट्स. तो इसको क्या किससे मल्टीप्लाई करना है सर? मास फ्लो रेट से. अगर ये केजी पर सेकंड है तो किलो जूल पर सेकंड इज किलोवाट ही किलोवाट. नाउ इट इज टैलिड. होप यू अंडरस्टूड सर. यूनिट्स का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है सर. यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर. यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके नो प्रॉब्लम. m डॉट इंटू H1 इज Cp T1 माइनस T2. देखो m डॉट H1 इज Cp T1, H2 इज Cp T2. Cp को बाहर लेना is equal to work. How much is that work sir? Minus 1.2 because it is on the system. On the system. ठीक है सर. तो पूछा क्या है सर? What is asked in the question? पूछा क्या है? मास फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट पूछा है सर. डोंट वरी. सो इज द क्वेश्चन क्लियर सर? वंडरफुल सर, वंडरफुल, एक्सलेंट. मेरे बच्चे ना, ये इस बार आप तो मैं बता रहा ना, पक्का आप क्लियर करेंगे सर. देखो आई एम नॉट प्रेजिंग यू, ये मुझे सेंस आ गया सर. तो एम डॉट आई डू नॉट नो. ये कौन सा फ्लूइड है रे? कौन सा फ्लूइड है? एयर. इज इट एयर? इज इट एयर सर? इज इट एयर? क्या भी नहीं, चेकिंग चेकिंग, पता नहीं यार. फाइन है सर, क्लियर. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग सर. मे बी बफर हो गया, स्टूडियो का प्रॉब्लम. I'll see that this doesn't recur. मैं देख लूंगा सर इसको, ये थोड़ा ये सही नहीं है. ओके ओके, क्लियर क्लियर. हाँ ओके, वेट. So is what is the value of m dot sir? Anyone with m dot? What is the value of m dot? 1.2 divided by 1.005 divided by. तो मास फ्लो रेट इज सर, कैलकुलेट करो सर. यू पीपल शुड कैलकुलेट. आप देखो whenever there is a buffering, at least you have calculator now, you calculate. So therefore it is 0.04776 kilogram per second. In the question, mass flow rate is not asked. देखो एक बार क्वेश्चन देखो सर, प्लीज प्लीज प्लीज. मेन क्वेश्चन टू यू पीपल इज, मित्रों एक बार
Now my question is, so much of mass is entering and so much of mass is leaving. So as the flow is a steady flow, mass flow rate will never change, sir. Mass flow rate is always constant for a steady flow. Whatever mass is entering, it is leaving. But I think क्या पूछा है सर? He has volume flow rate at the inlet. कैसे करेंगे सर? Anyone, how to calculate the volume? इधर देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. अगर ये मास रेट है तो ये वॉल्यूम रेट होगा. तो इफ यू वांट द वॉल्यूम फ्लो रेट, अगर आपको वॉल्यूम फ्लो रेट चाहिए, इट विल बी मास फ्लो रेट बाय डेंसिटी. ध्यान से सुनो. सो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कैन चेंज, डेंसिटी कैन चेंज, वॉल्यूम कैन चेंज. क्योंकि एक सेकंड देखो, मेरे पास इतना कॉटन है सर, 1 kg कॉटन, इट इज ऑक्यूपिंग दिस मच वॉल्यूम. सो आई विल कंप्रेस इट. मेरे पास इतना कॉटन है, मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो क्या चेंज हो रहा है? डेंसिटी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है. क्या मास चेंज हो रहा है सर? बिल्कुल नहीं हो रहा है. तो इसीलिए देखो मित्रों, P इज इक्वल, देखो हाउ टू कैलकुलेट, ही इज आस्किंग एट द इनलेट. तो मास फ्लो रेट, तो मास तो सेम होता है सर, बिकॉज सेम कॉटन आई कैन कंप्रेस, वॉल्यूम इज चेंजिंग, डेंसिटी इज चेंजिंग. सेम कॉटन आई कैन मेक इट ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम ऑल्सो, लेकिन मास चेंज नहीं हो रहा. इज इट ओके सर? Okay, very good. So how can I calculate density at inlet? Very simple, sir. PV is equal to MRT. P is equal to M by VRT or P is equal to rho RT. So अगर आपको density चाहिए, it will be P by RT. Whenever you want density, it is P by RT. तो यहाँ का density चाहिए. So therefore, rho 1 is equal to P1 by RT1. Don't write R1. Gas constant will be same whether it is inlet or exit. Air है तो उसका R same होता है. One more thing. Whenever R is in kilojoule per kg per Kelvin, P should be in kilopascal. Whenever R is in kilojoule per kg per Kelvin, P should be in kilopascal. देखो, what is the density at 1? देखो, the pressure at 1 is 100. For air, R is 0.287 and what is the temperature at the inlet, sir? इसको केल्विन में रखो. 273 plus 23 कितना होगा सर? 5. कितना होगा सर? 9 ना? 295. 295. Can you give me the value of density, sir? Anyone? Can you give me the value of density, sir? 100 divided by 0.287 by 295. गलत है क्या सर? What is the density, sir? So density is 100 by 0.287 by 295, 1.18. So rho 1 is 1.181. तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट 0.047. कितना आया था सर? 0.04776. 0.04776 by density is 1.181. ये आ रहा है 0.0404. 0.0404. Excellent, sir. But this is 0.0404. Unit will be meter cube per second. Why, sir? It is the volume flow rate. So it is the inlet volume flow rate. नहीं आया सर समझ में? ये आ रहा है 0.0404. 0.0404. Excellent, sir. But this is एक सेकंड देखो. हाँ, the volume flow rate at inlet is, yes. The volume flow rate at inlet is 0.0404. Yes. Now velocity at the exit. He is asking velocity at the exit. How can I calculate the velocity at the exit? Anyone in the class, how to calculate the velocity at the exit? I will give you chocolate, sir. I will give you chocolate, sir. How to calculate the velocity at the exit? Anyone? देखो, will the mass flow rate change? No. No. मास फ्लो रेट हमेशा स्टेडी फ्लो में कांस्टेंट होता है. देखो एक बार, देखो सर. नाउ वी आर प्रोसीडिंग. देखो एक सेकंड. मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट. तो व्हाट इज द मास फ्लो रेट, सर?
Already we have calculated the mass flow rate कितना आया था सर 0.04776. So can I write mass flow rate as rho 2 A2 V2? Can I write mass flow rate as rho 2 A2 V2? Excellent, sir. Mass flow rate can be written as rho 2 A2 V2. Excellent, sir. Now, exit area is given. A2 is given as 60 centimeter square. Centi is 10 power minus 2. Square. Centimeter square. 10 power minus 2 का square. So many meter square. E2 आ गया. V2. Mass flow rate is already known. I don't know rho 2. How to calculate rho 2? अभी तो बताया रो इज इक्वल टू देखो P इज इक्वल टू रो आर टी तो रो इज इक्वल टू P बाई आर टी रो टू इज P2 बाई आर टी टू and what is the exit pressure sir rho 2 is equal to what is the exit pressure sir 100 R is 0.287 and the exit temperature is 273 plus 47 तो ये आ रहा है I think it is 320. Can you give the value of density at the exit, sir? Anyone? The density at the exit, sir? Exit density. Very good, sir. Rudra Prakash. Wow, wow. तू तो छा गया बेटा. What is the exit density? ये आ रहा है. I think it is 320. 320. Can you give the value of density at the exit, sir? Anyone? The density at the exit, sir? Exit density. Anyone? 1.088. Very good. 1.088. My question to you people is it a compressible flow or incompressible flow? देखो, inlet density is different, outlet is different, so therefore it is a compressible flow. Okay, no problem at all. देखो density change हो रहा है सर, inlet density अलग है, मतलब हल्का सा change हो रहा है. Now put it here. देखो, एक सेकेंड. देखो, so mass flow rate 0.04776. Am I right? 0.04776 is equal to rho 2 A2 V2. Rho 2 is 1.088. Area is 60 into 10 power minus 4 into the exit velocity. So if you want the velocity at the exit, it will be 0.04776 by 1.088 into 60 into 10 की power minus 4. Anyone? देखो 0.04776 by 1.088 by 60 ये आ रहा है 7.31 मीटर पर सेकंड. Am I right, sir? Excellent, sir. Excellent students of India. वाह, एक्सलेंट स्टूडेंट. सही चल रहा है सर. एंड यही क्वालिटी के आएंगे सर एक्सी में. दिस टाइम इन थर्मोडायनेमिक्स एक्सी यू शुड स्कोर फुल ऑन फुल सर. फुल ऑन फुल. देखो सारे वेराइटीज वी आर डूइंग. So therefore, the exit velocity at exit is 7.31. So this is correct. So I have a question, sir. मैं तो assume नहीं किया sir. Who said I have assumed? Very good. I love you, sir. You should ask questions. A good student is one who asks good question. A good today I should appreciate कौन है? अर्पित. I should appreciate अर्पित. एक बार देखो अर्पित. देखो अर्पित. Inlet pressure is 100. Exit pressure is 100. Did I assume or it is given in the data? I should appreciate अर्पित. एक बार देखो. आप बताओ सर. Inlet pressure is वाह. Exit pressure is 100. Did I assume or it is given in the data? बोलो अर्पित.
Data given only, sir. I am not assuming. Data is given, sir. Data is given, sir. हाँ, थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चन आएगा सर. सर, in text it was not mentioned. I didn't see the deck. Okay, okay. No problem, beta. Arpit, I love you. The reason being, you have asked the question. Don't go with doubts. You should. A good student is one who asks questions. Please, आप अपने doubts आ रहे तो पूछिए. If you are getting doubts, ask me. So I will also grow with you. Okay? ठीक है सर जी. Now, after covering this question, we'll take a break. इस क्वेश्चन के बाद we'll take a break. After this question, we'll take a break. ओ हो सर, ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है सर. चलो, आई विल डू इट. सर, क्यू इज हेवी बाइनस. चंदन, आप डिस्चार्ज को एवी ले लो, लेकिन मास फ्लो रेट को एवी मत लेना. मास फ्लो रेट इज रो एवी. देखो देखो, चंदन ने एक सवाल पूछा, सर एवी बाई वी वन इज कमिंग. अच्छा, इनलेट वेलोसिटी. अच्छा, हाँ हाँ, इनलेट नहीं पूछा ना. ही डिडंट आस्क इनलेट वेलोसिटी, ही आस्क्ड द एग्जिट वेलोसिटी. इनलेट नहीं पूछा. या अगर इनलेट है तो आप सही है. हाँ, ये क्वेश्चन देखो सर, कुछ अच्छे लेवल के है सर. दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन सर. मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन. चलो एक काम करते हैं सर, ये ब्रेक के बाद ले लेंगे. दिस विल टेक आफ्टर ब्रेक. ब्रेक से पहले और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे. एक बार बता देना सर, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड वी सॉल्व. कितने क्वेश्चंस किए? 9. 10th अभी रख देना. 10th अभी रख देना सर. 10th अभी रख देना. 10th अभी रख देना. 10th अभी रख देना. हाँ हाँ, बोलो सर. 9 completed, 10th स्टार्ट करना है. बिफोर टेकिंग अ ब्रेक विल डू सम मोर क्वेश्चंस. ओके, राइट. ठीक है, एक सेकंड. देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है सर. हाँ जी. The following diagram, TP diagram, inversion curve is shown. Which of the following is correct? इधर देखो सर. You know very well. I think this is one of the isenthalpic curve, because on TP diagram, isenthalpic curve is like this. Exactly. मास फ्लो रेट सेम होगा, डिस्चार्ज सेम होना जरूरी नहीं है. देखो एरिया, देखो प्लीज ऑब्जर्व. डिस्चार्ज क्यों सेम होना जरूरी नहीं है सर? बिकॉज मास फ्लो रेट डेंसिटी इज चेंजिंग. ठीक है. हाँ, चलो ये बोलो. किसी को आता है? देखो एक बार. ऑलवेज रिमेंबर, थ्रॉटलिंग अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर. दिस इज रीजन 1 and this is region 2. Let us assume that, my dear students, मान लो ये कलर ले लेंगे, ये वाला. Let us assume that यहां से थ्रॉटलिंग हो रहा है, मान लो इस रीजन में. सो अगर ये इनिशियल पॉइंट है, ये ले लेंगे सर. सो थ्रॉटलिंग यहां पे प्रेशर है. थ्रॉटलिंग अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर. अगर ये पॉइंट है, so after throttling it will be B, because throttling occurs in the direction of decrease of pressure. देखो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ये प्रेशर PA है, ये प्रेशर PB है, तो प्रेशर इज डिक्रीजिंग. तो वेरी गुड. तो आप बताओ, व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर? इट इज TA. व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? TB. एंड व्हाट इज हैपनिंग टू द टेम्परेचर सर? इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है सर? घट रहा है. इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस रीजन वी कॉल इट एज कूलिंग रीजन. तो रीजन 1 इज कूलिंग रीजन. इधर आइए. Let the initial point be X, let the final point be Y, because throttling occurs in the direction of decrease of pressure. देखो, decrease of pressure. तो यहां पे initial temperature is Tx,
and the final temperature is Ty. So Tx से Ty ज्यादा है sir, because on this axis we have temperature. So in this region temperature is increasing. So this is a heating region. So therefore this inversion curve separates. Why do we call it as inversion curve? Because ये curve cooling और heating को separate कर रहा है. तो region 1 is cooling region. Region 1 is cooling region and region 2 is heating region. Region 1 is cooling region, region 2 is heating region. So is it clear sir? यहां पे और एक पॉइंट बताता हूं सर, एक और एक क्या क्वेश्चन पूछ सकता है सर, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन, यू नो, Joule-Thomson कोएफिशिएंट इज नथिंग बट इट इज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर अंडर थ्रॉटलिंग कंडीशंस। वेरी गुड सर, अब बताओ सर मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या शो कर रहा है सर, देखो ऑन टीपी डायग्राम, ओके, अदर पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सर, अदर पॉसिबिलिटी, this is the pressure and this is the temperature and you know this is isenthalpic curve, ये inversion का है सर, ये isenthalpic है। इधर देखो इसमें स्लोप क्या है सर, देखो एक सेकंड देखो, the slope is dt by dp, मतलब on TP डायग्राम isenthalpic slope is nothing, Joule-Thomson क्वेश्चन। तो इसमें स्लोप क्या है सर, जब प्रेशर बढ़ रहा है, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जब प्रेशर घट रहा है, when the pressure is decreasing, when the pressure is decreasing, the temperature is also decreasing, slope यहां पे पॉजिटिव है, मींस Joule-Thomson कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव इन कूलिंग रीजन। तो ये भी पूछ सकता है इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम व्हाट शुड बी Joule-Thomson कोएफिशिएंट, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी। इस रीजन में क्या हो रहा है सर, जब जब प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो डो टी बाई डो पी, इस रीजन में प्रेशर जब घट रहा है तो ये नेगेटिव है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव इज नेगेटिव, तो इसमें डो टी बाई डो पी, इसमें प्रेशर घट रहा है तो नेगेटिव, व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इज आल्सो डिक्रीजिंग, नेगेटिव बाई नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो इन दिस रीजन Joule-Thomson कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, इन दिस रीजन Joule-Thomson कोएफिशिएंट इज नेगेटिव। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया सर? ठीक है सर, एक्सलेंट। हाँ ये करो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करना है सर, मुझे बहुत तगड़े क्वेश्चंस करना है सर, बहुत तगड़े क्वेश्चंस। अब आफ्टर द ब्रेक क्वेश्चंस विल बी अ बिट टफ, गॉट इट ना, गॉट इट ना, गॉट इट। देखो, फॉर अ सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैस, द डिफरेंस बिटवीन Gibbs function and the Helmholtz function is U minus Ts. I repeat, Gibbs function is H minus Ts. Helmholtz is the difference between Gibbs and Helmholtz. Difference बोला है, difference between Gibbs and Helmholtz. Gibbs is H minus Ts and the Helmholtz is U minus Ts. Excellent, sir. So G minus F is equal to, I think, Ts minus of minus is plus Ts. So ये Ts गया, H minus U. And you know very well, for an ideal gas, enthalpy is a function of temperature. For an ideal gas, internal is a function of temperature. So this is depending on temperature, this is depending on temperature. This total term, G minus F, will depend only on temperature. Therefore, it is a function of temperature only. Is the question clear, sir? Okay, right. मित्रों, नेक्स्ट एक सेकंड, हल्का सा क्वेश्चंस करेंगे, मस्त क्वेश्चंस है सर, डोंट वरी, वी आर ओ ओ मजा आएगा सर, ओ ओ ओ, हाँ ये करो, ये करो, आई विल बी डूइंग ऑल क्वेश्चंस सर, डोंट वरी, आई विल बी डूइंग ऑल क्वेश्चंस। देखो देखो एक बार, देखो एक बार, यही क्वेश्चंस आएंगे सर, एक बार देखो, यही क्वेश्चंस आएंगे, देखो ये तो बेस्ट क्वेश्चन है सर, ये वाला देखो, अंडे, एंट्रोपी प्रोडक्शन अंडों का, देखो एंट्रोपी प्रोडक्शन अंडों का, ऑल दीस विल बी डूइंग। चलो ब्रेक ले ले, अभी ब्रेक के बाद जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे। शैल वी टेक अ ब्रेक सर?
ओके, आप लोग रेडी है? अरे सुमन भारती, अरे सुमन भारती, आप दिल्ली में भी मिले थे। सुमन भारती, आप अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर करते थे। यस यस यस, सब पीडीएफ बीडीएफ सब मिलेगा, क्लास के बाद ही शेयर करूंगा सर। ओके चलो, विल टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। ओके चलो।
चलो 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 चलो, टाइम वेस्ट नहीं करने का रे बाबा। चलो ठीक चल रहा है सर। भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब थोड़ा टफ है सर, बट प्लीज बेयर विथ मी, बिकॉज इफ आई डू सच क्वेश्चंस देन ओनली यू विल एंजॉय। ओह, एक सेकंड, ये पानी चाहिए मुझे, पानी चाहिए रे। पानी, चलिए चलिए, चलो 9 क्वेश्चंस किए ना, गुमसा। चलो रीड दिस क्वेश्चन सर, लेट मी डू दिस आराम से। A piston cylinder device initially contains 2 kg of refrigerant. Initially, the mass is 2 kg. At this is R134A is refrigerant. Okay, right. ये नंबर से कुछ कंफ्यूज मत होना, इट इज द डेसिग्नेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट, मतलब रेफ्रिजरेंट का नाम है वो। ओके, राइट। नाउ द इनिशियल प्रेशर इज 800 किलो पास्कल एंड द टेम्परेचर इज 800। देखो देखो, these are, can you see sir, क्या ये वैल्यूज दिख रहे हैं? तो दिस इज एक्चुअली इनिशियल एंड द मास ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, द मास ऑफ द पिस्टन इज सच दैट a pressure of 500 kilopascal is required to move it. Okay, okay, ठीक है, is required to move it. ठीक है सर। Now, a valve at the bottom of the tank is opened and refrigerant is withdrawn. After a while, the piston is observed to move and the valve is closed when half of the refrigerant is drawn from the tank and the temperature is dropping to 20. ये temperature is dropping to 20. This is the final condition. ठीक है सर। Which of the following statements are true? The work done during the process is 11.6. The work done during the process is 21.6. The magnitude of heat transfer is so and so. The magnitude, so you need to find out the work transfer and you need to find out the work transfer and heat transfer. Very good sir. क्या सवाल है सर। सो यू नो, आपका टैलेंट इस क्वेश्चन में दिखेगा सर। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज, देखो मैं सवाल बताता हूं सर। Initially, the pressure of the refrigerant is 800. I repeat, the initial pressure is 800. Now the valve is opened and the refrigerant is moving out. When the refrigerant is moving out, the pressure in this is dropping down. The pressure is dropping down. But clearly he said, the mass of the piston is such that at 500, the piston starts moving. देखो, when the pressure is 500, the piston starts moving. अब देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा सर। जब वॉल्व ओपन कर दिए, अंदर से रेफ्रिजरेंट बाहर जा रहा है सर, तो व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर? ड्रॉप होगा। तो 800 से मान लो 700 तक। सो द प्रेशर इज ड्रॉपिंग से फ्रॉम 800 टू 700। So when the pressure in this is 700, will the piston drop? No. So ये ड्रॉप होने के लिए यहां का प्रेशर 500 चाहिए। Means initially from 800 kilopascal to 500 kilopascal, the volume, the piston is not moving, the volume is, when the piston is not moving, the volume is constant. Initially it is undergoing constant volume process. नहीं है सर समझ में? Is this clear sir? अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा सर, अगर आप यस बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा सर। आई रिपीट सर, क्लियरली एक बार क्वेश्चन को देखो, क्लियरली देखो, एक बार क्वेश्चन को देखो। द मास ऑफ द पिस्टन इज सच दैट 500 किलोपास्कल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू मूव इट। तो अगर इफ देखो, लुक एट केयरफुली, तो इन दिस इफ द प्रेशर इज 500 देन ओनली इट विल मूव डाउन। ठीक है सर। नाउ हैव यू अंडरस्टूड सर? आपको क्वेश्चन समझ में आया सर? आपको क्वेश्चन समझ में आया सर?
देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, जब आप यहां से रेफ्रिजरेंट को निकाल रहे हैं, when you are removing refrigerant, the pressure is dropping. But when pressure is dropping, actually piston should move down. But clearly he said 500 kilopascal is required to move it down. देखो, if the pressure is, if I am removing this, let us say the pressure has dropped from 800 to 700. Will the piston move? No, because still the pressure is more. तो समझ में आ रहा है? Still the pressure is more. तो ये अगर ये अंदर का pressure, if it drops to 500, then the piston starts moving. Means initially from 800 kilopascal to 500 kilopascal drop of pressure, the piston is not moving, so it is a constant volume process. एक बार piston move होना शुरू हो गया, it is a constant pressure process. क्या ये बात समझ में आ गया सर? अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा सर. दिस इज अ पावरफुल क्वेश्चन सर. एक बार देखो, लेट मी ड्रॉ दिस. देखो, दिस इज वॉल्यूम and this is pressure. So what is the initial pressure, sir? The initial pressure, I'll write this as 0.1. The initial pressure is 800. यहाँ पे 800 kilopascal है. So the initial pressure is 800 kilopascal, 800 kilopascal. Now, can I calculate the initial volume? आराम से देखो सर. Can I calculate the initial volume? ये एक बार देखो. What is the initial volume? मेरे प्यारे दोस्तों, specific volume is equal to volume by mass. So initial mass ये. In this case, mass is not constant because mass is removed. So initial mass is different, final mass is different. ठीक है सर. प्रॉपर एक्सी का क्वेश्चन है सर. एग्जैक्टली प्रॉपर एक्सी का क्वेश्चन है सर ये. वाह, सही बोला रहे तो. देखो, तो मेरे प्यारे दोस्तों, initially at 800 kilopascal and 80 degrees centigrade, what is the specific volume? Let's go to the table. At 800 kilopascal, देखो, 0.8 megapascal मतलब 800 kilopascal. 1 megapascal is 100 kilopascal. 0.8 megapascal is 80 kilopascal. तो first column is specific volume. तो 80 degrees centigrade. तो the specific volume is 0.032659. 0.032659. 0.032659. 0.03659. That should be equal to V1. And what is the initial mass, sir? 2 kg. तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम. हाउ मच इज दिस, सर? तो मल्टीप्लाई करो. इफ आई मल्टीप्लाई दिस, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 0.06532. So this is 0.06532. Now slowly the pressure is decreasing because यहां से हम निकाल रहे हैं. जब निकाल रहे हैं तो प्रेशर घट रहा है, लेकिन still the volume is constant because piston is not moving. Piston कब मूव करेगा? When the pressure is dropping down to 500. When the pressure is dropping down to 500, क्या होगा सर? ध्यान से सुनो सर. अब पिस्टन मूव होने लगा, तब क्या होगा सर मित्रों? तब क्या होगा? At a constant pressure, the volume is decreasing. Volume is decreasing. तो क्या आप बता सकते हैं फाइनल वॉल्यूम क्या है? क्लियरली बोला है सर. The final conditions here are 20 degree centigrade. 20 बोले, एक बार देखते. The final condition is, एक सेकंड. The final condition is 20 degree centigrade. But clearly he said half the volume is lost. तो मैं लिखूंगा फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम बाय फाइनल मास. तो व्हाट इज द फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम? टेबल में दिया है. द फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री. एट 20 डिग्री फ्रॉम द टेबल द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज गिवन. एक बार देखो सर, एक बार देखो. एट 20 डिग्री, कहां गए वो? At 20 degree, 0.042115. 0.042115. 0.04215. This is equal to volume. Can anyone tell what is the final mass? Clearly he said half the mass is removed. Originally the mass was 2 kg. Now half the mass is removed. तो बचा कितना? 1 kg. So therefore the final mass is 1. तो 1 into this. तो final volume will be 0.042115. 0.0, देखो 0.0
42115. Excellent, sir. And you know, this is a constant pressure process. This is a constant because एक बार निकल गया तो at a constant pressure it is moving. At a constant pressure it is moving. So therefore, this is the proper representation of the process. क्या ये बात सभी को समझ में आई सर? इतना classical question है सर. Have you understood? So if you say yes, then I'll proceed. Have you understood, sir? The final, because half of the mass is lost, the final specific volume is given. The final volume can be calculated because final mass is known. So up to this, if it is clear, I'll proceed, sir. तो यहां तक अगर आपको क्लियर लगता है क्योंकि क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं सर, क्वेश्चंस आर ऑफ हाई लेवल. Clearly in the question said, मान लो initially the pressure is 800, so you are removing, the pressure is dropping. So will the piston move? No. Clearly said 500 आने तक है वहीं पे रहेगा because this pressure is more. Once the pressure is coming down, at 500 then it starts moving. So if you say yes, then अभी question हो गया सर, अब क्या करेंगे? Now work. मेरे प्यारे दोस्तों, work in 1 to 2 plus work in 2 to 3. Can you tell me what is the work done in 1 to 2? Zero, because it is a constant work. There is no displacement. This container is rigid, so there is no elastic work. And moreover, देखो, the piston is not moving from 1 to 2, so therefore whatever the work is done, it is done in 2 to 3, 2 to 3. That is the piston displacement work. तो work क्या होगा सर? तो work in 1 to 2 is 0. So work in 2 to 3, it is a constant pressure work. So pressure into change in volume. Pressure is 500. And what is the change in volume? Final volume minus initial volume. So यहां से लेकर यहां तक piston move रहा है. 0.042115 minus 0.06532. So anyone, what is the answer, sir? एक बार 0.042115 minus 0.06532. This into 500. तो ये आ रहा है 11.6 सर. This is coming out to be 11.6. Definitely. देखो, my gap is not doing. This atmosphere is pushing it down. Piston weight and atmosphere pushing it down. So answer is 11.6. Option A is correct. So if this is clear, I'll proceed, sir. So if this is clear, I'll proceed, sir. Sir, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे सर. If you say yes, then I'll proceed, sir. Say something, dear. Say something, dear. Clear, clear, clear. Pakka. Now, stop. Now I want heat transfer. Can I apply d dash q is equal to du plus d dash w? No, वो तो closed system का है. He is asking, already work transfer is over. अब मुझे heat transfer चाहिए. How can I proceed? How to proceed, sir? देखो देखो एक second. Now how can I proceed? एक second. You know very well, my dear students, it is an open system. For open system, I think you know, du by dt is equal to m dot I hi, correct? Plus q dot minus m dot e he minus w dot. To this is it clear, sir? Up to this is it clear, sir? बोलो कुछ तो बोलो. Yes, yes. If it is clear, I'll proceed, sir. ये तो unsteady state का general equation है, sir. Unsteady state का, because this is unsteady. How do you know it is unsteady? Because continuously mass is going. So at any given state, the mass is changing. So therefore it is unsteady. ठीक है, sir. अब देखो, एक काम करता हूँ. So मेरे प्यारे दोस्तों, how much is the mass entering? एक बार देखो. From this control volume, mass is leaving. No mass is entering. There is no entry. So can I say m dot I is 0? 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 Yes, sir. Mass अंदर नहीं आ रहा, sir. It is leaving. So m dot I is 0. So m dot I is 0. ठीक है, sir. Now he is asking heat transfer. अब देखो और एक बात. This is the energy conservation. The mass conservation says dm by dt in the control volume is m dot I minus m dot e. Mass entering is 0.
So therefore, dm by dt is equal to minus m dot e. Very good, sir. Let us put the value here. So therefore, du by dt in the control volume is equal to q dot minus, और देखो माइनस एम डॉट ई को तो ऑलरेडी इसको प्लस ले लेंगे, माइनस एम डॉट ए कैन बी रिटन एज डीएम बाई डी टी. नहीं आ रहा सर समझ में? अरे यार ऑलरेडी इसको प्लस, यहां पे प्लस रख के माइनस रखेंगे, प्लस रख के माइनस रखेंगे, माइनस एम डॉट ई इज एम डॉट ई डीएम बाई डी टी एच ई माइनस डब्ल्यू डॉट. प्लीज टेल मी इफ दिस इज क्लियर. आई विल प्रोसीड सर. If this is clear, I will proceed. If this is clear, I'll proceed, sir. देखो यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. If this is clear, I'll proceed, sir. If this is clear, I'll proceed. Now, let us integrate this. Let us integrate this with respect to time. तो क्या होगा? du. कंट्रोल वॉल्यूम में du क्या होता है? कंट्रोल वॉल्यूम, अरे t q dot means q by t by t, w dot means by t, t t t t t निकल जाएगा तो क्या बचेगा सर? du. du का मतलब u2 minus u1. You are integrating with respect to time, तो ये by time. q dot means q by time, by time, by time, by time. W dot is by time, 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 time. तो सारा टाइम कैंसिल हो जाएगा, मींस इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो du दिस विल बी u2 minus u1 is equal to q, क्योंकि डॉट निकल जाएगा, प्लस dm. व्हाट इज dm सर? m2 minus m1 into he minus w. So I am integrating this with respect to time. दोबारा बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आई हैव डन so many times. देखो एक बार, तो du is u2 minus u1. अरे टाइम के रेस्पेक्ट से बाई टाइम, बाई टाइम, बाई टाइम. तो इफ यू इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो ये टाइम निकल जाएगा, du is u2 minus u1, डॉट निकल जाएगा टाइम के साथ. तो व्हाट इज dm? m2 minus m1 into he minus डॉट. प्लीज टेल मी इज दिस क्लियर? अरे टाइम के रेस्पेक्ट से बाई टाइम, बाई टाइम, बाई टाइम. If you integrate with respect to time, if this is clear, I'll proceed, sir. And my U2 can be written as, you know, the specific internal energy is internal energy per unit mass. So U is equal to M2 U2 U1, M1 U1 is equal to Q plus M2 minus M1 into HE minus W. Hope this is clear. Excellent, sir. क्या ये बात सभी को समझ में आई सर? यहां पे एक गोल्डन पॉइंट बताऊंगा सर, इस बार का क्वेश्चन यही है. आई एम नॉट हैप्पी विथ यू सर. आई एम वेटिंग सर. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. इस बार यही क्वेश्चन आने वाला है सर. क्लियर अप टू नाउ? क्लियर, वेरी गुड. अब देखो, प्लीज वेट. यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है सर. टू मीन्स विच इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वन मीन्स विच इज एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड. There is a small problem, sir. I'll tell you what is the, already work is calculated. Work is minus 11 point something. I got work as minus 11.6. Okay, इसका कोई problem नहीं sir. Work is done. What is the initial mass, sir? Initial mass in the control volume is 2 kg and the final mass in the control volume is 1 kg because half of the mass is removed. So there is no problem with M1, M2. There is no problem with U2 and U1. Why there is no problem, sir? देखो एक बार. Why there is no problem? इधर देखो. This is final. Final internal energy is 242.42. Final is 242.42. 242.42. And the initial internal energy is, देखो, initial internal energy is 290.86. 290.86. In the table it is given. Okay, U1, U2 is also no problem. You are supposed to calculate this. Already M1, M2 is known, U1, U2 is known because it is the final internal energy, initial internal energy. The final is at 20 degrees centigrade, it is given in the table. Initially, it is at 80 degrees centigrade, it is given in the table. M1, M2 are given.
The only unknown is HE. क्या करे सर? क्या करे सर? HE is not known. Now I'll tell you the main problem with this question, sir. The main problem with this question, sir. Main problem with this is, dear students, इधर देखो सर. देखो देखो एक सेकेंड. देखो एक बार. Please look at. When I am opening this, the fluid is going. So initially that fluid is at 800 kilopascal. After some time it is at 700. After some time it is at 600. After some time it is at 500. Means the exit conditions are changing. The exit conditions are changing. So HE is not same. तो क्या करें सर? Whenever the exit conditions are changing, generally we take the exit conditions as initial plus final by 2 average values लेते हैं सर. I repeat, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. If this is clear, I'll proceed. देखो, initially it is at some condition H1. Finally, it is at some condition H2. So, initially it is H1. Finally, it is H2. When it is open, that exit conditions are continuously changing with time. Whenever they are changing with time, generally we take average. तो ध्यान से सुनो, अगर आपको एग्जिट एंथैल्पी चाहिए, इट विल बी इनिशियल एंथैल्पी प्लस फाइनल एंथैल्पी बाय 2. ये हम लेते हैं सर. अब से याद रख लेना. विल इट बी ओके सर? संचिता, वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया. तो व्हाट इज, देखो एंथैल्पी की तरफ आइए. देखो कहां गए वो, टेबल कहां है? टेबल नहीं दिया, एक सेकंड. देखो, हाँ, व्हाट इज इनिशियल H1? देखो 263 इनिशियल H1. सो एग्जिट इज इक्वल टू एवरेज. इनिशियल इज, ये देखो इनिशियली इट इज, देखो इनिशियली 316.99 and the final is 263.48 by 2. Can you tell me what is the exit by 2? कितना आ रहा है सर exit? 316.99 plus 260.48. ये आ रहा है 290.23. 290.235. 290.235. ओके, 290.235. अब पुट कर लेना सर. अब पुट करना सर. M2 final mass is 1 kg. U2 242.42. Initial mass is 2 kg. U1 290.86 is equal to Q. Plus final mass is 1 kg. Initial mass is 2 kg. Final HE 290 point कितना है सर एवरेज वैल्यू? 290.235 and all 235 and minus work is 11.6. Is it correct, sir? Work is 11.6. Is it stuck, Anil? Is it stuck? Someone said it is stuck. Nah. And minus work is 11.6. Is it stuck, Anil? No. So calculate the value. Calculate the value, sir. One minus 2 is minus 1. 290.235 minus of minus plus 11.6. So I'm getting this value as minus 60.6. Clear? क्या सवाल है सर? What a question! Beauty at its best. Beauty, इससे टफ हो ही नहीं सकता सर.
You cannot have a question. This will be your GATE 2026 XC का ये क्वेश्चन आया है, लिख के रख लेना. किस सर सब लोग बोलो एक बार इस क्वेश्चन को तालियां मारो. So let me complete formalities of this question. So yes, it is 60.7 and ये okay. ठीक है sir. Very good. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Come on, come on. Come on, come on. What a question. What a question this is. Okay, sir. Okay, sir. Array, you people are not responding. I am leaving, sir. You people are not responding. I am leaving. मैं जा रहा हूं, sir. You people are not responding. कितना enthusiasm है आपके टीचर में. चलिए. सर आप तो टफ क्वेश्चंस दे रहे हैं सर. आप तो देना पड़ता है सर. अनस्टेडी स्टेट में टफ क्वेश्चंस देना ही पड़ता है सर. विनय just wait bit. I'm checking. Okay. Okay. Now is it okay? Is it okay? Okay, sir. अरे यार, आई एम रियली सॉरी सर. पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है. मुझे ना हाथ पैर बंदाल के मुझे कहीं फेंक देना सर. आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूं. एम आई वेस्टिंग योर टाइम सर? एम आई वेस्टिंग योर टाइम सर? मुझे हाथ पैर बंदाल के कहीं फेंक देना बेटा. जस्ट थ्रो मी समवेयर. सॉरी सर. पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है. मुझे फेंक देना सर. आई डोंट डिजर्व. आई डोंट डिजर्व. यू थ्रो मी. This is the question, sir. Again, GATE 2026 XC or any. देखो सर, देखो. See the question. Insulated 8-meter cube rigid tank contains air at. So let me write. The initial pressure is 600 kilopascal. And the initial temperature is 400 Kelvin. ठीक है सर. A valve is connected to the tank and is opened. The air is allowed to escape until the pressure inside drops to 200 kilopascal. The air temperature during the process remains constant.
So the final temperature is also same. How? By an electrical resistance heater placed in the tank. The electrical supplied in kilowatt. देखो देखो, let me explain the question. क्या ही तो question है sir. क्या ही तो क्वेश्चन है सर. व्हाट अ क्वेश्चन. अ लवली अनस्टेडी स्टेट के ब्यूटीफुल क्वेश्चंस वी आर डूइंग सर. देखो एक बार. There is a tank, a rigid tank. So can I say the volume of the tank is changing? Nah. So whether it is the initial volume or the final volume, the volume is same. That is 8 meter cube. So initially the pressure of air, air to ideal gas, air. Okay. So initially the air is at 600 kilopascal, temperature is 400 and the volume is 6. And the valve is open. When the valve is open and the air is going out, air is going out. How long air is going out? Until the pressure in this is dropping down to 200. So lekin the temperature is kept constant by electrical heater. By this electrical heater, the temperature is kept constant. And clearly he said it is an insulated tanki. It is an insulated tanki. Very good. Hope you understood. Now what he says. So in order to keep the temperature constant and drop the pressure from 600 to 200, what should be this electrical work? That is the question asked, sir. Hope the question is clear. Hope the question is clear. Question is clear. So apply unsteady state equations. Chalo, we'll start. एक सेकंड देखो सर. You know, dm by dt in the control volume is m dot I minus m dot E. Let us take this as the control volume. Is there any mass entering the tank? Is there any mass entering the tank? No. So m dot I means in the tank nothing is entering. Entry is 0. Only there is exit. So my first equation becomes dm by dt in the control volume is minus m dot E. Let it be equation 1. Now let me apply the second equation. What is the second equation? Mitro, what is the second equation? Dekho, what is the second equation? The second equation is du by dt in the control volume is equal to m dot I hi plus q dot minus m dot E he minus w dot cb. ठीक है sir. Wait. So let's proceed. So it is insulated. The heat transfer is 0. No mass is entering. So entry mass is 0. So du by dt in the control volume is equal to minus m dot E he minus w dot cb. Excellent. इधर देखो sir. Okay, so du by dt in the control volume is equal to minus m dot E. What is minus m dot E, sir? Minus m dot E. This minus m dot E can be written as dm by dt in the control volume into he minus w dot cb. Excellent, sir. Hope this is clear. Mitro, is it clear? Much the question है, sir. Mitro, is it clear, sir? Yes. Now, let's proceed, sir. देखो एक सेकंड. हाँ, देखो डॉट मीन्स बाई टाइम. तो टाइम कैन बी कैंसल. व्हेन यू इंटीग्रेट दैट टाइम विल गो. सो व्हाट विल बी दिस du का मतलब u2 माइनस u1 dm m2 माइनस m1 into sorry m2 minus m1. This will be m1 m2 minus into he minus wcb. ठीक है सर. Wait. Let me write. Your time dot means by time. You integrate with time will get cancelled. Du in the control volume change means in the control volume changes are 1 and 2. Initially it is 1, finally it is 2. Therefore change is u2 minus u1. Tm is change m2 minus m1 into he wcb. Okay. अब क्या करें सर? This can be written as m2 into u2 minus m1 into u1. ठीक है सर. Is equal to m2 minus m1 into he minus w.
Excellent, sir. Up to this, देखो, the internal energy can be written as, देखो, specific internal energy is total by mass. So internal energy is mass into specific. So U2 M2 U2 U1 M1 U1 M2 minus M H यहाँ तक आ गया सर. Up to this, if it is clear, I'll proceed, sir. Up to this, if it is clear, I'll proceed, sir. Up to this, if it is clear, I'll proceed, sir. I'm waiting for your answers. मैं आपके आंसर्स के लिए वेट कर रहा हूं सर. If this is clear, okay sir, okay. अब देखो, my dear loving students, यहां पे कुछ बोला है सर. कूली देखो एक बार, कूली देखो. Can I write HE as CPTE? 100% sir. Can I write U1 as CVT1? Can I write U2 as CVT2? And luckily, something is constant, sir. देखो देखो, luckily, and you know, my dear students, देखो देखो देखो, the fluid is flowing, but what is kept constant? ध्यान से सुनो, एक बार पढ़ो सर क्वेश्चन को. The temperature is kept constant, whether it is inlet or exit or final or initial, temperature is not changing. So whether it is T1 or T2 or TE, every time, देखो, so when the fluid is flowing, you are keeping its temperature constant. At some point, when the fluid is flowing, the pressure is dropping. When the fluid is flowing, pressure is dropping. But we are keeping the temperature constant by this. So whatever the fluid is flowing, it is flowing at a constant temperature. Because initially the temperature is 400. Initially the temperature is 400. Initially the temperature is 400. And it is as the fluid is flowing, देखो, the fluid is flowing, initially the temperature is 400. देखो दोबारा बता रहा हूं. So with this heater ये flow हो रहा है 400. The temperature is kept constant. Can I say with what temperature it is leaving? Exit temperature or inlet, initial or final, all are same. Is it okay? So here the temperature is not changing, sir. Here the temperature is not changing, sir. जी देखो एक बार. हाँ जी सर, देखो एक बार. So therefore, now I'll write here, मित्रों, now I'll write, देखो एक बार, M2 U2, टेंशन मत लेना सर, M1 U1 is equal to M2 HE minus M1 HE minus W. आपको W चाहिए तो W को इधर लाना, W को इधर लाना. So W को इधर लाएंगे तो ये होगा M2 HE minus M1 HE, W को इधर लाना, माइनस ये उधर जाएगा, माइनस M2 U2 प्लस M1 U1. अप टू दिस, आई रिपीट सर, आई एम ब्रिंगिंग W टू दिस साइड. ओके, तो ये तो इधर ही रहेगा. आई एम ब्रिंगिंग इट टू दिस साइड, थ्रोइंग दिस टू that साइड. तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा. ओके, सो W इज इक्वल टू M2 माइनस M1 into HE minus of M2. Oh, wait. मैं करूंगा ना सर, मैं करूंगा ना. Can you tell me? हो गया सर, हो गया. Can you tell me what is U1 CVT1? What is U2 CVT2? But T1 is equal to T2, so U1 is equal to U2. Agreed or not? Agreed or not, sir? बिल्कुल agreed, sir. बिल्कुल agreed, sir. बिल्कुल agreed. So therefore, so this HE can be written as, मित्रों इसको इरेज करेंगे, this HE can be written as, मेरे प्यारे बच्चों देखना, एयर है तो M2 minus M1, HE can be written as CPTE minus M2 U2 is U1 U2 both are same. इसको लिखेंगे मित्रों, एक सेकंड, don't worry, U2 can be written as CVT2 plus M1. U1 can be written as CVT1. Excellent, sir. So, but you know, whether it is T1 or T2 or TE, all are same. Initially, it is at temperature T1. Open किए, fluid जा रहा है, तो exit, the temperature is maintained constant, whether it is leaving or initial or final, whether it is T1 or T2 or TE, all the temperatures are constant because it is given in the question. Okay or not, sir? Okay or not, sir? अरे यार, I lost interest in you people. मैं आप में इंटरेस्ट लूज किया सर. अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा सर.
So is this clear, sir? अरे initially it is at T1, तो wall open किए, and we are maintaining the temperature constant. Whatever the temperature, the same temperature से बाहर जा रहा है. Exit हो या initial हो या final हो, all are same. Is it okay? Yes. So I will write this as मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी W is equal to M2 minus M1 CPT minus M2 CVT प्लस M1 CVT. देखो T1 इज इट 400 सर? एक बार मैं देख लेता हूं. इज इट 400 सर? यस इट इज 400. यस इट इज 400. एब्सोल्युटली फाइन. यहां तक क्लैरिटी है सर सभी को? यहां तक क्लैरिटी है? देखो देखो एक सेकंड. इट इज एयर. Cp is 1.005, Cv is 0.718, and temperature is 400. The only unknown is M1 and M2. Can anyone help me as to how to find out M1 and M2? क्या कोई बता सकते how to find out M1 and M2? Can anyone tell as to how to find out M1 and M2? इधर देखो, मैं बताता हूं. इधर देखो सर, देखो मित्रों, देखो एक बार. P1 V1 is equal to M1 RT1 initially. What is the initial pressure? 600. What is the initial volume? 800. What is the mass? I don't know. For air, R is 0.287. What is the initial temperature? It is 400. So everything is known. Can you give me M1? Everything is known. Can you give me M1? Mitro. So therefore it will be 600 into 8 divided by 0.287 divided by 400. तो ये आ रहा है 41.812. And what is M2 sir? P2 V2 is equal to M2 RT2. Don't write R2. So M2 will be equal to P2 V2 by RT2. Can you tell me why the mass is changing? Because the valve is open. When the valve is open, the fluid escapes. That's why the mass is changing. So what is the final pressure? It is 200 given. Final pressure is 200. Is the volume changing, sir? It is a rigid tank. So finally, it is occupying the same one. If the tank is rigid tank, the pressure is changing, but the volume is not changing. So it is 8. And R is 0.287. And what is the final temperature, sir? It is 400. तो बताइए, it should be 1/3 of this, क्योंकि 8 देखो एक बार, everything is same, only pressure is changing. 1/3 होना चाहिए. अरे ये 600 है, ये 200. 1/3 करो, एक बार करो. 13.94 kg. Hope this is clear. है ना? हो गया सर. अभी क्या बचा है सर? Put करो. Put everything in this. Put everything in this. M2 is, what is M2? 13.94. And M1 is 41. M1 is 41.812. And what is the temperature, sir? Everything is known. This work will be in kilojoule. Can you tell me why it is in kilojoule? Because mass is in kg. Specific heat is kilojoule per kg per Kelvin. Mass is in kg and temperature is in Kelvin. So Kelvin का ये. The answer will be in joule. Anyone? What is the value, sir? What is the value, sir? This work will be in kilojoule. I am waiting. I am waiting. Come on, come on. बोलिए सर.
आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। कितना आ रहा है सर? आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो 13.94 minus 41.812 to 1.005 into 400 minus 13.94 into 0.718 into 400 plus 41.812 into 0.718 into 400. So this is I have a question, sir. The question is, my question is very simple. What is the negative sign? Work is done on the system because there is a resistor. This work is on the system. So the answer for the work is 3200 kilojoule. But is the answer correct? Is the answer correct? देखो एक बार, is the answer correct, sir? But the answer is asked in kilowatt hour, not in kilojoule. क्या करे सर? The answer is asked in kilowatt hour. क्या करे सर? क्या करे सर? मित्रों, what to do? देखो एक सेकंड सुनो, एक सेकंड सुनो। 1 kilojoule is equal to 1 kilojoule per second into second. Any problem, sir? I have multiplied and divided with second. So 1 kilojoule is equal to, what is 1 kilojoule per second? 1 kilowatt second. Excellent, sir. 1 hour is equal to 3600 second. So 1 second is how many hour? So 1 second is equal to 1 by 3600 of the hour. So therefore, this is kilojoule, no? 1 kilojoule is equal to 1 kilojoule is equal to, so 1 kilowatt. What is 1 second, sir? 1 second can be written as 1 by 3600 of the hour. So therefore, my dear students, so therefore 1 kilojoule is equal to कितना होगा सर? Kilowatt hour by kilowatt, 1 kilowatt hour by 3600. So 1 kilowatt hour is equal to 3600 kilojoule. So next time onwards, I will not tell all this. So directly I'll be writing this. Next time onwards, I will not tell, directly I'll write this. So 1 kilowatt hour is 3600 kilojoule. So कितने जूल आया सर हमारे को? What was the work, sir? What was the work? The work was 3200 kilojoule. So the work was 3200 kilojoule. So 3200 kilojoule का मतलब how many kilowatt hour? So it will be 3200 into 1 by 3600. So how much is this, sir? कितना आ रहा है सर? By 3600. तो ये आ रहा है सर 0.888. नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन? दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. अग्रीड? This is also a good question, sir. I'm a lone warrior. I'm a lone warrior. I will fight. I will fight. I will not surrender so easily. Clearly tell me, are you enjoying these questions? मतलब क्या मजा आ रहा है सर? थोड़ा रिलीफ हो जाएगा सर, बिकॉज स्टेडी फ्लो देखे. इन स्टेडी फ्लो वी हैव सीन क्या क्या देखे सर? इन स्टेडी फ्लो मिक्सिंग, मतलब वो आया, ये आया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑल दिस वी हैव सीन. अनस्टेडी फ्लो अभी तक अनस्टेडी. थोड़ा रिलीफ होगा सर, थोड़ा रिलीफ होगा. अब थोड़ा सेकंड लॉ में आएंगे सर. हीट एंड वर्क हो गया सर.
देन स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो का। अब सेकंड लॉ में आएंगे सर, नाउ विल एंटर द सेकंड लॉ। हाँ, देखो ये भी क्वेश्चन उतना आसान नहीं है सर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। प्लीज रीड द क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन सर। Three Carnot engines E1, E2, E3 operate at temperatures of 1000 Kelvin, this is 1000, and 300 Kelvin. The work produced are in the ratio. If this is producing 4W, this is producing 3W, and this is producing 2W. So the works are in the ratio 4 is to 3 is to 3. And T1 is given, last temperature, maximum temperature, minimum temperature is given, and is asking T2 by T3. क्या सवाल है सर? So let me explain very clearly sir. क्या सवाल है सर? एक सेकंड, वन सेकंड। देखो, shall we do this? Shall we do this? जबरदस्त क्वेश्चन है सर, जबरदस्त मीन जबरदस्त है। इधर देखो, एक्चुअली देर इज फर्स्ट इंजन, देर इज सेकंड इंजन, देर इज थर्ड इंजन। पहला इंजन, सेकंड इंजन, थर्ड, मैं आपको क्लैरिटी से बताऊंगा। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। The first engine is absorbing Q1, rejecting Q2. Second is absorbing Q2, rejecting Q3. Third is absorbing Q3 and rejecting Q4. The lowest temperature T4. This is T1, T2, T3, T4. The work produced by this is this. They are in the ratio. Okay, बोलो। एक सेकंड सर, प्लीज प्लीज एक सेकंड। ओके, ओके चलो, ओके चलिए चलिए शुरू करते हैं सर, चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला है सर? ही इज आस्किंग T2 by T3. T1 is given as 1000 and T4 is given as 300. Okay, no problem at all. कैसे करें सर? आराम से। But these are Carnot engines. Shall I proceed sir? These are Carnot engines. अभी बताएगा, अभी बताएगा, अभी बताएगा। देखो, I'll tell you. मित्रों 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 मित्रों, क्या आराम से, हाँ जी सर। ओ माय गॉड, 3 इंजन आई कैनॉट राइट। ध्यान से सुनो, कैसे करे? ये दिख रहा है सर आपको? ये दिख रहा है सर आपको? दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। ओके, दिख रहा है सर? कैन यू सी? అన్నా ఐఎమ్ ఇన్ క్లాస్ అన్న, లైవ్ క్లాస్ లో ఉన్నా నేను। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड प्लीज। ओके, एक सेकंड। क्या बोल रहा है? वर्ड्स स्मेल टेक्स्ट। अच्छा, नो प्रॉब्लम, मैं लिखता हूं सर। स्मेल बोलता है, स्मॉल है, स्मॉल टेक्स्ट। ओके, डोंट वरी, दिख रहा है? मैं बताता हूं सर, एक सेकंड। दिस टेम्परेचर इज 1000, दिस इज, देखो एक बार, माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, आराम से देखना सर, डोंट वरी, डोंट वरी।
इसको मैं ऐसे, क्या क्वेश्चन है सर? अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना? ओके, अब देखो, as it is a Carnot cycle, for Carnot cycle reversible है, तो I can write Q1 by Q2 is equal to Q1 by Q2 is equal to T1 by T2. So as it is a Carnot, second के लिए क्या करेंगे? Q2 by Q3 is equal to T2 by T3. ठीक है सर। And third one, Q3 by Q4 is equal to T3 by T4. क्या ये सही है सर? Is this clear sir? देखो, Q1 by Q2 is T1 by T2, Q2 by Q3 is T2 by T3, Q3 by Q4 is T3 by T4, up to the, because we can write this because it is a Carnot cycle. Otherwise ये भी उतना सिंपल नहीं है सर क्वेश्चन। यू आर थिंकिंग, क्या ये बात सबको समझ में आई सर? had it not been Carnot, डेफिनेटली ये नहीं आता है सर। अगर Carnot नहीं रहता है तो ये नहीं आता है सर। इज इट ओके? अरे यार, यस, यस। अब देखो, सिमिलरली ध्यान से सुनो, व्हाट इज द वर्क ऑफ वन? वर्क ऑफ वन इज इक्वल टू Q1 minus Q2. Work of 1 is Q1 minus Q2. What is the work of 2 sir? Q2 minus Q3. What is the work of 3 sir? What is the work of 3? Q3 minus Q4. Excellent sir. But clearly he said, एक काम करते हैं सर, वर्क ऑफ वन इज 4W लिखेंगे, वर्क ऑफ 2 इज 3W लिखेंगे, वर्क ऑफ 3 इज 2W लिखेंगे। क्या ये बात सबको समझ में? बिकॉज द वर्क्स आर इन द रेशियो 4:3:2, 4:3:2। अगर आप इसका 1/2 ले लेंगे 4:3, 2/3 लेंगे 3:2। सो होप दिस इज क्लियर सर। सॉल्यूशन चाहिए नहीं ना, विल नॉट डू। ओके, राइट। अब देखो, तो यहां तक समझ में आया सभी को? आई थिंक इट इज क्लियर। तो दिस कैन बी रिटन एज, व्हाट इज W1? W1 इज 4W। व्हाट इज W2? इट इज 3W। व्हाट इज W3? इट इज 2W। एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। आराम से देखो, देखो अब क्या करेंगे सर? विल डू समथिंग। देखो एक सेकेंड, देखो देखो, एक सेकंड देखो, आराम से देखना सर। इसका रेशियो ले लो, लेट मी टेल यू। सो यहां तक क्लैरिटी आ गया सर सभी को? अप टू दिस इज देयर अ क्लैरिटी? अप टू दिस इज देयर अ क्लैरिटी? अप टू दिस इज देयर अ क्लैरिटी? Q1 minus Q2 is W1 4W, Q2 minus Q3 is 3W, Q3 minus Q4 is 2W। यहां तक क्लैरिटी आ गया? If it is clear, I'll proceed, sir. If it is clear, I'll proceed, sir. क्लैरिटी आया? यस 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 यस। अब देखो, नाउ ही हैज गिवन T1 as 1000, T2 as 300, sorry, T4 final, T4 as well, T2 by T3 ratio is asked. How do we do this? How do we do this? Let me tell you very clearly. देखो, Q1 minus Q2 by 4 is equal to Q2 minus Q3 by 3. Let me tell you, Q1 minus Q2 by 4 is W, Q2 minus Q3 by 3 is W। अरे यार, क्लियर? स्टक? ये कौन है रे? इज इट स्टक?
देखो नाउ, देखो दिस इज डब्ल्यू, दिस डब्ल्यू, इक्वेट करो. सो देयरफॉर 3q1 minus 3q2 is equal to 4q2 minus 4q3. So I have taken first two and I am writing this. So what do I get, sir? यहां से क्या मिलेगा? 3q1 plus 4q3, 3q1 plus 4q3, ये उधर लेना, is 7q2. Clear. सिमिलरली अब ये दो ले लेंगे सर, विल टेक दिस टू. एक सेकंड. सिमिलरली ये वाले दो. सो इफ आई टेक दिस टू, q2 minus q3 by 3, q2 minus q3 by 3 is equal to q3 minus q4 by 2. q2 minus q3 by 3 is w, q3 minus q4 by 2 is w. So मैं क्या कर रहा हूं, ये दो ले रहा हूं, I am dividing, so you get w, I am dividing, I get w, these two I am equating these two. So therefore what can I write? 2q2 minus 2q3 is equal to 3q3 minus 3q4. क्या ये सही है सर? Is it clear? Yes. Now एक काम करो सर, देखो 2q2 plus 3q4 is equal to 2q2 plus 3q4 is equal to 5q3. Let this be one. ये दोनों है, अब आराम से सॉल्व करेंगे. So if you say yes, then I'll proceed, sir. If you say yes, then I'll proceed, sir. हाँ, अब देखते हैं सर. I'll do one thing, sir. We'll take two equations. देखो 3q1 plus 4q3 is equal to 7q2. 2q, एक सेकंड, 2q2 plus 3q4 is equal to 5q3. आराम से, डोंट वरी, आराम से. 3q1 plus 4q3 is 7q2. 2q2 plus 3q3 is it okay? Now stop. मैं क्या कर रहा हूं सर, ऑलरेडी यू नो, इसको दिस आई डिवाइड विथ q2. तो व्हाट डू आई गेट? देखो 3q1 by q2, 4q3 by q2 is equal to 7. I am dividing both sides with q2, q1 by q2, q3 by q2, q2. So this can, इसको क्या करेंगे? I'll divide this with q3, तो क्या बचेगा? 2q2 by q3 plus 3q4 by q3 is equal to 5. I'm dividing this equation with q3, क्योंकि मुझे t2 t3 का रिलेशन लाना है. So 2q2 by q3 plus 3q4 by q3 is equal to 5. यहां तक समझ में आया सर? क्लियर? Okay, just 1 minute please, just 1 minute. Okay, now तो व्हाट कैन आई राइट? देखो देखो एक सेकेंड, इसको मैं लिखेगा, देखो प्लीज, ऑलरेडी यू नो 3 q1 by q2 is t1 by t2
plus 4. Q3 by Q3 is T3 by T2 is equal to 7. ये वाला equation. 2. What is Q2 by Q3? T2 by T3 plus 3. What is Q4 by Q3? T4 by T3, and that is equal to 5. Hope this is clear, sir. This is the best question for the second law का. तो अब देखो, now, so hope you are understanding, sir. Hope you are understanding. अब देखो, so इसको लिखेगा 3T1 plus 4T3 is equal to, ये T2 उधर ले लेना, 7T2. Excellent, sir. ये वाला 2T2 plus 3T4 is equal to, ये T3 उधर ले लेना, 5T3. क्या ये सबको समझ में आया, सर? Yes. क्या करेंगे? टू अननोन्स, टू इक्वेशंस, आई कैन इजीली सॉल्व. तो देखो इसको क्या करेंगे, कैन आई राइट T2 इज इक्वल टू, 2 से डिवाइड करना. सो जब 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 T3, 2 से डिवाइड करना. क्या हो गया सर, गलत हुआ सर, एक बार देखता हूं सर. 3T1 plus 4T3 is 7. आ गया. हाँ. 3T1, yes. 2T2 plus 3T4 is 5T3. Yes, exactly. T2, एक मिनट. 2 से डिवाइड करना. गलत हुआ सर, एक बार देखता हूं सर. तो आप प्लीज सॉल्व दिस टू, मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों सॉल्व करना. ये दो सॉल्व करके गिव मी T2 एंड गिव मी T3, देन फाइंड T2 by T3. अभी करो सर, आई एम बैक. डू इट जस्ट नाउ. डू इट सर.
What's the value? What is the value? Anyone? No one is giving. I want the value. No one is giving. Excellent. Excellent, sir. T2 is 688.89 and T3 is 455. T3 455.55. So therefore T2 is 688.89 and this is 455.55. So what's the value, sir? Don't think that it is an easy question. T2 by T3 will be equal to. Is it 1.51? No one is giving. Susanta Bapun. Only one is giving answer. बाकी लोग है या नहीं क्लास में? अरे यार. Is it correct? Only one has. This is not fair, sir. So I should stop giving good questions. I should stop giving good questions. Sir, I got wrong. Okay, okay. But this is the right answer. But it is a very good question. Clear, clear, clear. Clarity. Next question. Next question. ये पढ़ो. Please read the question. This is a good question. Come on, come on. Last question was a good question. Last question was a good question. Okay? Chalo. Wonderful, wonderful. Wonderful. ये करो. हाँ. Come on, come on. ये क्वेश्चन करो. Please, have you understood the last question? Last question समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा सर. A heat engine receives half of the heat supplied at 1000 Kelvin. देखो एक बार. This is 1000 Kelvin and it is receiving some heat. Okay. Let us say it is given.
and half at 500. This is 500 Kelvin. So this is Q1. क्या मतलब है सर? देखो, total heat supply is 2Q1. So आधा out of the total heat supply 2Q1, आधा इधर से आ रहा है, आधा इधर से आ रहा है. And it is rejecting at Q2. At what temperature it is rejecting, sir? 300 Kelvin. And it is developing work W. What is the maximum efficiency? How do I calculate, sir? What is your doubt, Chandan? Chandan का doubt क्या है? Doubt क्या है, sir? Sir, can we get Q1 as T1 value and Q2 as T2 value as the ratio? हाँ. Because they are in series, the proportionality constant रहता है, sir. Yes. हाँ, ठीक है. अभी क्या करेंगे? मैक्सिमम एफिशिएंसी बोला तो यू हैव टू यूज क्लॉजियस इनइक्वालिटी. देखो सर, दिस इज द इंजन. तो क्या करेंगे सर? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डैश क्यू बाई टी शुड बी जीरो. मैक्सिमम का मतलब ये रिवर्सिबल होता है सर. सो देयरफॉर दिस इज एंटरिंग, दिस इज एंटरिंग, दिस इज लिविंग. तो Q1 बाई T1 1000 प्लस Q1 बाई, ये अंदर आ रहा है Q1 बाई 1000, ये भी अंदर आ रहा है Q1 बाई 500 प्लस दिस इज लिविंग, इससे ये बाहर जा रहा है तो माइनस Q2 बाई 300 and that should be equal to 0. Is this clear, sir? Is this clear, sir? Say something, dear. Say something, dear. Let me repeat, sir. आधा हीट, अगर ये 200 है, अगर ये 200 है, टोटल विल बी 400. आउट ऑफ 400 हाफ इज एट दिस, हाफ इज एट दिस. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो Q1 बाई T1, Q1 बाई Q, दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस. अब इसको क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 होगा. 2 प्लस 1 3. सो 3Q1 बाई 1000 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, इट इज Q2 बाई 300. लेट मी रिपीट सर. सो ये उधर जाएगा. सो इज दिस इक्वेशन क्लियर सर? क्या ये इक्वेशन क्लियर है सभी को? क्या ये इक्वेशन क्लियर है? Q1 by T1 entering, Q1 by T1 entering, total entering should be equal to total leaving, Q2 by T2. Yes. तो ये हो गया सर मित्रों. नाउ देखिए. सो देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू, ये 3 इधर आएगा, 3 into 300 is 900. तो 0.9 Q1. Excellent, sir. Now, what is the efficiency, sir? Efficiency is net work by heat supply. What is net work? Efficiency is net work is supply minus rejection by supply. So, net efficiency is equal to 1 minus rejection by supply. So, efficiency is 1 minus. What is the rejection, sir? Rejection is Q2. And what is the supply, sir? This is supply, this is supply. Total supply is 2Q1. Very good, sir. So therefore, now I will write, my dear students. So efficiency is equal to 1 minus 1 by 2 into Q2 by Q1. What is Q2 by Q1? Q2 by Q1 is equal to 0.9. So efficiency is equal to 1 minus half. What is Q2 by Q1? Q2 by Q1 is 0.9. तो ये कितना आ रहा है सर? Excellent, sir. 55% is absolutely correct. ये भी अच्छा सवाल है, sir. This is also a good question. What is Q2 by Q1? Q2 by Q1 is equal to 0.9. So efficiency is equal to 1 minus half. What is Q2 by Q1? Q2 वाह वाह, मजा आ गया. So have you understood this question, sir? Next. ये पढ़ो, sir. I'm back in 1 minute. ये पढ़ो, sir. Please read this. Please read this. Stations are next. Process. The process is
Come on. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई नहीं किए? ट्राई नहीं किए? सर क्लियरली बताओ सर, क्वेश्चन सही है? देखो, यू हैव नॉट ट्राइड, एनीवन? नहीं ट्राई किए, चलो लीव इट. When the outside temperature is -10, a residential heat pump must provide this much heat per day. So all calculations are per day. How much heat is to be supplied? कितना heat supply करना होगा सर? कितना heat supply करना होगा सर? So therefore, let us assume this to be heat pump. मैं diagram draw कर रहा हूं सर. देखो एक बार, let me draw the diagram. This is higher, this is lower, and this is work. तो हाउ मच हीट इज टू बी सप्लाइड सर? हीट पंप का पर्पस हीट सप्लाई करना होगा. कितना हीट सप्लाई करना होगा? तो ये होगा आपका Q1, ये Q2. तो Q1 कितना है सर? 3.5 इंटू 10⁻6 किलो जूल पर डे. ठीक है सर. And what is the lower temperature given sir? The lower temperature is -10. आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना, it will be 263 Kelvin. And what is the higher temperature sir? Higher is कहां गया? Where 20 degree. 273 plus 20 is 293 Kelvin. ठीक है सर. पूछा क्या है सर? वर्क इनपुट और पावर इनपुट. देखो, मिनिमम कॉस्ट फॉर रनिंग, एक सेकंड. द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 2.1 पर किलोवाट आवर. ध्यान से सुनिएगा सर, मस्त क्वेश्चन है सर. दिस इज Sir, what is second law efficiency? Very good, sir. Second law efficiency is actual efficiency by ideal efficiency. If you want, I'll share a link. You can watch that course. Okay, एक सेकंड. प्लीज लिसन. सवाल देखो, मैं बहुत अच्छा सवाल है सर. Actually, where from the electricity is coming? By work input. So indirectly he is asking you to calculate the work input. तो आप बोलो मिनिमम कॉस्ट पूछा है. मिनिमम कॉस्ट मींस इट विल बी द एफिशिएंट वन. मिनिमम कॉस्ट मींस इट इज एफिशिएंट वन. ओके, देखिए सर, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट बोला है. सो एक सेकंड. फॉर मिनिमम कॉस्ट द सिस्टम शुड रन इन अ रिवर्सिबल मोड. तो पहले आप एक काम करते हैं सर, व्हाट विल बी द सीओपी सर? मित्रों, what will be the COP? आराम से. He is asked minimum cost. Minimum cost means reversible. तो COP of a heat pump is equal to, अगर reversible है तो it will be higher minus lower. But already it is reversible. COP of heat pump क्या लिखेंगे सर? Desired effect, that is Q1 by work input. Desired effect by work input. Okay sir. So what is TH sir? The higher temperature is 293 and the higher is 293 and the lower is 263. I repeat, the higher is 293, lower is 263. That should be equal to Q1 by W. So already Q1 is given as 3.5 into 10⁻6 kilojoule per day. So by work input. So as this is in kilojoule per day, this will also be in kilojoule per day because this COP has no unit. अगर ये kilojoule per day है तो ये भी. Can anyone tell the value of W? Can anyone tell the value of W? Can anyone tell the value of W? Anyone, what is the value of W? कितना आएगा सर? सेकंड, एक कॉल आ रहा है. एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है सर, इंपॉर्टेंट कॉल है. हाँ हाँ, कृष्णा, और చేసేదే ఓకే. సరే మంచిదా. ఓకే ఓకే ఓకే, चलो. Someone gave the answer. एक सेकंड, डिस्टर्बेंस हो रहा है. सो मैं बताता हूं सर. कैलकुलेटर कहां है रे? कैलकुलेटर. तो दिस विल बी
293 divided by 293 minus 263, ये 9.67, ये आ रहा है सर, कितना आ रहा है सर? 358,361.7 kilojule per day. Very good. He is asking daily consumption only. So daily 35836.1 kilojoule 17. देखो my dear students, आराम से, टेंशन नहीं लेने का. Daily 358,361.7 kilojoule is consumed daily. But you know that he is asking in kilowatt hour. Already you know that. देखो सर, already you know that 1 kilowatt hour is 3600 kilojoule. So therefore 358,361.7 kilojoule is how many kilowatt hour? तो कितना आएगा? Divide with 3600. This will be equal to 99.54 kilowatt hour is consumed. All calculations are made per day. तो एक दिन में इतने किलोवाट आवर कंज्यूम किया गया, लेकिन वो ही इज नॉट आस्किंग किलोवाट आवर, ही इज आस्किंग मनी. एंड क्लियरली ही सेड 1 kilowatt hour is 2 rupees 10 paisa, 2 rupees per kilowatt hour. तो how much is consumed sir? 1 kilowatt hour के लिए 2 rupees 10 paisa. So 99.54 के लिए 99.54 kilowatt hour is consumed. For 1 kilowatt hour it is 2 rupees 10 paisa. For these many multiply with 2 rupees 10 paisa. कितना आ रहा है सर? It is 209 rupees. मस्त क्वेश्चन था सर. This is also a good question, sir. This is also a good question, sir. वाह, वाह. 7.167 कहां आ रहा है सर? 7.167 रुद्र गलत है बेटा, रुद्र गलत है. 209 rupees is correct. नेक्स्ट सर, ये सब अच्छे क्वेश्चंस है. प्लीज नोट डाउन दैट वी आर नॉट डूइंग सिंगल क्वेश्चन. इन वन क्वेश्चन वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस वी आर सॉल्विंग. हाँ, ये पढ़ो सर. ए हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स 1000 and 300 and is used. A heat engine is operating between 1000 and 300 and it drives a heat pump which extracts heat from a reservoir at 300 at a rate twice that at which engine is rejecting to heat. Okay. If the efficiency of the engine is 40% of the maximum possible and the COP of heat pump is 50% of the maximum possible COP, if the rate of heat supply to the engine is 50 kilowatt, which of the following is true? क्या सवाल है सर? You are thinking that सर से कितने इजी क्वेश्चन है. नहीं, देखो एक सेकंड. आज कॉल्स बहुत आ रहे हैं इसलिए डिस्टर्ब हो रहा, फिर भी कोई नहीं, हम तो लगे हुए हैं सर. देखो, मैं एक क्वेश्चन करूंगा सर, एक बार पढ़ लीजिए सर. लेट मी रीड द क्वेश्चन. एक बार पढ़ लीजिए सर. देखो, देयर इज अ हीट इंजन, दिस टेम्परेचर इज 1000, let it take Q1. This engine is driving a heat pump, let it reject Q2, and this is 300. ठीक है सर. And clearly there is a heat pump. Okay, T higher and T lower. एक बार देखो सर, the efficiency of this engine is 40% of maximum efficiency given है. इस इंजन का एफिशिएंसी 40% ऑफ मैक्सिमम. इस हीट पंप का सीओपी इज 50% ऑफ द मैक्सिमम सीओपी. दैट इज ऑल्सो गिवन सर. एक बार क्वेश्चन पढ़ो सर, एक बार रीड द क्वेश्चन. एंड और ये भी बोला है सर, देखो एक बार, और ये भी बोला है you should have a heat pump which extracts heat from a reservoir at 300. मतलब ये हीट पंप कहां से हीट ले रहा है सर? This heat pump is extracting from a reservoir at 300. Excellent. How much heat it is receiving? Clearly he said it is receiving
ट्वाइस व्हाट इट इज रिजेक्टिंग, ये जो रिजेक्ट करा उसका ट्वाइस ले रहा है, बोला है सर। ओके, नाउ ये हो गया, इसको क्या लिखेंगे, Q3 बोलेंगे। एक्सलेंट सर। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो सर, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, मस्त क्वेश्चन है सर। कितने कॉम्प्लिकेशंस डालना है हम डाल दिए सर, वॉट एवर कॉम्प्लिकेशंस आर पॉसिबल आई एम पुटिंग ऑल। A heat engine operates between 1000 and 300 and is used to drive a heat pump which extracts heat from a reservoir at 300 at a rate twice the engine rejects. If the efficiency is 40% of maximum and the COP is 50% of the maximum, the rate of heat supply, देखो, the rate of heat supply to the engine is 50 kilowatt. Okay. This heat supply is 50 kilowatt. क्या पूछा है सर, एक बार क्वेश्चन में देखो। ही इज आस्किंग द टेम्परेचर एट विच द हीट इज रिजेक्टेड, मतलब ये वाला टेम्परेचर पूछा। एंड दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग सर, दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग, मैं चेंज करूंगा, डोंट वरी, दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग। एंड द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द हीट पंप, देखो द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द पंप, तो देखो सर ये पूछा है दिस इज हीट पंप के लिए, एब्जॉर्प्शन हीट पंप के लिए, तो ही इज आस्किंग टी हायर, higher temperature of the heat pump and is asking Q3. अब कैसे करेंगे सर? Now let me do this, आराम से करेंगे सर, let me do it very neatly. देखो देखो एक सेकंड, let me do it sir, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. My dear students, can I calculate the maximum efficiency of this क्या बोलते हैं, एक सेकंड, so the maximum efficiency is equal to 1 minus T lower. इस इंजन के लिए लोअर इज 300 एंड द हायर इज 1000. तो व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी सर? मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 70%. तो व्हाट इज द एक्चुअल एफिशिएंसी? द एक्चुअल एफिशिएंसी इज 40% ऑफ द मैक्सिमम व्हिच इज 0.7. सो द एक्चुअल एफिशिएंसी इज 0.28. बट एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट, इसका एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट इज W, इनपुट इज 50. तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क, कितना आ रहा है सर? 50 इंटू दिस इज 14 किलोवाट आएगा सर, 14. तो वर्क इज 14 आ रहा है, ध्यान से सुनो, सप्लाई इज 50, वर्क इज 14, तो रिजेक्शन क्या होना चाहिए सर? Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क. Q1 is 50, Q2 I don't know, work is 14. तो Q2 will be equal to 36. ये आ रहा है 36. अगर ये 36 है तो ये 72 होगा सर, ये 72. एंड ऑलरेडी वर्क इज इक्वल टू 14, वर्क इज इक्वल टू 14. तो व्हाट विल बी दिस सर? एक बार देखो, तो ये अंदर आ रहा है, ये अंदर आ रहा है 72 प्लस 14, दिस इज एंटरिंग, दिस एंटरिंग, 72 प्लस 14, सो दिस विल बी इक्वल टू 86 सर, 86. नाउ वंस दिस इज नोन, लेट अस कैलकुलेट द मैक्सिमम सीओपी सर. तो ओके, द एक्चुअल सीओपी, व्हाट विल बी द एक्चुअल सीओपी सर? सीओपी अगर आप हीट पंप का चाहिए तो डिजायर्ड इफेक्ट, द हीट पंप का डिजायर होता है हायर टेम्परेचर मेंटेन करने का, द डिजायर्ड इफेक्ट इज 86 बाय वर्क इनपुट इज 14. एंड बट दिस इज द एक्चुअल हीट पंप, तो कितना आ रहा है सर? ये 86 by 14, and that is equal to the actual COP is equal to 6.14286. Okay, what will be the maximum COP sir? Clearly बोला है, the maximum COP is actual COP by 0.5. So actual COP is 6.14286 by 0.5. तो ये आ रहा है, the maximum COP आएगा सर into 2, 12.2857. तो यहां से I'll be calculating higher temperature. Whenever it is the maximum COP, मित्रों, whenever it is the maximum COP, maximum is always reversible. तो COP maximum will be equal to higher temperature by higher minus lower. क्या ये बात सभी को समझ में आई सर? क्या ये बात सभी को समझ में आई सर? Higher by higher minus lower, no problem at all. So therefore, so the maximum COP will be equal to, मित्रों, the maximum COP is 12.2857 is equal to higher I don't know, higher I don't know. For a heat pump, देखो heat pump के लिए this, एक सेकंड, this is the heat pump. For this heat pump, ये heat pump के लिए this is higher, this is lower, lower is 300, so therefore it is 300, so therefore it is 300. So यहां से I'll be calculating pH. As this is in Kelvin, ये भी Kelvin में रहेगा. Please give me the value of higher. Anyone?
तो यहां से TH will be equal to 326.6 Kelvin. तो यस 326.6 इज द राइट आंसर सर. क्या ये मस्त क्वेश्चन नहीं था सर? आप बताइए, इज इट नॉट अ गुड क्वेश्चन? H will be equal to 326.3 Kelvin. So yes, 326.6 is the right answer, sir. तो यहाँ पे ऑप्शंस में सही नहीं है. I'll adjust. Yes, here 86 आया था ना ये. बिल्कुल सही है सर. द रेट ऑफ रिजेक्टेड फ्रॉम द फर्म इज 86. इज इट ओके? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सर? मस्त क्वेश्चन था सर. मस्त सर. एक एक क्वेश्चन क्लास है सर. एक एक क्वेश्चन क्लास है सर. हाँ ये करो. कम ऑन डू इट सर. कम ऑन डू इट. Because एक एक क्वेश्चन में we are doing so many questions, that's why we are taking time. In single question there are so many questions. ऐसा नहीं कि we have solved around 20 questions. पहले इससे पहले और 15 उसके 4-5 भी के, मतलब पहले 15 में तो एक एक क्वेश्चन में 2-3 थे. मींस ऑलरेडी वी हैव सॉल्व 36-37 क्वेश्चंस. देखो, a heat pump provides 3 into 10 power 4 kilojoule per hour for maintaining a dwelling at heat pump. Outside temperature is 0. देखो, what is the higher temperature sir? 23. 273 plus 23 ये होगा 296 Kelvin. एक बार देखो 273 तो 6 होगा 9. करेक्ट. And what is the lower temperature sir? The lower temperature is ये 0 है तो 273 Kelvin. Excellent sir. हाँ. और वो क्या बोल रहा है? How much heat is to be supplied? How much heat is to be supplied? The heat supplied is 3 into 10 power 4 kilojoule per hour. And what is the power input, sir? The work input or power input is 4 kilowatt. अब इसको भी कन्वर्ट कर लेना सर. अब इसको भी किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना. 3 1 2 3 4 hour means 3600 सेकेंड. तो ये आ रहा है. सो यू आवर इज 3600 सेकंड. सो किलो जूल पर सेकंड इज किलोवाट. सो डिवाइड विथ 3600 तो ये आएगा 8.33 किलोवाट. एक्सलेंट सर. 8.33 किलोवाट. क्या ये बात सबको समझ में सर? अब देखो, लेट अस कैलकुलेट. देखो, द सीओपी ऑफ द हीट पंप इज एक्स. द सीओपी ऑफ रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मींस मैक्सिमम. अगर आपको सीओपी रिवर्सिबल चाहिए, विच इज सीओपी मैक्सिमम, and in the question that is given as what y दिया है, ये वैल्यू y दिया है, इसको बोल रहा है y. and how to calculate COP of heat pump? higher temperature by higher minus lower. so this is my y. anyone, what is the value of y sir? 296 divided by 296 minus 273 and one ये आ रहा है 12.87. now what is the actual COP sir? The actual COP in the question is given as X. So actual COP is desired effect, that is 8.33 by work input, that is 4. So this is 8.33 by 4. तो ये आ रहा है 2. X is equal to 2.0825. So he is asking X by Y. X is known, Y is known. 2.0 by 12.87. तो ये आ रहा है. तो X by Y will be equal to 2.0825 by y is 12.87. ये वैल्यू आ रहा है 0.1618. 0.1618 आ रहा है सर. क्या क्वेश्चन है सर? दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. X by y will be equal to 2.0825 by y is 12.87. ये वैल्यू आ रहा है 0.1618. 0.1618 आ रहा है सर. क्लियर सर? दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन. क्लियर क्लियर क्लियर. हाँ बोलो. दिस इज क्लियर. आई विल प्रोसीड सर.
क्लियर क्लियर, मस्त क्वेश्चन था सर, ये भी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आएंगे एंट्रोपी पे। सर लेना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा सर। देखो, तो ये एक्सपेक्टेड है सर। कोल्ड वाटर, देखो कोल्ड वाटर leading to a shower enters in a well insulated, ध्यान से सुनिएगा, ये इंसुलेटेड हीट एक्सचेंजर है, तो हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग्स इज जीरो। देखो, कोल्ड वाटर इज एंटरिंग एंड लीविंग। देखो, कोल्ड वाटर किस टेम्परेचर पे आ रहा है? 10 डिग्री। व्हाट इज द मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड वाटर? 0.95। सो लेट मी राइट, लेकिन यहां पे कोल्ड वाटर का स्पेसिफिक हीट दिया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड वाटर देखो देखो 4.18, and the hot water specific heat is given, it is 4.19। जो दिया है वो ले लेना। What is the entropy generation? So अब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे सर, एंट्रोपी के आएंगे। सेकंड लॉ भी हो गया, फर्स्ट लॉ भी हो गया, अब एंट्रोपी पे आएंगे सर। वेरी गुड। बोला क्या है सर? कोल्ड वाटर इज एंटरिंग एट 10 डिग्री, द मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड वाटर इज 0.95 and it is leaving at 70 degree. It is entering at 10, leaving at 70. Then hot water is entering at 85 and leaving at I don't know. He is asking entropy generation. ध्यान से सुनिएगा सर, कैसे करेंगे एक बात देखो सर। You know that entropy generation is equal to entropy change of universe. But entropy change of universe is entropy change of system plus entropy change of surroundings. Very good sir। यहां पे क्या क्या सिस्टम है सर? कोल्ड वाटर इज ऑल्सो माई सिस्टम, हॉट वाटर इज ऑल्सो माई सिस्टम, दोनों सब सिस्टम। एंड व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स? क्योंकि ये इंसुलेटेड है। फॉर इंसुलेटेड व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स? अगर इंसुलेटेड है तो व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स सर? Anyone? Agar I taught very clearly in my regular classes, whenever the system is insulated, there is no energy transfer in the form of heat to the surroundings. So therefore the surrounding entropy change is zero. बोला या नहीं बोला सर? जब insulated है तो external interaction in the form of heat transfer is zero. इसीलिए there is no entropy change of surroundings, तो ये जीरो हो जाएगा। Very good sir। So the entropy generation or the entropy production is given by entropy change of universe, which is entropy change of system। system का मतलब entropy change of hot fluid plus entropy change of cold fluid। excellent sir। देखो, so entropy generation is equal to, I taught very clearly, for liquids and solids what is the entropy change? MC ln T final by T initial. For hot water I write M of hot water, C of hot water, ln the final temperature of hot water by initial temperature of hot water, plus it is also water. For liquids and solid the entropy change is given by MC ln T final by T initial. So therefore mass flow rate of cold water CC ln T final of cold by T initial of cold। and please note down that entropy में हमेशा टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए सर। एंट्रोपी में हमेशा टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। इज इट ओके सर? हाँ, ये तो समझ में आया सर। यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है सर। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इज, देखो, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इज 10 degree, add 273, so it will be 283 Kelvin। excellent sir। what is the mass rate of cold water sir? 0.95 kg per second। very good sir। what is the exit temperature of cold water? आके definitely it is at lower temperature, cold water will gain heat and the final temperature of cold water is 70 degree, so 273 plus 70, can I write it as 343 Kelvin? The final temperature of cold water देखो 273, so 3, correct। now the mass flow rate of hot water is 1.6 kg per second and the initial temperature of hot water is, initial temperature of hot water it is 85, 273 plus 85, तो ये आ रहा है 273 plus 85, 8 plus 7 15, 358।
Excellent, sir. Excellent. Now everything is known. You substitute in this. So the entropy generation is given by what is the mass flow rate of hot water? Hot water is 1.6, and the specific heat of hot water is 4.19. Oh my God, I do not know the final temperature of hot water. The final temperature of hot water is not known. तो क्या करेंगे सर? क्या करेंगे सर? Just heat lost by hot water is equal to heat gained by cold water. Very simple, sir. करो सर. एक सेकंड. देखो. So what is the heat lost by hot water? M of okay, sorry. M of देखो. M of hot water, C of hot water, heat lost. तो अगर heat loss चाहिए तो it will be initial temperature of hot fluid minus final temperature of ये lose. It is losing. Loss का मतलब initial minus final. Heat lost by hot water is initial minus final. Should be equal to heat gained by cold. It will be final temperature of cold minus initial temperature of cold. Let us keep all temperatures in Kelvin. Difference है centigrade में already Kelvin में calculate किए. मुझे Kelvin में ही चाहिए. तो what is the mass flow rate of hot water, sir? Hot water का mass flow rate कितना है, sir? 1.6. And the specific heat of hot water is 4.19. And the inlet temperature of hot water is, what is the inlet temperature of hot water, sir? अभी भी calculate किए. 358. And the final temperature of hot water, I don't know, should be equal to mass flow rate of cold fluid is 0.95, and the specific heat of cold fluid is 4.18, and the final temperature of cold fluid is 343 Kelvin, and the initial temperature of cold fluid is 283. So everything is known except the final temperature of hot fluid. अगर ये केल्विन में लिए, ऑलरेडी केल्विन में लिए, तो ये भी केल्विन में आएगा. Anyone with the final temperature? कोई बता दो सर फाइनल टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड का, हॉट फ्लूइड का फाइनल टेम्परेचर. आई वांट द फाइनल टेम्परेचर. Someone said entropy generation is 0.06262. Yes, excellent, sir. 322.46. Very good. यहां से निकल के आएगा 322.46 Kelvin. Everything is known. Now put it here. Everything is known. Now put it here, sir. Put it here. देखो MC. ln. The final temperature of hot fluid अभी तो कैलकुलेट किए 322.4. कहां गया रे? 322 पॉइंट कहां गया रे? 0.46. And the inlet temperature of hot fluid. Hot fluid का inlet temperature is hot fluid का inlet temperature अरे यार 358 ना. Cold fluid mass flow rate is 0.95 and the specific heat is 4.18 ln into ln. The final temperature of cold fluid is 343 and the initial temperature is 283. Please calculate और बताइए सर. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही पुट किया नहीं. 1.6 into 4.18 322 by 358 plus 0.95 into 4.18 ln 343. Yes, ये आ रहा है सर 0.06258. So please note down that you cannot have entropy production or entropy generation negative. अगर negative आ रहा है इसका मतलब आप कहीं mistake किए. You have committed one. सर fluid machine complete करवा दो. Okay, ठीक है. हाँ देखो, अब देखो जब करवाते हैं रेगुलर नहीं आते हैं, आदमी का मूड ऑफ कर देता है. देखो एक बार यूनिट चेक करेंगे सर. लेट्स चेक द यूनिट. ln this has no unit because it is a pure number. ये रेशियो ऑफ टेम्परेचर है, नंबर है, प्योर नंबर है. m डॉट इज kg पर सेकेंड. स्पेसिफिक हीट m डॉट हो गया स्पेसिफिक हीट किलोजूल पर kg पर केल्विन. Okay, kilojoule per second is kilowatt by Kelvin. So the answer is
kilowatt per Kelvin. This is the rate of entropy production. Is it okay, sir? G per second. Specific heat, m dot हो गया specific heat. Kilojoule per kg per Kelvin. Okay. Kilojoule per second is kilowatt by Kelvin. So the answer is kilowatt per Kelvin. Clarity आ गया, sir? Hope you understood this question. Clarity आ गया, sir? Say something. If this is clear, I'll proceed, sir. Must. Next question. थोड़ा tough है, sir. Next, I can say the best question. देखो, पढ़ो सर से एक बार. देखो, इसका फिगर ये है सर. इसका फिगर ये है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर ये है. आई लव दिस क्वेश्चन. ये तो पक्का लग रहा है सर मुझे. व्हाट अ क्वेश्चन. पढ़ो सर से एक बार पहले पढ़ो. आई रिक्वेस्ट यू टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. यानी इंसुलेटेड. पहले ये फोकस करना. 5 meter cube rigid, volume is not changing, contains air at 500 kilopascal and 57. तो 57 को 273 ऐड करना सर. 330. ठीक है. A valve connected to the tank is now opened and air is allowed to escape until the pressure inside. So initially the pressure was 500 and finally the pressure is 2. सर ये expected question है सर, इसीलिए I'll be doing very slowly. मतलब ये पक्का expected. देखते जाना सर, because if you do, I'm not saying you will get the same question, but concept related to this will come. Okay, देखो सर. The temperature during the process is maintained constant by electrical resistor. The magnitude of electrical energy. Same question नहीं किए सर हम. I think we got the answer as 0.88 kilowatt hour. 3200 kilojoule आया तो you divided with 3600 and you got kilowatt hour. तो ये पहले ये पार्ट नहीं करूंगा सर. I think you will get something like this. ये आंसर आएगा. I don't know exactly. एक बार मैं देखता हूं सर. एक बार मैं देख लेता हूं सर. देखो देखो एक सेकंड. आई नॉट डू दिस. ये मैं फर्स्ट पार्ट नहीं कर रहा हूं सर. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वी हैव डन सर. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वी हैव डन इन अनस्टेडी फ्लो. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वी हैव डन सर. फर्स्ट पार्ट Yenna macha. First part I will not do because the similar question we have calculated the work. We have calculated the work. Same question when the valve was open, gas was escaping. Same question we have done. I will not do this. So it will be wastage of time, sir. It will be killing your time, sir. Enna macha. Clear, clear, clear. Now let us go to the second part. The entropy production. Total entropy change means entropy generation or entropy change of universe. Whenever he says total entropy means universe. Universe means generation. कैसे करें सर? 1500 कुछ आ रहा है. Okay, something like this. Or anyway, so you will get in. I think I don't know. I have not solved exactly because ये वाला. अब एंट्रोपी प्रोडक्शन करेंगे सर. ध्यान से सुनो क्या क्वेश्चन है सर. देखो इनिशियल कंडीशंस, फाइनल कंडीशंस निकालेंगे. सो दीज आर द इनिशियल कंडीशंस. वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, whether it is V1 or V2 it will be same. What are the final conditions, sir? The final pressure is I think 200 kilopascal and the final temperature, एक second, 200. The temperature is kept constant ना. देखो the temperature is kept constant. तो इफ इनिशियली व्हाट इज 57 सर? अभी तो बताया 330 कुछ आया, मैं भूल गया. देखो 273 प्लस 57 330. 330 केल्विन. तो ये भी 330 केल्विन. नाउ आई आस्क यू क्वेश्चन. एंड डिड ही से इट इज इंसुलेटेड? एक बार देखते हैं सर.
insulated. Excellent. देखो देखो कैसे करे सर। देखो देखो एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मस्त क्वेश्चन है सर, मस्त क्वेश्चन है रे बाबा, मस्त क्वेश्चन है रे बाबा। वेट वेट वेट, माय डियर लव, विच फ्लूइड इज दिस सर? कौन सा फ्लूइड है सर ये? कौन सा फ्लूइड है रे? कहीं पे भी नहीं दिया। एयर 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 एयर, ठीक है। सुनो सुनो, can I calculate the initial mass in this control volume or tank? PV is equal to MRT. M1 is equal to P1 V1 by RT1. Correct? हाँ जी सर, ठंड लग रहा है. So therefore, initial mass is equal to, what is the initial pressure, sir? 500. And what is the initial volume, sir? 5. By R is 0.287. And the temperature in Kelvin is 330. Please give me the value of initial mass. Anyone? So therefore, initial mass is equal to, what is the initial pressure, sir? 500. And what is the initial Anyone? volume? 5. By R is... Come on. Work transfer is not 0, Baba. Anyone? अरे मास बताओ सर। थू 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 थू, आपको पढ़ाना मजा नहीं आ रहा सर। 26.39। And what is M2, sir? P2V2 by R2. Can you tell me what is the reason for the change of mass? क्यों चेंज हो रहा है सर? क्योंकि इस वॉल में से ओपन करने के बाद ये मास जा रहा है सर, इसी के कारण as mass is leaving, that's why the mass is changing. Okay, P2, the final pressure is 200 and the final volume, देखो, is the container volume changing, sir? It's a rigid container, it is same. By R is 0.287 and the temperature is T2. And what is T2? 330. तो आप बताइए, what is the final mass? 200. And final volume, container volume changing, sir, it's very good, 10.55. मैं आपको कुछ बताऊंगा सर, आराम से देखो। is the final mass. Shall we proceed? देखो मेरे प्यारे बच्चों, it is not a closed system. अगर ये closed system होता है, in a closed system, the entropy change occurs due to irreversibilities, that is entropy generation, and due to heat transfer. लेकिन यहां पे heat transfer we call it as external interaction. लेकिन यहां पे apart from that, क्या क्या है सर बोलो? मास ट्रांसफर के कारण एंट्रोपी ट्रांसफर होता है सर। Because of mass transfer, there is an entropy transfer. Because of that, there is a change in entropy generation. तो कभी भी याद रखना, ओपन सिस्टम में मित्रों, हमेशा याद रखना, ओपन सिस्टम में, आई रिपीट, इन ओपन सिस्टम entropy change occurs due to mass transfer, heat transfer and irreversibilities. तो मेरा इक्वेशन लिखो सर से एक बार। लेट मी राइट द इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम। देखो एंट्रोपी, अरे एक सेकंड, हाँ देखो, एक सेकंड प्लीज, पुष्पिन क्लास में ही है बेटा, ठीक, ओके। Entropy change occurs due to mass transfer. देखो एक मस्त क्वेश्चन है सर, ये करेंगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा सर। व्हेन यू डू दिस क्वेश्चन यू विल गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो एक बार, देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर? dm by dt in the control volume is equal to m dot I minus m dot E. बिल्कुल। So is there any mass entering? No. So therefore inlet is 0. So dm by dt
इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एम डॉट ई। ये पहला इक्वेशन है। क्या ये बात सभी को समझ में आई सर? क्लियर 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 क्लियर। बिकॉज नाउ नेक्स्ट, एनर्जी बैलेंस की जरूरी नहीं, मास एंट्रोपी का इक्वेशन लिखेंगे, बिकॉज फ्रॉम एनर्जी बैलेंस यू कैन फाइंड वर्क। ऑलरेडी वी हैव फाउंड वर्क इन द लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखो, ds by dt in the control volume is equal to m dot I si माइनस m dot e se। मैं पूरा इक्वेशन लिख रहा हूं, प्लस d डैश q बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन। देखो देखो, ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर के कारण एंट्रोपी ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर के कारण होगा, इरिवर्सिबिलिटीज के कारण होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आए सर? बिल्कुल आए। व्हाट इज द हीट ट्रांसफर सर? क्लियरली इंसुलेटेड है तो ये टर्म जीरो होगा, ये टर्म जीरो होगा। तो ही इज आस्किंग एंट्रोपी जनरेशन। बहुत ध्यान से देखो सर, क्या ये इक्वेशन सभी को समझ में आया सर? ऑलवेज रिमेंबर, इन ओपन सिस्टम मास ट्रांसफर से एंट्रोपी ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर से एंट्रोपी ट्रांसफर होता है सर, इरिवर्सिबिलिटी से कारण एंट्रोपी जनरेट होता है। सो टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज ड्यू टू इनलेट एग्जिट चेंजेस प्लस हीट ट्रांसफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सर। क्या ये इक्वेशन सभी को समझ में आए? कारण होगा, इरिवर्सिबिलिटी के कारण होगा। वाह संचिता, यू आर जीनियस बेटा। संचिता मतलब आपको सैल्यूट 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 सैल्यूट। वाह 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 वाह, क्या बच्चे हैं रे। क्लियर? वाह वाह वाह, क्या बच्चे हैं। वाह, मजा आ गया सर आपको पढ़ा के। एक्सलेंट एक्सलेंट। डॉक्टर संचिता को जय बोलो, डॉक्टर संचिता को जय बोलो। देखो, इज द मास एंट्री, इज द मास एंट्री? नो, एम आई जीरो, एम आई जीरो, नो मास इज एंट्री। अब देखो, वाह 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 वाह, क्या बच्चे हैं रे। मजा आ गया सर आपको पढ़ा के। एक सेकंड, अरे यार, एक्सलेंट। तो ds बाई डी टी इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो व्हाट इज माइनस एम डॉट ई? माइनस, ये तो एंट्री तो नहीं हो रहा एग्जिट, माइनस एम डॉट ई। इट इज dm बाई डी टी इन द कंट्रोल वॉल्यूम। एक्सलेंट। माइनस एम डॉट डी डी में इंटू एस ई प्लस एंट्रोपी जनरेशन। ऑफ कोर्स सारे ये डॉटेड में होगा। क्यों डॉटेड में होगा सर? मैं बताता हूं, क्योंकि ये दिस इज पर टाइम, दिस इज पर टाइम, सो दिस इज पर टाइम होना चाहिए। एक्सलेंट सर। देखो, पर टाइम तो ds बाई डी टी, यहां पे dt आएगा, यहां पे dt, यहां पे टाइम के साथ इंटीग्रेट करो। यू इंटीग्रेट विद टाइम तो क्या होगा सर? इफ आई इंटीग्रेट दिस विद टाइम, दिस विल बी dt dt dt, निकल जाएगा। अरे डी, दिस ऑल्सो डॉट सर, दिस इज ऑल्सो डॉट। क्यों डॉट है सर? इट इज इन द रेटेड फॉर्म, रेटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। बिकॉज देखो एक बार कॉमन सेंस देखो, अगर ये रेटेड में है तो ये भी तो रेटेड में होना चाहिए। इज इट क्लियर? शैल आई प्रोसीड? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? से समथिंग डियर, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? बहुत बढ़िया, इधर देखो, तो इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रल डी, अब dt dt, यहां पे भी dt निकल जाएगा, dt dt, बट एक्चुअली इट्स नॉट निकल जाएगा। आई एम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंटू dt इंटू dt इंटू dt, dt 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 का है। तो व्हाट इज ds? S2 minus S1 because it is in the control volume. Control volume changes are from 1 to 2, मतलब फाइनल में एसेंशियल। ये dt गया, तो कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होगा? M2 minus M1, ठीक है सर, इंटू SA प्लस ये क्या है बोलो सर? एंट्रोपी जनरेशन। अब डॉट नहीं आएगा बिकॉज बाई टाइम बाई टाइम बाई टाइम निकाल दिए, ये इक्वेशन आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया सर, यहां तक किसी को कोई टेंशन नहीं है सर। तो क्या नहीं राइट सर? कंफ्यूज मत होना सर। देखो ये स्पेसिफिक है सर, बिकॉज ये स्पेसिफिक है, तो इसको क्या लिखेंगे? M2S2 माइनस M1S1, बिकॉज टोटल अगर लिखेंगे दिस विल बी ऑलरेडी मास से मल्टीप्लाई है, M2 माइनस S1 SE प्लस एंट्रोपी जनरेशन। एग्जैक्टली। क्या ये इक्वेशन सभी को समझ में आया सर? सर कैन यू चेंज द मार्कर? क्यों सर? वाई शुड आई चेंज द मार्कर?
कोई वजह? वाई शुड आई चेंज सर? क्यों, कुछ नहीं दिख रहा आपको? मार्कर नहीं दिख रहा आपको? ऑल गुड, क्या प्रॉब्लम है सर? आई डोंट नो सर। हाँ, अब देखो, इसको ऐसे करेंगे, M2S2 थोड़ा थिक हो गया सर, माइनस M1S1 इज इक्वल टू M2SE माइनस M1SE, M2S2 माइनस M1S1 इज इक्वल टू M2SE माइनस M1SE प्लस एंट्रोपी जनरेशन। ये पूछा है सर, ये पूछा है। सो इफ यू वांट एंट्रोपी जनरेशन तो क्या करेंगे, अगर ये पूरे को इधर लाना, ये इफ यू वांट दिस, यू ब्रिंग दिस टू दिस साइड, तो इट विल बी M2S2 माइनस M1S1, ये इधर आएगा, प्लस M1SE माइनस M2SE। क्या यहां तक सभी को समझ में आया सर? अच्छा, यू वांट कलर सर? अरे यार, ये नाटक क्या होता है ना, ये वेस्टेज ऑफ टाइम सर, आप नहीं समझ रहे, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड। आपको बॉक्स डाल के, ऐसा लिख के, कलर चेंज करके, ये वेस्टेज ऑफ टाइम सर। प्लीज बुरा मत मानना, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम सर। ओके राइट, देखो, टू दिस इट इज क्लियर ना, एक काम करता हूं। सो एंट्रोपी जनरेशन विल बी इक्वल टू, M2 को कॉमन ले लो, S2 माइनस SE, M2 प्लस माइनस M1 कॉमन ले लो, तो S1 माइनस ST। क्या ये बात सबको समझ में है सर? M2 कॉमन लिया, S2 माइनस SE, माइनस M1 कॉमन लिया, S1 है। क्या यहां तक सबको समझ में आई सर? तो वेरी सिंपल सर, इधर देखो, एंड यू नो द, ध्यान से सुनिएगा सर, हो गया सर, द प्रॉब्लम इज ओवर सर, द प्रॉब्लम इज ओवर। यू नो दैट फॉर, नहीं यार, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। हेलो, इज इट क्लियर? ज्यादा तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ ना सर? आई थिंक वी हैव नॉट वेस्टेड मच टाइम ना? Yeah, देखो सर, now can I write, my dear students, but here the temperature is constant, here the temperature is constant, temperature is constant, so therefore the temperature is constant, so क्या करेंगे, TFTI, ध्यान से सुनिएगा सर, temperature is constant, is the temperature changing? No, so therefore when the temperature is same, the final initial temperatures are same। मित्रों एक सेकेंड, when the, बोलो सर, बोलो बोलो बोलो, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ये रेशियो क्या होगा सर? व्हेन टेम्परेचर से कैंसिल होकर 1, log 1 इज 0, ये निकल जाएगा। सो देयरफॉर SF माइनस SI इज इक्वल टू माइनस RLN PF बाई PI। ठीक है सर, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा सर। अब देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन, मैं कितना नीटली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप कोई अप्रिसिएशन नहीं है। बुरा तो लगता है, लेकिन लगने दो, फर्क क्या पड़ता है। सो देखो, therefore now I write sir, so the entropy generation is equal to, mitro, is equal to m2 into S2 minus SE। what is S2 minus SE? S2 minus SE, देखो S2 minus SE is equal to S2 minus SE, तो इसको F को 2 लिखेंगे, I को S2 minus SE, I को E लिखेंगे, so it will be minus RLN S2 minus SE, so P2 by PE। I'm just writing S2 minus SE, I want S2 minus SE, S2 minus SE, F को 2 लिखेंगे, E को I लिखेंगे, so F को 2 लिखेंगे, E को, very good, तो therefore this will be minus RLN P2 by PE, एक्सेलेंट सर, माइनस M1 इंटू, यहां पे क्या लिखेंगे, S1 माइनस SE। तो देखो S1 माइनस SE, S1 माइनस SE, तो S1 माइनस SE का मतलब PF विल बी P1, तो माइनस RLN
P1/PE। क्या ये सबको समझ में आया सर? आई हैव नॉट डन एनीथिंग, बिकॉज इंट्रोपी चेंज क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जनरल इक्वेशन ये आएगा। तो SF माइनस SI इज फाइनल फाइनल, इनिशियल इनिशियल, तो फाइनल इज 1, ओके, इनिशियल इज E, फाइनल इज 2 इनिशियल। क्या ये इक्वेशन सभी को समझ में आया सर? मेरे हिसाब से तो आना चाहिए सर। क्लैरिटी आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा सर। क्या क्वेश्चंस करवा रहा हूं सर? टू बी ऑनेस्ट, you should be ever grateful to me. Seriously, you should be ever grateful to me. Yes or no? मैं झूठ बोल रहा हूं सर? Yes or no? आप पुट करो। नाउ द क्वेश्चन इज, देखो देखो, नाउ द प्रॉब्लम इज, मित्रों अब देखो, सो द एंट्रोपी जनरेशन इज गिवन बाय माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो M1R ln P1/PE, M1R माइनस इंटू माइनस प्लस M1R, तो ये माइनस है सर, माइनस M2R P2/PE। Excellent, sir. The initial pressure is given as 500 kilopascal and the final pressure is given as 700 kilopascal. Unfortunately, the exit pressure is not known. एक बार ब्यूटी देखना इस क्वेश्चन का, एक बार ब्यूटी देखना। The initial pressure here is 500. When it is going, the final pressure is 200, means the pressure is changing। जब ये प्रेशर चेंज हो रहा है तो एग्जिट का प्रेशर भी चेंज होगा सर। तो जब 500 है, शायद 500 से आया, सो जैसे ही जा रहा है इधर का प्रेशर घट रहा है, इट्स प्रेशर इज चेंजिंग, सो एज द प्रेशर इज चेंजिंग द एग्जिट प्रेशर इज ऑल्सो चेंजिंग, बट द एग्जिट प्रेशर इज नॉट गिवन। क्या करे सर? क्या करे बताओ सर? तो इनिशियली इट इज एट 500 एंड फाइनली इट इज एट 200, तो देखो 500 से 200 घट गया, तो एग्जिट प्रेशर इज चेंजिंग, तो वेन एवर इट इज चेंजिंग आई टोल्ड यू टेक एवरेज। तो एवरेज क्या ले लेंगे? 500 प्लस 200, इनिशियल प्लस 500, 500 प्लस 200 is 700, 700 by 2 is 350, so 700 by 2 is 350, right? Now you take 350, the exit is 350 sir, exit is 350, मस्त है सर। अब देखो, so entropy generation is equal to, what is M1? I think M1 is calculated by us, हम already calculate किए, 26.396, एयर है तो 0.287 into ln, air hai to point P1, what is the initial pressure? It is 500 and it is 350 sir. Excellent sir. So PE is this much. Okay, okay, I'm just substituting values। देखो M1 is this, R is initial pressure, minus M2 is 10.558 and R2 is 0.287 into ln P2 final pressure is 200 and the exit is 350। तो आंसर बताओ सर, बताओ सर आंसर। हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सर, 100% हाईली कॉन्सेप्चुअल, जबरदस्त क्वेश्चन है सर। प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी, आई एम बैक इन 1 minute, प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी। 100% हाईली कॉन्सेप्चुअल, जबरदस्त क्वेश्चन है सर। प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी, आई एम बैक इन 1 minute, प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी।
व्हाट्स द वैल्यू 4 पॉइंट। वाह, एक्सलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। मैं आज तो आप छा गए बेटा। सो एक बार यूनिट देखेंगे। एम इज इन केजी एंड आर इज किलो जूल पर केजी पर केल्विन। इसका कोई यूनिट नहीं, एम आर इसका कोई यूनिट नहीं, सो देयरफॉर इट विल बी किलो जूल पर केल्विन। कितना आ रहा है सर? 4.39। वाह 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 वाह। तो एंट्रोपी में अनस्टेडी स्टेट और इतना टफ क्वेश्चन, एक बार बोलो सब लोग इस क्वेश्चन को। वाह 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 वाह। तो एंट्रोपी में अनस्टेडी स्टेट और इतना टफ क्वेश्चन, एक बार देखते हैं सर। 4.4। आई आई 4.3। यस, ओ गया देखो। 4.4। ये वर्क यू हैव टू डू इट सर। ऑनेस्टली टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड सर? क्या मस्त क्वेश्चंस कर रहा है सर, सैल्यूट। ये करो, अब ये करो सर। A copper rod of length 1 meter and diameter 0.01 meter. One end is at 100 degrees and other is at 0 degree. The rod is perfectly insulated along its length and the thermal conductivity of copper is so and so. The heat flows steadily through the rod. Which of the following statement is correct? The rate of heat transfer is given. The entropy production पूछा है सर, due to irreversibility. Irreversible heat transfer के कारण देखो, the figure is also given. एक बार देखते हैं सर। देखो देखो मैं बताता हूं, ये इंसुलेटेड है सर, तो दिस साइड इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस साइड इज एट 2। तो हाउ इज द हीट फ्लोइंग सर? अगर ये रॉड लिए, इफ दिस इज अ रॉड, अगर ये रॉड है, this temperature is 100 degree centigrade and this is 0 degree centigrade. Higher to lower heat flow होगा and moreover it is steady flow and lateral surfaces are insulated. तो ऐसा flow हो रहा है सर। It is a one dimensional heat conduction. देखो आप जानते हैं ना हाउ टू कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर, हाउ टू कैलकुलेट? यस, Q इज इक्वल टू, हमने हीट ट्रांसफर में पढ़ा के ए डेल्टा टी बाई एल। होप यू रिमेंबर दिस इक्वेशन। ये हीट ट्रांसफर से लाया हूं सर, लाया हूं हीट ट्रांसफर से। हाँ जी सर। सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू के, व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी? 380। किस एरिया से कंडक्शन हो रहा है सर? देखो देखो, इस एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से कंडक्ट, एक लेयर से दूसरे लेयर। देखो इस लेयर से, ध्यान से सुनो, इस लेयर में, इस लेयर से इस लेयर, तो एरिया, व्हाट इज द एरिया? पाई बाई 4, व्हाट इज द डायमीटर? 0.01 स्क्वायर into temperature difference, 100 minus 0 is 100. So whenever it is temperature difference, it doesn't matter whether it is in Kelvin or degree Celsius, by L. What is the length? What is the length or thickness of this? It is 1 meter. So आप बताइए, what is the value of heat transfer? Is 100. So whenever anyone with heat transfer, 2.983 watt. Yes, A is correct. Now ये गलत है सर। Now he is asking entropy production. How do I calculate entropy production? ध्यान से सुनिएगा मित्रों। पहले इक्वेशन लिखो सर, पहले इक्वेशन लिखो, पहले इक्वेशन लिखो सर मित्रों। देखो देखो एक सेकंड, देखो एक सेकंड। ds by dt in the control volume. Is there any mass transfer sir? बिकॉज ऑफ मास ट्रांसफर देयर विल बी एंट्रोपी ट्रांसफर। यहां पे तो कोई मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा है सर, सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो मास ट्रांसफर से नहीं होगा। दिस विल बी डी डैश क्यू बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन, बिकॉज देर इज नो मास ट्रांसफर। क्या ये सही है सर? अगर ये जनरेशन डॉट है तो हीट ट्रांसफर होगा। वेरी गुड सर। एक्चुअली दिस इज डॉट ओनली, बिकॉज वॉट में है तो जूल पर सेकेंड। क्या ये बात सभी को समझ में आई सर? इफ यू से यस देन आई विल प्रोसीड सर। अगर आप यस बोलेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा सर। अगर आप यस बोलेंगे, देखो ध्यान से सुनो सर, देखो
मेरे प्यारे बच्चों, इट इज अ स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर. फॉर स्टेडी स्टेट, विल देयर बी एनी चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विद टाइम? स्टेडी स्टेट के लिए विल देयर बी एनी चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विद टाइम? तो स्टेडी होने के कारण नो चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विद टाइम, तो ये जीरो हो जाएगा. तो जीरो इज इक्वल टू डी डैश क्यू बाई टी प्लस डेल एस जनरेशन. एक्सेलेंट सर. यहां पे देखो, एंट्रोपी ट्रांसफर किसके कारण हो रहा है सर? हीट ट्रांसफर. तो एंट्रोपी ट्रांसफर का डायरेक्शन भी हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन हो रहा है. ये अंदर आ रहा है हीट और यहां से बाहर जा रहा है. तो यहां पे हीट कितना होगा, यहां पे हीट कितना होगा? सेम होगा, बिकॉज स्टेडी स्टेट है. वेन एवर इट इज स्टेडी स्टेट, वॉट एवर हीट इज एंटरिंग, सेम हीट जा रहा है. तो ये अंदर आ रहा है तो प्लस, ये बाहर जा रहा है तो माइनस. तो अब देखो सर, मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, देखो एक बार, दिस क्यू 2.983 किस टेम्परेचर पे अंदर आ रहा है सर? देखो एक बार, देखो एक बार इधर रखेंगे. हाँ, 2.983 किस टेम्परेचर पे अंदर आ रहा है सर? किस टेम्परेचर पे? आई थिंक इट इज 100 डिग्रीज. तो केल्विन में कन्वर्ट करना, सो इट विल बी प्लस होगा. क्यों प्लस? देखो मैं बताता हूं सर, आई टेल यू. This temperature is 100 degrees, means 373 Kelvin. This is 0 degree, it is 273 Kelvin. तो ये अंदर आ रहा है तो प्लस, तो दिस प्लस बाई 373 प्लस, ये बाहर जा रहा है तो इट विल बी माइनस. Q is already known. Q is already known सर. सर आपको समझ में आ रहा है सर? Q is already known. So Q is 2.983 by ये same 273 plus del S generation, and that should be equal to zero. Why it is zero? Because already steady state है तो ये जीरो है, तो जीरो लिखा इधर. एंट्रोपी जनरेशन. सो दो जगह हीट ट्रांसफर हो रहा है. एक बार टोटल हीट ट्रांसफर Q बाई टी, एक अंदर आ रहा है तो Q इज 2, बिकॉज स्टेडी स्टेट है तो सेम रहेगा सर. whenever it is a steady state, everywhere it will be same. तो this is entering तो प्लस, this is leaving तो माइनस, इसलिए माइनस दिया. सो क्या ये बात सभी को समझ में आई सर? स्टेट है सेम रहेगा सर. तो ये अंदर आ रहा है तो प्लस, ये बाहर जा रहा है. सो देयरफॉर मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, एक बार देखना सर. सो देयरफॉर एंट्रोपी जनरेशन विल बी इक्वल टू, ये बाहर उधर जाएगा 2.983 बाई 273, और ये उधर जाएगा तो माइनस 2.983 बाई 373. यूनिट चेक करो. दिस 2.983 इज इन वॉट and temperature is in Kelvin, so this will be watt per Kelvin. Anyone with answer? और ये उधर जाएगा तो माइनस 2.983 by 373. यूनिट चेक करो. This 2.983 is in watt and temperature is in Kelvin, so this will be watt per Kelvin. Anyone with answer? Yes, excellent students of India. 0.0029. Wonderful students of India, or 2.93 into 10 power minus 3 watt per Kelvin. Am I right, sir? वाह, ये भी सही सवाल सा था सर. 2 point, yes, yeah. अरे अल्लाह, वाह. एक बार सोचो सर, इन एवरी क्वेश्चन वी आर डूइंग 2 कर रहे हैं. यहां पे भी दो की. डोंट थिंक दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड नाउ. 19 का ऑलरेडी और भी किए थे, 3-4 किए थे, मतलब 19 टू 38 एवरेज, अराउंड 40 प्लस क्वेश्चंस तो कर चुके हैं सर. सर मजा आ रहा है सर. सर मजा आ रहा है सर. गुड. वाह, थोड़ा खतरनाक है सर ये. प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर, थोड़ा खतरनाक है ये. एक सेकंड, ये हटा देंगे, ये टाइम लगेगा थोड़ा, डेटा में दिक्कत है. चलो पढ़ो, पढ़ो सर. अमेजिंग क्वेश्चंस. थैंक यू संचिता. थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन. अमेजिंग. थैंक यू. थैंक यू.
छोड़ना ही नहीं सर। आज आज तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं सर। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा रे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा रे। कुछ भी हो, आज मैं कंप्लीट ही करूंगा सर। बिकॉज एक बार ये कर लिए ना, यू विल गेन कॉन्फिडेंस इन एक्सी, एक्सी एज वेल एज एनी। पढ़ो सर। हीलियम गैस, helium gas, we can treat helium gas as an ideal gas. Throttled. सर थोड़ा मैं आपको बहुत बढ़िया सा बताऊंगा सर यहां पे। प्लीज 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 बढ़िया सा एक पॉइंट बताऊंगा सर। इज throttled फ्रॉम 400, देखो व्हाट इज द इनिशियल प्रेशर सर, and what is the initial temperature sir? Please convert in Kelvin. 273 plus 60, 333 Kelvin. Okay. Heat is, oh ho ho, what is the heat sir? It is lost to the surrounding, and the surrounding temperatures are 25 and 100 kilopascal. The surrounding temperature is 298 Kelvin and the surrounding pressure is 100 kilopascal. ठीक है सर। The entropy of helium increases by 0.34 kilojoule per kg. ये repeat हुआ सर ये statement. The entropy change of helium, that is S final minus S initial. What is the entropy change of helium? It increases by 0.34 kilojoule per kg per Kelvin. The entropy increases by which of the four? And Cp value is given. सुनो, the Cp value is given, R is given. What is the exit temperature पूछा है सर? Exit temperature and exit pressure. ठीक है सर। कैसे करेंगे सर? हम ये सोचते हैं सर, सुनो 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 मित्रों, यहां से देखो सर, यहां से एक पॉइंट बताता हूं सर, इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल। थ्रॉटलिंग इज अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस, एटलीस्ट यू अग्री ना? थ्रॉटलिंग इज अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस। तो अप्लाई करो H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 plus Z1G by 1000 plus Q is equal to H2 plus C2 square by 2000 plus Z2G plus W. Everyone knows throttling में कोई वर्क नहीं होता because due to friction complete work is lost. He is not talking about kinetic potential energy changes. Another question. Shall I remove this heat transfer? Because due to friction complete work is lost. बताओ सर, shall I remove this Q? Actually, the size of the throttling device generally it will be so small that the time is not available for the heat transfer. तो heat transfer generally throttling में जीरो होता है। Purposefully ये क्वेश्चन मैं दिया सर। Generally throttling में 99.9999% if nothing is said, heat transfer work transfers are zero. But in this problem heat transfer is given, इसीलिए आपको लेना पड़ेगा। पर्पसफुली ये क्वेश्चन दिया सर आपको ट्रैप करने के लिए। therefore H1 plus Q is equal to H2. Excellent. अब देखो सर, H1 can be written as CpT1 plus Q is equal to CpT2. Excellent sir. So therefore ये कौन सा Cp is given, I think don't take it as air. देखो Cp is 5.1926, 5.1926, 5.1926. ओके, एक काम करते हैं सर, आई विल डू वन थिंग, एक सेकेंड। व्हाट इज T1 सर? इनिशियल टेम्परेचर। द इनिशियल टेम्परेचर इज 333, so 333 plus what is the heat transfer sir? Heat transfer is minus 1.75 and that should be equal to 5.1926 into T2. as this is in Kelvin, ये भी Kelvin में आएगा। क्या आप मुझे T2 का वैल्यू दे सकते सर?
plus 1.75 and that should be equal to 5.1926. आप 273 माइनस करना सर. Correct. So therefore, it's not 60. देखो, it's not 60. It is 59 point something. ये गलत है सर. The exit 332 बिल्कुल सही है सर. बिल्कुल सही है. Now he is asking exit pressure. कैसे करेंगे सर? Hope you understood. What अगर ये heat transfer नहीं होता है तो temperature will remain constant because for an ideal gas enthalpy remains is a function of temperature. समझ में आ रहा है सर? Okay, no problem. Therefore, देखो एक सेकेंड. अब how do I find out the देखो देखो फाइनल प्रेशर यू नो वेरी वेल. देखो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CP T2 बाई T1 माइनस P2 बाई P1. क्या मैं ये इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं? यस, इट इज एन आइडियल गैस. आई कैन अप्लाई, आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं सर, आराम से, बिना टेंशन से. सो देयरफॉर ऑलरेडी एंट्रोपी चेंज दे रखा है सर. ऑलरेडी द एंट्रोपी चेंज इज गिवन. हाउ मच इज दैट गिवन? 0.34 दिया है सर. ऑलरेडी इट इज गिवन एज 0.34. 0.34. CP is 5.1926 into ln. The final temperature is 332.66 and the initial temperature is 333. Okay, minus देखो माइनस R दे रखा है सर. व्हाट इज R गिवन? इधर देखो, R इज 2.0769. 2.0769 2.0769 into ln. R ln. The final pressure is unknown. And what is the initial pressure, sir? Initial pressure एक बार बताओ. Initial pressure is 400. So initial pressure is 400. So अगर ये किलो पास्कल में है तो ये भी किलो पास्कल में आएगा सर. मित्रों, so everything is known. I want P2. एग्जिट प्रेशर 339 आ रहा है ना. कैलकुलेट करो P2. कैलकुलेट करो, आपके हाथ में है सर. कैलकुलेट करो P2. कैलकुलेट करो, आपके हाथ में है सर. 0.34 is 5.1. Anyone? I want the value, sir. I'll wait. I want the value, sir. I'll wait. I'll wait. मूर्ख है रे आप लोग, बुरा लगता है सर. I'll wait. Only 38 point. Someone gave the answer. Very good. Sanchita, you are right. I am sorry. माफी चाहता हूं. 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 338 point. Okay. 338.7 kilopascal is right. I am really sorry. I am really sorry. आपने सही आंसर दिया लेकिन मैं उसको रॉन्ग बोला. इट्स माय बैड. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. 7 kilopascal is right. I am really sorry. संचिता जी, आया क्वेश्चन? मजा आया सर, मजा मजा.
मजा मजा। एंट्रोपी के कितने तगड़े क्वेश्चंस किए, प्योर सब्सटेंसेस आ गए रे बाबा। अच्छा जी, आया क्वेश्चन, मजा आया सर, मजा मजा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। प्योर सब्सटेंसेस आ गए रे बाबा। एक मस्त क्वेश्चन इन प्योर सब्सटेंसेस। देखो सर, हर एक क्वेश्चन अपना अपना एक स्थान बना लिया सर। एवरी क्वेश्चन हैज मेड इट्स ओन प्लेस इन दिस सेट ऑफ क्वेश्चन सर। A piston cylinder device contains 25 gram of saturated vapor that is maintained at a constant pressure of the. A resistance heater within the cylinder is turned on and passes current of zero point 0.2 ampere for 5 minutes and 120 source. At the same time, there is a heat loss. The enthalpy at the final state is. क्या क्वेश्चन है सर? पढ़ो सर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मजा आएगा सर। And 120 source. At the same time, there is a heat loss. The enthalpy at the final state is. क्या क्वेश्चन है सर? पढ़ो सर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मजा आएगा सर। एक सेकंड, क्या बोल रहा है सर? एक बार देखो। Initially, some pressure. Initially, 25 gram of saturated vapor. This is the saturated vapor, sir. देखो, initially it is at this state. इस state पे है. Initially it is at this state. देखो, is maintained at a constant pressure of 300 and the resistance heater is turned on. देखो, हा कैसे करेंगे सर? कैन आई कैलकुलेट द वर्क ट्रांसफर? बोलो, एक सेकंड। कैसे करेंगे सर? कैन आई कैलकुलेट द वर्क ट्रांसफर? ओके ओके ओके, आराम आराम, टेंशन नहीं लेने का सर जी। क्या क्वेश्चन करवाएंगे आपके लिए? मजा मजा रे, मजा मजा रे। देखिए, हाउ मच करंट इज पास, मतलब ये इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है एंड देयर इज अ हीट लॉस। सुनो सुनो सुनो, क्या सवाल है सर? इधर देखो सर, हाउ मच इलेक्ट्रिकल वर्क इज टेकिंग प्लेस। देख बार, इलेक्ट्रिकल वर्क, you know, power is equal to VI. Power is rate of doing work by time, VI. अगर इलेक्ट्रिकल वर्क चाहिए तो VIT, ओके, VIT टाइम। सो देयरफॉर व्हाट इज द वोल्टेज सर? व्हाट इज द वोल्टेज? 120। देखो, सो इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज इज 120 एंड करंट। एक बार करंट देखो, करंट कितना है सर? 0.2 एम्पियर, 0.2 ampere, and it is transferred for how long sir? कहां गया रे मुंह? How long? 5 minutes। एक बार देखो 5 minutes, एक बार देखो 5 minutes। Actually, if you write VI, it will be in watt। VI का यूनिट होता है watt, मींस जूल पर सेकंड। अगर मैं सेकंड में मल्टीप्लाई करता हूं तो जूल में आएगा। सेकंड कितने समय तक हीट कर रहे सर? 5 minutes। सो 5 minute मीन्स 5 minute मीन्स 60 सेकंड। सो दिस देखो, दिस विल बी इन वॉट? जूल पर सेकंड। सो 5 minute को 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में आएगा। सो ये आंसर जूल में आएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक वर्क सर? कोई कमेंट नहीं कर रहे सर, कमेंट नहीं कर रहे सर। आई एम नॉट गेटिंग कमेंट्स। कम ऑन कम ऑन।
70 to 100 joule or 7.2 kilojoule. Correct? Sir, Purushottam, your answer is wrong. It's not in kilowatts, sir. Already power is VI. I multiplied VI with T. VI will be what? VI will be what? Joule per second. I multiply with 10. It will, देखो आप यूनिट भी नहीं लिख रहे सर. Simply you are writing 70 to 100, 70 to 100. ये भगवान. थु 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 थु. Power is equal to V into I. This VI will be in watt, that is joule per second. So power को मैं वर्क बाई टाइम करूंगा सर. तो वर्क इज इक्वल टू जूल पर सेकंड इनटू टाइम. अगर मैं टाइम को सेकंड में कर रहा हूं तो सेकंड सेकंड गया जूल में आएगा सर. क्या ये बात समझ में आ गई सर आपको? सेकंड. सो पावर को मैं वर्क बाई टाइम करूंगा सर. तो वर्क इज इक्वल टू जूल. आया? हाँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बोल रहा है सर. ये देखो, there is a heat loss of 3.7 किलोजूल. अच्छा, ये तो क्लोज्ड सिस्टम है सर. देयर इज नो फ्लो. तो कितना मस्त क्वेश्चन है सर. देखो एक बार कितना मस्त है. डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू. वेरी गुड. अब देखो सर, देखो एक बार. पिस्टन सिलेंडर डिवाइस एंड कांस्टेंट प्रेशर. Piston is moving, so there will be displacement work of constant pressure. It's a piston cylinder device of constant pressure. So what will be the total work, sir? What will be the total work? Either dekho, sir. What will be the total work? So the heat transfer is equal to du plus there is a displacement work and there is electric work. So the displacement work is pressure is constant into V2 minus V1. It is the displacement work. Plus electrical work. Already we have calculated it is minus 7.2 kilojoule. Yeah, already kilojoule. And what is the heat loss, sir? What is the heat loss? The heat loss is given as 3.7 kilojoule. So the heat loss is 3.7, but I should write minus 3.7 kilojoule. Can you tell me the reason for writing minus? Because there is a heat loss of minus 3. Ab dekho. du can be written as u2 minus u1 plus pv2. P1 is equal to P2 is equal to P because the pressure is constant. PV2 can be written as P2V2 minus PV1 can be written as P1V1 minus 7.2. All are in kilojoule. ये सारे kilojoule में है sir. Minus 3.7 kilojoule is equal to what is U2 plus P2V2? H2 minus common ले लेना. U1 plus P1V1 H1 minus 7.2. So H2 minus H1 is equal to, ये इधर लाओ, 7.2 minus 3.7. They are in kilojoule. So H2 minus H1 is equal to, what is 7.2 minus 3.7? H2 minus H1 is equal to, ये इधर लाओ, आया सर समझ में? Minus 3.7. They are in kilojoule. H2 minus H1 is equal to, what is 7.2 minus? आया सर समझ में? But there is a problem. देखो 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 देखो. The problem is, what is the final enthalpy in kilojoule per kg? देखो देखो, वाह क्या ही तो क्वेश्चन है सर. क्या ही तो क्वेश्चन है. देखो, आई विल राइट दिस एज m into h2 minus h1. कैपिटल H can be written as mass into small h. तो m small h2 m small h1, m को बाहर लो. It is 3.5 kilojoule. So therefore h2 minus h1 is equal to 3.5 kilojoule by mass. Mass is given as 25 gram. ग्राम को 10 power minus 3 कर देना. The mass is given as 25 gram. So divide करो. 25 gram is 10 power minus 3. Now it will be in kilojoule per kg. What is H2 minus H1, sir? It is 3.5 kilojoule. So therefore H2 minus H1 is equal to
But he is not asking the difference of enthalpy. He is asking the final enthalpy. Final enthalpy is H1 plus 140. So अगर ये किलोजूल per kg में है, this should be kilojoule. Can anyone tell what is H1? मित्रों, H1, H1, H1. H1 is, देखो देखो, H1 is saturated vapor. H1 will be equal to Hg. तो टेबल ले लेना, Hg. Hg is given as 2724.9, 2724.9, 2724.9. So therefore it is 2724.9 plus 140. क्या आप मुझे H2 का वैल्यू दे सकते सर? क्या क्वेश्चन है सर? I'm loving it, sir. I'm loving it, sir. सवाल है सर. I'm loving it, sir. खुशियां नी बंदा खुशो की नहीं. आपके कमेंट्स नहीं आ रहे सर? ये ले लो. क्वेश्चन अच्छा था सर. खुशियां नी बंदा खुशो की नहीं. Come on, come on, come on. No one is commenting, sir. What's the reason for that? No one is commenting. What is the reason for that, sir? ये ले लो. This is also a good question. A rigid tank 2 meter cube internal volume contains 5 kg of water as a saturated liquid vapor mixture. मतलब initially there is a liquid vapor mixture and the tank volume is 2 and the pressure is half of the saturated liquid is drained out while maintaining a constant pressure in the tank. The final quality of the mixture is बहुत ही बढ़िया problem sir. Initially, can I calculate the specific volume, sir? Initial specific volume. It is volume by mass. What is the volume, sir? 2. And what is the mass, sir? Initial mass 5. तो ये होगा specific volume is volume by mass. This is nothing but 0.4. But initially it is in wet region. तो wet region में है क्योंकि there is a liquid vapor mixture. Can I write this as plus x into VFG? VG minus VF. Yes, sir. So x VFG का मतलब VG minus VF. Okay, right. So therefore, so initial specific volume is 0.4 and what is VF, sir? VF is दिया है सर, यहां पे दिया है 0.00 plus x I don't know. And what is VFG? A initial dryness fraction है sir, initial dryness fraction. So what is VFG? 0.46 138. We can also write VFG as VG minus VF. तो आप बताइए what is the initial dryness fraction? What is the initial dryness fraction, sir? I don't know. I want to create initial dryness fraction as an initial dryness fraction. So what is VFG? 0.46. Okay. What does it mean? देखो, initially there is a total mass of the mixture, the total liquid plus vapor, the total mass is 5 kg. ठीक है सर. So dryness fraction initially is known. What is the initial dryness fraction? Dryness fraction is mass of vapor by mass of vapor plus mass of liquid. So initial dryness fraction is 0.8648. And what is the mass of vapor, sir? I do not know. And what is vapor plus liquid? Vapor plus liquid is 5 kg. So initially, आप बताओ sir, what is the mass of vapor, sir? मित्रों, what is the mass of vapor? So the mass of vapor will be equal to, multiply करो, into 5. Okay.
तो व्हाट विल बी द मास ऑफ लिक्विड? अगर लिक्विड का मास चाहिए, टोटल मास 5 में से वेपर निकालना 4.3239 फ्रॉम द टोटल मास, तो कितना आ रहा है सर? So mass of liquid will be equal to 0.6761. क्या बोला है सर? Half of the mass of the liquid is removed. Is he changing mass of vapor? No, only liquid is removed. तो in new case vapor का mass change नहीं हो रहा सर, उतना ही रहेगा 4.3239. What is the new mass of liquid sir? New mass of liquid. So इससे आधा निकाल दिए, तो आधा जब निकाल देंगे कितना बचेगा सर? हाफ इज रिमूव्ड. When half is removed, only half is left. So it will be 0.338. So in the new mixture, after removing half of the liquid, this much liquid is available. Vapor is not touched. So let us calculate the new drainage fraction. What is the drainage fraction? Mass of vapor by new drainage fraction is mass of vapor by total mass of the mixture. 4.3239 plus 0.338. तो कितना आ रहा है सर? So I'm getting the new drainage fraction as 0.9275 plus 0.338. लोगों को समझ में नहीं आ रहा सर. क्लैरिटी आ गया सर? So I'm getting as 0.9275. वेरी गुड. ये भी अच्छा क्वेश्चन था सर. यस और नो? दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन. ये ऑलरेडी कर चुके हैं सर. 23rd वी हैव डन. 23rd इज ओवर. 24th is also over. We are nearing sir. ये करो सर. 25. 25. कुछ ब्रेक मांगता है सर? कुछ ब्रेक ले लेंगे? कुछ ब्रेक ले लेंगे? डोंट थिंक दैट वी आर डूइंग टू टू. नो, एक एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन है सर. थोड़ा ब्रेक ले ले. आप बताइए सर. एक 15 मिनट का ब्रेक ले ले. यस 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 यस. नाउ इट इज 7:45. Let us meet at. Yes. We are meeting at 8 2 p.m. Okay. So we are meeting at 8 2 p.m. Okay. 7 we'll take a break. ठीक है. ब्रेक ले रहे हैं सर. Let us meet at. We are meeting at 8 2 p.m. Okay. So we are meeting at 8 2 p.m. Okay. 7 we'll take a break. Break ले रहे हैं सर.
चलो आ जाओ. Come on, let's not waste time. नहीं, it will not take that much time. अभी क्वेश्चंस इजी है. How many questions did we do? अभी तो इजी है सर. इजी है सर अभी. उल्टाएंगे सर, उल्टाएंगे. 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 पुष्पेन, come on, come on. उल्टाएंगे सर, उल्टाएंगे. We'll complete it, we'll complete it. 12 आवर्स नहीं लगेगा अभी. एक 1.5 आवर्स में विल बी कंप्लीटिंग. हेलो. हाँ ठीक ठीक ठीक. चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ. चलो उल्टाएंगे सर. वेलकम. उल्टा. ये देखो 37 38. एक्चुअली टोटल क्वेश्चंस आर 39. हाँ लास्ट 39 इज द लास्ट. उल्टाएंगे सर. वेलकम. उल्टा. विल इट बी ओके? चलो. Two cycles are shown in the figure. Internal rears. Which of the following is correct? Okay. He's asking about the efficiency. Very good, sir. Let's do this question, sir. He is asking about the efficiency. ध्यान से सुनो. ये देखो. Efficiency is equal to net work by heat supply. Net work by heat supply. Correct, sir? Efficiency is equal to net work by heat supply. इधर देखो. So from the first law of thermodynamics, net work is also equal to net heat. This is a TS diagram. On TS diagram, area will give you heat transfer. So अगर आपको closed area चाहिए तो it will give me net heat. But net heat is also equal to net work. So इसलिए whether it is a TS diagram or PV diagram, closed area is not only net heat but also net work. I repeat, sir. I repeat, sirs. I repeat. मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो. Whenever it is a closed area, so it will give me net heat on TS diagram. So but net heat is also equal to net work. तो अगर आपको नेटवर्क चाहिए तो क्लोज एरिया कैलकुलेट करो. व्हाट इज द एरिया सर? दिस नेटवर्क इज इक्वल टू क्लोज एरिया. व्हाट इज द एरिया? इस क्लोज एरिया का. सो इट इज अ ट्रायंगल. हाफ base. What is the base? This is B, this is A. So B minus A. Half base is this and the height is 600 minus 300. That is 300. क्या ये सही है सर? क्या ये सही है सर? बताओ सर क्या ये सही है सर? नेटवर्क इज इक्वल टू हाफ base is B minus A. This is B, this is A, and the height is 600 minus 300. This is the area. यहां पे आइए हम. What is the network in this, sir? Network is again closed area, half base. What is this base, sir? B minus A. B minus A. And what is the height, sir? ये height देखो, ये height. Base into height. Height is 600 minus 300 is 300. Can you comment on the network, sir? क्या आप नेटवर्क पे कमेंट करेंगे सर? मित्रों नेटवर्क पे कमेंट करेंगे. यस, network in both is same. So if the network is same, can I say the efficiency is same? नहीं सर. देखो efficiency is equal to net work by heat supply. तो which one is giving me the efficiency सर? network तो दोनों के सेम है. So ये सेम है. तो आप efficiency चाहिए. चलो कोई बात नहीं सर, कैलकुलेट करेंगे. यहां तक क्लैरिटी आ गया सर? यस. हाउ कैन आई कैलकुलेट द हीट सप्लाई? आप जानते हैं in a reversible process heat supply means increase of entropy. देखो देखो एक बार, heat supply is increase of entropy. इधर देखो सर, तो यहां से entropy is increasing,
So therefore, 3 to 1, there is a supply of heat. 1 to 2, entropy is decreasing. It is the heat rejection. 2 to 3 entropy is constant, means it is reversible adiabatic. इसमें कोई heat transfer नहीं है, इसमें रिजेक्शन है. मुझे सप्लाई चाहिए बिकॉज एफिशिएंसी इज नेटवर्क बाय हीट सप्लाई. सप्लाई इज टेकिंग प्लेस इन दिस. तो हाउ कैन आई कैलकुलेट? सो यू प्रोजेक्ट दिस, 1 2 3 के नीचे का एरिया कैलकुलेट करो. दैट विल गिव मी दी हीट सप्लाई बिकॉज हीट सप्लाई इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम 3 to 1. 3 को प्रोजेक्ट करो, 1 को प्रोजेक्ट करो, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करो. सो व्हाट इज द हीट सप्लाई सर? Area of this trapezium, half into sum of the parallel sides. This is 600 and this is 300. 600 plus 300 into distance between them. What is the distance between them? P minus A. So the efficiency of one is equal to, network is P minus A into 300 by 2 by, this is the network, by, this is 900. 900 into B minus A by 2. So B minus A by 2, B minus A by 2 is gone. So it is 1 by 3. 1 by 3 means 33.33%, sir. 33.33%. Is it okay? Excellent, sir. Now let us calculate the efficiency of this. Network is known. How to calculate the heat supply? देखो, यहाँ से 2 to 3, there is increase of entropy, so heat supply. And here there is a heat rejection. So इसमें entropy decrease हो रहा है, heat rejection. इसमें entropy constant है, reversible adiabatic. So if you want the heat supply, it is occurring from 2 to 3. 2 को project करना, 3 को project करना. So this will give me the heat supply. In the second case, what is the heat supply, sir? Length, this is 600 into B minus A. This is 600, this is B minus A, B minus A. So therefore, efficiency is equal to, network is B minus A by 2 into 300, B minus A by 2 into 300 by 600 into B minus A. So B minus A gaya. So therefore this will be 150 by 600. So it will be equal to 1 by 4. 1 by 4 is 25%. So the efficiency of this is 25%. Efficiency of this is 33%. So efficiency of 1 is greater than efficiency of 2. So answer is C. Is it okay? अरे यार बोलो सर, बोलो सर. Is it clear? You are not saying anything, sirs. So come on, comment करो. सेम बोल रहा है, एफिशिएंसी सेम कैसा आएगा सर? हाउ कैन एफिशिएंसी बी? नेटवर्क इज सेम बट कैसा आएगा सर? हाउ कैन एफिशिएंसी? नेटवर्क इज सेम बट clear? Is it clear? थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था ना. क्लियर? विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वेपर प्रेशर ऑफ, देखो लिक्विड वेपर, मतलब दिस इज टॉकिंग अबाउट द वेपराइजेशन. एंड ये क्या है? वेपर प्रेशर. ये वेपर प्रेशर और ये देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड वेपर. दिस इज टॉकिंग अबाउट सब्लिमेशन एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट वेपराइजेशन. और ही इज आस्किंग, सी द क्वेश्चन एक बार देखो. द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द ट्रिपल पॉइंट. एवरीवन नोस एट द ट्रिपल पॉइंट. देखो सर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर? इधर देखो, ये ln P of triple point. If the pressure is corresponding to triple point, the temperature will be triple point. So therefore, 3063 by TTP is equal to 15.16. अगर प्रेशर ट्रिपल पॉइंट का है तो टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट का होगा. सो अगर प्रेशर ट्रिपल पॉइंट का है टेम्परेचर, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट इज अ यूनिक स्टेट जहां पे सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फ्यूजन सारे कर्व्स मीट होते हैं सर.
सो ये सब्लिमेशन देखो, सब्लिमेशन वेपराइजेशन कर्व सेम होते हैं सर ट्रिपल पॉइंट पे। सो देयरफॉर दे मीट करते हैं सर। देखो अब देखो, नाउ नेक्स्ट वन इज, कैन आई राइट, अगर ये देखो ln, if this is the triple point pressure and this will be 3754 by triple point should be equal to 18.7। मैं कुछ नहीं किया सर, if the pressure is corresponding to triple point, the temperature is corresponding to triple point, whether you take, देखो एक बार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप देखेंगे, सो देखो एक बार, देखो एक बार, सॉलिड लिक्विड वेपर, सो दिस इज वेपराइजेशन, देखो लिक्विड, दिस इज वेपराइजेशन, दिस इज फ्यूजन एंड दिस इज सब्लिमेशन। तो एट दैट ट्रिपल पॉइंट सारा कोइंसाइड होता है, इसलिए मैं दोनों इक्वेशन में लिखा सर। सो देयर आर टू अननोन्स, टू इक्वेशंस, कैन यू सॉल्व सर? क्या आप दोनों सॉल्व करेंगे सर? प्रीवियस बी होगा, प्रीवियस, एक सेकंड, प्रीवियस बी होगा। Oh, efficiency of 1 is greater than 2। ठीक है, efficiency of 1 greater than, ठीक है, ये भी सेम है, तो efficiency of 1 is okay, right? Oh, efficiency of clear, clear, clear। हाँ जी सर, ओके, राइट। हाँ देखो सर, तो दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स, इफ यू आर सॉल्विंग, कुछ नहीं है सर, ये एलन देखो, कैन आई राइट दिस एज 15.16 minus 3063 by TTP is equal to ln PTP। yes sir। तो 18.7 is equal to, ये 18.7 ये उधर लेना, ये उधर लेना, माइनस माइनस 3754 by TTP is equal to ln PTP। सो दोनों बराबर है, तो ये दोनों को इक्वेट करना, when these two are same, इस दोनों को इक्वेट करना, यहां से we can calculate TTP। तो if you are calculating TTP, I think you are getting this as, अरे यार इक्वेट कर लेना, तो therefore देखो 18.7 minus 3754 by TTP is equal to 15.16 minus 3063 by TTP। तो यहां से you can easily find TTP। कितना आ रहा है सर? I want the value sir, I want the value। You people are not giving, बुरा लगता है सर। 18.7 minus 50.16 is equal to excellent sir, excellent, excellent sir। So once that is known, you can put the value of TP here or here to get the value of PTP। चलो पुट करो इसमें, you can put it here or here, मित्रों, you can put it here or here। देखो एक बार, let me put it in this equation, 18.7 minus 3754 by TTP is 195.2 is equal to ln PTP। So you are getting PTP as 0.5875, जो भी corresponding units 5875। So 5875, the pressure is 0.5, whatever be the corresponding unit। एक बार देखो क्या यूनिट दिया है, क्या यूनिट दिया है सर, लेट्स से, एंड जो भी यूनिट है सर, कौन सा यूनिट में दे, एटमॉस्फेयर, सो अमोनिया एटमॉस्फेयर, कोई बात नहीं। सो देयरफॉर द आंसर इज नेक्स्ट, देखो आई थिंक दिस इज करेक्ट ना, दिस इज करेक्ट ना, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट सर? एक्सलेंट सर। देयर इज वन मोर क्वेश्चन इन दिस, दूसरा क्या है देखो, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ध्यान से सुनो, विच कर्व इज रिलेटेड टू वेपराइजेशन,
लिक्विड वेपर का जो कर्व है वो ले लेना, डोंट टेक सॉलिड वेपर। लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला है, वेपराइजेशन मींस कन्वर्शन ऑफ लिक्विड टू वेपर, विच वन इज रिलेटेड टू लिक्विड वेपर, विच वन इज रिलेटेड टू लिक्विड वेपर सर? देखो, देखो एक बार, लिक्विड वेपर, दिस इज द इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है सर, एल एन पी प्लस 3063 बाई टी। देखो एक सेकंड, एल एन पी, एल एन पी एल एन पी प्लस बाई इज इक्वल टू 15.16। ये क्यों ले रहे सर? क्या आपको समझ में आ रहा है सर? वाई आर यू टेकिंग दिस? कैन एनीवन टेल? Why are you taking this? Why are you taking this? Because he is asking latent heat of vaporization. अगर वो sublimation पूछता है तो ध्यान से सुनो सर, had he asked sublimation, इधर देखो, solid vapor, vapor solid, had he asked sublimation, latent heat of sublimation, I would have used this, but he is asking latent heat of vaporization. vaporization के लिए लिक्विड वेपर, देखो वेपर लिक्विड, तो ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं सर, आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन। तो क्या पूछा है सर? व्हाट इज आस्क? ही इज आस्किंग लेटेंट हीट। आप जानते हैं सर, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, dp बाई dt इज इक्वल टू LH बाई आर टी स्क्वायर। सर समझ में ही नहीं आ रहा सर, बहुत बढ़िया, समझ में ही नहीं आ रहा, डोंट वरी, इधर देखो सर, एटलीस्ट यू नो दिस ना, एटलीस्ट यू नो dp बाई dt इज इक्वल टू SG माइनस SF बाई VG माइनस VF। एटलीस्ट यू नो ये भी ये आता है सर। तो आई कैन राइट दिस एज, माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूं सर, SG माइनस SF को, मेरे प्यारे दोस्तों, दिस कैन बी रिटन एज लेटेंट हीट बाई टेम्परेचर, ये लिख सकते सर, बहुत बढ़िया। जनरली कंपेयर टू लिक्विड, वेपर वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, तो इसके रिस्पेक्ट से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो डीपी बाई dt इज इक्वल टू LH बाई TVAG। एक्सलेंट सर, यू नो दैट PV इज इक्वल टू MRT, P इज इक्वल टू M बाई V, V, एक सेकेंड, वॉल्यूम बाई मास कैन बी रिटन एज RT बाई P। तो आपको एक सवाल आता है, सर ये आइडियल गैस इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि लिक्विड को हटा दिए, सिर्फ वेपर है सर, G का मतलब सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर को इट इज इन द गैस स्टेट, आई कैन ट्रीट इट एज आइडियल गैस, ओके नो प्रॉब्लम। सो देयरफॉर वॉल्यूम बाई मास इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ध्यान से सुनो, सो dP बाई dt इज इक्वल टू LH बाई T into V, what is V sir? RT by P, ये P ऊपर जाएगा, तो dP by dt is equal to P into LH by RT स्क्वायर। ये याद रख लेना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सर? यस। अब देखो, he is asking latent heat. For calculating latent heat, I know dP by dt. P as a function of T is known. I'll calculate, sir. क्या ये आप समझ में आया सर? ये इक्वेशन ले लो, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं सर। देखो नो, अब कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएट करो, 1 by p dp बाई dt log p 1 by p dp by dt plus 3063, 1 by t differentiation is minus 1 by t square and this is constant 0. So dp by dt is equal to, ये उधर जाएगा 3063, ये इंपॉर्टेंट है सर, तो ये p भी उधर जाएगा into p, but already you know dp by dt can be written as, अभी तो बताया, p into LH by RT square. So this is dp by dt, ये दोनों इक्वेट कर लेना, 3063 into p by t square is equal to p into LH by RT square. तो p by t square गया, so 3063 is equal to LH by R, तो LH is equal to
3063 into R. But R value is not known. कैसे करेंगे सर? Already molecular weight दिया है सर. The molecular weight is given as 17. तो क्या मैं calculate R value? R is equal to R bar is 8.314 and molecular weight is 17. तो यहाँ put करना सर. So therefore, now I'll write, if you want the latent heat, it will be 3063 and R bar is 8.314 by 17. आप बताइए सर, मस्त क्वेश्चन था सर. मैं सारे कर रहा हूं सर, मैं नहीं छोड़ रहा हूं सर. ये आ रहा है 1498. करेक्ट. क्लियर. तो ऑप्शन क्या है सर? यस एक्सलेंट सर. ये करो. यस. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये करो. यस. प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों. Come on. Okay. Wonderful, sir. Wonderful. We are nearing, sir. We are nearing. There is a gas which is obeying P into V minus B is equal to RT. He is asking Joule-Thomson coefficient for this gas. Okay, sir. We know that TDS is equal to DH minus VDP. ये तो पता है सर. And what is the second TDS equation, sir? मुझे लगता है second TDS equation is Cp dt minus T into dou V by dou T at constant pressure dP. सही है सर? एक बार मैं चेक कर लेता हूं सर. Cp dt minus T into dou V by dou Tp. Yes, exactly, sir. ये सब याद रख लेने का है सर. And you should remember all this, sir, because the most important thing is, सर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सर. वी आर डूइंग थर्मोडायनेमिक रिलेशंस. तो पुट करना, व्हाट इज टीडीएस? सीपी डीटी, हाँ, माइनस टी इंटू डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर डीपी, दैट इज टीडीएस इज इक्वल टू डीएच माइनस वीडीपी. ठीक है सर. अब देखो, व्हाट इज दैट आई एम डूइंग? एक्चुअली आई शुड नॉट डू ऑल दिस, बट आपके लिए मैं कर रहा हूं सर. इधर देखो. सो डीएच इज इक्वल टू Cp dt, dH is Cp dt minus T into dou V by dou T at constant pressure minus V into dP. किसी को समझ में नहीं है? आप जस्ट रीअरेंज DH. तो इसको इधर लिया और माइनस कॉमन लिया. जब आप इसको इधर लेंगे प्लस हो जाएगा सर. तो माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा. सेम दिस इक्वेशन. नाउ यू नो, फॉर थ्रॉटलिंग, what is DH? 0. Enthalpy is constant. So therefore, ये 0 हो जाएगा. 0 is equal to Cp dt minus T into dou V by dou Tp minus V into dP. ठीक है सर. अब देखो मित्रों, एक बार देखो. So therefore, Cp dt is equal to T into dou V by dou Tp minus V into dP. So अगर आपको dt by dP चाहिए तो क्या लिखेंगे सर? 1 by Cp, Cp को इधर लेना, T into dou V by dou T at constant pressure minus V. This is a revision class, mind you. Okay, right. Now, actually, I should write this as, मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, actually I should write this as dou T by dou P. Can anyone tell the reason for writing? Because I calculated this by keeping enthalpy constant. Whenever one parameter is kept constant, whenever one property is kept constant, so you write it as partial derivative. Because ये किस property constant रखे सर? Enthalpy constant रखे. This is evaluated by keeping enthalpy constant. That is 1 by Cp into T into dou V by dou T at constant pressure minus V. Excellent, sir. And this we call it as Joule-Thomson coefficient. So therefore, याद रख लेना sir, the Joule-Thomson coefficient mu is equal to 1 by Cp into T into dou V by dou Tp minus V. This is Joule-Thomson coefficient. क्या ये बात सबको समझ में आई सर?
क्लियर, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ले लो सर, ही गेव P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसके लिए जूल थॉमसन क्वेश्चन पूछा है सर, फॉर दिस गैस, दिस जूल थॉमसन क्वेश्चन, डो वी बाई डू टी, यू हैव टू डिफरेंशिएट वी विथ रिस्पेक्ट टू टी। पहले ऐसा करो, v माइनस पी इज इक्वल टू आर टी बाई, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिमेंबर दिस इक्वेशन सर। जूल थॉमसन क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखना है सर। आई हैव डिराइव्ड, क्योंकि आप, आई थॉट यू आर अ बिट वीक, दैट्स व्हाई आई हैव डिराइव्ड। सो देयरफॉर v is equal to b plus rt by p. So I want dou v by dou t. So dou v by dou t, and you are differentiating by keeping pressure constant. You are differentiating v with respect to t, v with respect to t, keeping pressure constant. B तो constant है 0, and pressure is constant, r is constant, r by p. Pressure is constant, and you are differentiating with respect to t. T का differentiation क्या है सर? 1 है. So dou v by dou t at constant pressure is equal to r by p. Excellent sir. Therefore यहां पुट करना सर, यहां पुट करना, तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाई सी पी इंटू टी इंटू व्हाट इज डो वी बाई डो टी पी? डो वी बाई डो टी पी इज आर बाई पी माइनस वी। एक्सलेंट सर। So already you know P into V minus B is equal to RT. So V minus B is equal to RT by P. So therefore Joule-Thomson coefficient is 1 by Cp into what is RT by P? RT by P is V minus B minus V. RT by P is V minus V. Already there is minus V. तो ये गया. This will be minus B by Cp sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर. Minus B by Cp. Minus V by Cp. Is option C correct? Is option C correct, sir? बोलो 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 सर। वी आर हियरिंग सर, आ गया। ओके राइट, नेक्स्ट ये करो। सर आई एम सॉरी यू आर नॉट कमेंटिंग सर, आई एम सॉरी यू पीपल आर नॉट कमेंटिंग, थोड़ा कमेंट करो सर। हाँ, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है? हीटिंग रीजन। एक्सेलेंट। नेगेटिव स्लोप का मतलब इट इज हीटिंग रीजन। एक्सेलेंट। यू डोंट नो द करेक्ट। ये देखो, in each of the following choices there are two expressions given. Select the choice that gives the first defining volume. Do you know the coefficient of volume expansivity is given by, with respect to initial volume, how the volume is changing with respect to temperature by keeping pressure constant? Yes or no sir? This is nothing but coefficient of volume expansivity. First term ये पूछा है सब, 1 by v, ये गलत है। 1 by v dou v by dou t पे ये पॉसिबल है, 1 by माइनस नहीं है सर, ए और डी में सही है। नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी ऑफ आइडियल गैस के लिए, व्हाट इज द वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, व्हाट इज द वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी ऑफ आइडियल गैस पूछा है सर। देखो, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एम आर टी बाई पी वॉल्यूम। आई वॉन्ट डो वी बाई डो टी। You differentiate volume with respect to temperature by keeping pressure constant. आप वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करना, प्रेशर कांस्टेंट है, मास इज ऑलरेडी कांस्टेंट, आर इज, देखो देखो, मास इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, प्रेशर यहां पे वी आर डिफरेंशिएटिंग बाय कीपिंग प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर? यू आर डिफरेंशिएटिंग विद टेम्परेचर, टेम्परेचर का 1 होगा सर। सो देयरफॉर ये होगा। वेरी गुड सर। नाउ बीटा विल बी इक्वल टू 1 by V for ideal gas. For ideal gas होगा, what is dou V by dou Tp? Dou V by dou Tp is mR by P. Excellent sir. So beta is equal to mR by, देखो mR by PV. What is PV? mRT. mR गया तो 1 by T आएगा सर। Always remember whenever you write ideal gas equation, temperature should be strictly in Kelvin. तो it is 1 by T. Option A is correct. Already 1 by V dou V. अच्छा लगा सर? ठीक है सर जी, ये करो। हाँ, फटाफट फटाफट।
हो गया सर, वी आर नियरिंग द स्लोप ऑफ मॉलियर डायग्राम. सो dH by ds चाहिए at constant pressure. मतलब दिस शुड बी रिटन एज डो एच बाई डो एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. वेरी गुड सर. एक बार देखना सर, विच इक्वेशन इज कनेक्टिंग एंट्रोपी, प्रेशर, एंथैल्पी. आई थिंक आई नो. TdS is equal to dH minus VdP. Excellent, sir. Constant pressure. When pressure is constant, the change in pressure is zero. So therefore, TdS is equal to dH. So therefore, dH by ds, that is the slope. देखो dy by dx, dy Mollier diagram is HS. इसका slope क्या होगा? dH by ds. So dH by ds. What is dH by ds? Temperature. So therefore, the slope is equal to temperature. And can this slope be negative? This is absolute temperature. ये केल्विन में है सर. केल्विन में टेम्परेचर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. देयरफॉर द स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर ऑन मॉलियर डायग्राम कैन नेवर बी नेगेटिव. दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये केल्विन में है सर. केल्विन में टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. देयरफॉर द स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर. ये करो. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. ये करो. Come on, come on. 1 kilomole of hydrogen. Number of moles of hydrogen is 1 kilomole. And the molecular mass of hydrogen is 2 kg per kilomole. ठीक है सर जी. Is mixed with certain number of kilomoles of argon. So hydrogen is mixed with argon. Okay. What is the molecular mass of argon, sir? It is 40 kilogram per kilomole. ठीक है सर जी. Such that the mass fraction of argon is 0.8 in the resulting mixture. मुझे पता नहीं है कितने मास का आर्गन लिया, ये पता नहीं है सर. ओके. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किलोमोल्स ऑफ आर्गन इन द मिक्सचर. ध्यान से सुनो. He has given everything about hydrogen. एक सेकेंड. Number of moles is always mass by molecular mass. So if you want mass, it will be number of moles into molecular mass. अगर मुझे mass of hydrogen चाहिए, this will be equal to number of moles of hydrogen into molecular mass of hydrogen. Units को भी चेक करेंगे. So mass of hydrogen is equal to, what is the number of moles of hydrogen? 1 kilomole into mass of hydrogen, molecular weight of hydrogen, 2 kg per kilomole. So kilomole is gone. So mass of hydrogen is equal to 2 kilogram. ये आ गया सर. बट क्लियरली बोला है देयर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड आर्गन. तो बोल रहा है सर. So the mass fraction of argon is 0.8. What do we mean by mass fraction of argon? Mass of argon by mass of argon plus mass of hydrogen. That is the meaning of mass fraction of hydrogen. वो दिया है सर. देखो 0.8 is equal to, what is the mass of argon? I do not know. What is the mass of argon? I don't know sir. What is the mass of hydrogen? 2 kg. So therefore मेरे प्यारे बच्चों, इसको इधर ले लेंगे. देखो एक बार. हो गया सर, हो गया. डोंट वरी. सो देयरफॉर 0.8 into mass of argon plus 2 is equal to mass of argon. So 0.8 into mass of argon plus 8 to 16, 1.6 is mass of argon. So 1.6 is equal to, ये उधर ले जाना तो क्या होगा? 0.2 mass of argon होगा सर. So mass of argon will be equal to 1.6 by 0.2. So mass of argon will be equal to what? 8 kg. But he is not asking mass of argon. He is asking number of moles of argon. So number of moles of argon is equal to mass of argon by molecular mass of argon. The molecular mass of argon is given as 40. So number of moles of argon is equal to, what is mass of argon? 8. Molecular mass is 40. तो ये आ रहा 1 by 5. 1 by 5 is equal to 0.2. क्या ये बात समझ में आई सर सभी को?
क्वेश्चन अच्छा समझ में आया सर आपको? हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन सर? If the question is clear, I'll proceed, sir. Clear? Okay. ये वाला करो. Please tell me whatever I have discussed. ये समझ में आया सर? Whatever is discussed here, ये समझ में आया सर? Point 2 is the right answer. ये करो. ये सिंपल है सर. देखो. At 190 degree, the saturation pressure is this. At 210, saturation pressure is this. At 200, the specific volume is given. किसका specific volume? Liquid का. At 200, the vapor specific volume is given. Using Clapeyron equation, what is the enthalpy of vapor? एक बार देखो. dP by dt is equal to LH by T into Vg minus Vf, sir. What do you mean by dP? Change of pressure by change of temperature. What is the change of pressure, sir? इधर देखो 19.06 minus 12.54, लेकिन ये बार में है, लेकिन आंसर किलो जूल पर केजी में पूछा है सर. 1 bar is 100 किलो पास्कल, तो इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर. टीपी का मतलब चेंज ऑफ प्रेशर. डीटी. व्हाट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर सर? व्हाट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर? 210 माइनस 190. सो 210 माइनस 190, दैट इज डीपी बाई डी टी. स्लोप. TP is change of pressure, DT is change of temperature. So this minus this is DP, this is DP, and this is DT. So whenever it is difference in temperature, it doesn't matter whether it is in Kelvin or degree centigrade. That should be equal to latent heat by. Here it is not the difference of temperature; it should be in Kelvin. So what is the किस temperature पे पूछा है सर? He is asking at 200 degree centigrade. At 200 he is asking latent heat. मतलब ये कौन सा temperature है? 200. 200 means 273 plus 200. It is 473 into vapor specific volume T. Vapor minus liquid. Vapor is 0.1274. देखो ये वेपर का है, लिक्विड का है 1 point. लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 1.1565 into 10 power minus 3. मेरे प्यारे बच्चों, एवरीथिंग इज नोन. TP by dt is LH by T. This should be in Kelvin. तो सर ये क्यों केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया? डिफरेंस है. अदरवाइज आई वुड हैव कन्वर्टेड. इज इट क्लियर? कैलकुलेटर ले लो सर. मैं सारे ले रहा हूं सर. मैं बहुत मेहनत किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मजा नहीं आ रहा आपको. ये आ रहा है 1947 कुछ आ रहा है ना सर? आई थिंक आई एम गेटिंग सम 1947 कुछ आ रहा है. इज इट करेक्ट? करेक्ट. सो 1947. वेरी गुड सर, वेरी गुड. ये क्वेश्चन करो. क्या क्वेश्चन है सर? क्या क्वेश्चन है सर? पढ़ो एक बार. हो गया सर. वी आर नियरिंग. ऑलरेडी हो गया. हाँ हो गया सर, कोई बात नहीं. ये क्वेश्चन पढ़ो सर. कोई बात. देखो, टैंक ए का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब,
टैंक बी वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब, टैंक सी वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। इसमें क्या है सर, इसमें क्या है सर, एक्स केजी ऑफ नाइट्रोजन एट 1 बार 3, एक बार देखना सर, 1 बार 300, 1 बार 300 टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें क्या है सर, इसका एक्स केजी नाइट्रोजन, इसका वाई केजी ऑक्सीजन। क्वेश्चन को समझो सर, फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सर एक्चुअली टाइपिस्ट कुछ काम से ये सारे टाइप किया था, ये क्वेश्चन टाइपिस्ट नहीं किया सर, बिकॉज आई वांटेड टू इंक्लूड। तो मैं बहुत कोशिश किया लेकिन ऐसा निकल के आया। तो यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे ब्लैक, चलो एडजस्ट कर लेना, मैं अपने साइड से कोशिश किया सर। ही टाइप ऑल बट एक ही आई टाइप इट। चलो देखो सर, कंसिडर टैंक से भी, मेरे प्यारे बच्चों एक सेकंड के लिए रुको। अगर इसमें वाई के जी ऑक्सीजन को निकालो, वाई के जी ऑक्सीजन, जस्ट ध्यान से, इफ यू रिमूव वाई के जी ऑक्सीजन, इफ यू रिमूव वाई के जी ऑक्सीजन, व्हाट इज लेफ्ट, एक्स के जी नाइट्रोजन एट 300 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। कूलली देखना सर, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो, आप वाई के जी ऑक्सीजन को हटा देना तो क्या बचेगा, अगर पूरे ऑक्सीजन को निकाल दो क्या बचेगा सर, इफ आई रिमूव ऑल ऑक्सीजन व्हाट इज लेफ्ट, एक्स के जी नाइट्रोजन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम 300 केल्विन, एक्स के जी नाइट्रोजन 300 केल्विन 1 मीटर क्यूब। तो व्हाट विल बी द प्रेशर सर, अगर हम ऑक्सीजन को निकाल दिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी 1 बार। The partial, if I remove the oxygen, the partial pressure of nitrogen, what is partial pressure? So दो मिक्सचर में उसको हटा देना सर, जो जिसका पार्शियल प्रेशर चाहिए उसको रखो, बाकी सारे को निकाल देना। I remove oxygen, if I remove oxygen there will be x kg nitrogen, yes, at 300 Kelvin, volume 1 मीटर क्यूब। So if this is the situation, what will be the pressure? 1 बार। Similarly, आप नाइट्रोजन हटा देना, आप नाइट्रोजन हटा देना। सो इफ आई रिमूव नाइट्रोजन, व्हाट इज दैट, 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब। सो वाई के जी ऑक्सीजन, वाई के जी ऑक्सीजन, सो 300 केल्विन 300, व्हाट विल बी द प्रेशर, सो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1 बार। दोबारा बता रहा हूं सर, अगर नाइट्रोजन को निकाल दिए दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑलरेडी यू नो इफ नाइट्रोजन इज रिमूव्ड इट इज सेम। अगर इसमें से नाइट्रोजन निकाल दिए, ये तो सेम है, तो प्रेशर विल बी 1 बार। इसमें से ऑक्सीजन निकाल दिए, इफ आई रिमूव ऑक्सीजन इट विल बी सेम एज दिस, द प्रेशर इज 1 बार। सो नाउ बोथ आर देयर, व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो ये प्रेशर पूछा है सर, टोटल प्रेशर इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू 2 बार। इज इट ओके सर? क्या मजेदार क्वेश्चन है सर ये। नहीं आया समझ में, लेट मी रिपीट सर। सो इफ आई रिमूव नाइट्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, अगर नाइट्रोजन निकाल दिए तो बचा क्या है सर, वाई के जी ऑक्सीजन 300 केल्विन 1 मीटर क्यूब। तो प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 बार। यस। सो अगर मैं ऑक्सीजन को निकाल दिया, इफ आई रिमूव ऑक्सीजन, एक्स के जी नाइट्रोजन 1 मीटर क्यूब 300, तो क्या व्हाट विल बी प्रेशर, 1 बार। सो 1 बार नाइट्रोजन का है, 1 बार ऑक्सीजन का है, सो टोटल विल बी सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर 1 + 1। व्हाट अ क्वेश्चन दिस इज, जबरदस्त क्वेश्चन है सर। hmm, अभी देखो क्या करे सर। अभी 4 क्वेश्चंस बचे हैं सर, व्हाट टू डू, 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। स्टॉप करें? बहुत हेवी हो गया सर। 4 क्वेश्चंस, ओनली 4 आर लेफ्ट। आज का क्लास अच्छा लगा सर? आई थिंक आई शुड डू, ये करो सर। आई विल बी डूइंग सर। नो नो आई विल कंप्लीट। तो जिद पे आ गए तो जिद पे ही कर लेंगे। आइए पढ़ो। ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कंटेन्स an ideal gas mixture of nitrogen molecular mass is given and gamma is given and argon 2 kg argon. Okay, देखो, let us take 1 as nitrogen and 2 as argon.
So what is the mass of nitrogen, sir? What is the mass of nitrogen? 1 kg. ठीक है. What is the molecular mass of nitrogen? 28. Gamma of nitrogen is 1.4. And the mass of argon is, what is the mass of argon? देखो 2 kg argon, 2 kg, 2 kg. ठीक है. And the molecular mass of argon is 40 and gamma 2 is equal to 1.667. ठीक है sir. So the total pressure is 100 and the temperature is this. The gas expands at constant volume until the volume increases by 1 meter cube. The initial volume is, देखो देखो एक सेकंड, देखो एक सेकंड. It is a beautiful question on mixture of gases. It is a beautiful question on mixture of gases. ध्यान से सुनो. PV is equal to MRT. Initial pressure, initial mass, total mass MR, initial temperature T1. ठीक है सर. Now देखो, ये मिक्सचर है सर. What is the total mixture का mass? It will be M1 plus M2. M1 is 1, M2 is 2. The total mixture mass is 3 kg. But यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? The total pressure P1 is दिया है सर. P1 is कहां पे दिया है सर? 100 किलो पास्कल, 300 केल्विन. 100 kilo Pascal and the temperature is 300 Kelvin. ठीक है सर. Then he is asking the initial volume sir. वो पूछ रहा है initial volume पूछ रहा है. तो आप बोलेंगे सर 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 वो बोला ना volume. देखो it is heated at a constant pressure until the volume increases by. मतलब change in volume is given. Increases by का मतलब difference. So change in volume is given, sir. After heating, the final volume minus initial volume, the difference is given. Initial volume is not given in the question. Okay. तो कैसे करेंगे सर? यहाँ पे, my dear students, please note down that M1 plus M2 is 3. तो ये मिक्सचर के लिए अप्लाई किया सर. मिक्सचर मास is 3 kg. This will be the मिक्सचर का R होना चाहिए. So if I apply this equation to the mixture, there is nitrogen argon mixture. This will be R of the mixture. Is it okay, sir? This will be R of the mixture. तो क्या करेंगे सर? इधर देखो, R of the mixture. You know R of the mixture is equal to M1 R1 plus M2 R2 by M1 plus M2. बिल्कुल सही है सर. तो but what is R1 sir? R1 is 8.31 for nitrogen का है सर. Molecular weight is 28 and R2 is R bar by argon का molecular mass is 40. तो यहां पे R1 is known, R2 is known. देखो यहां पुट कर लेना सर. So therefore the equivalent gas constant, so the equivalent gas constant is M1. What is M1 sir? M1 1 kg. 1 kg. R1 is 8.314 by 28 plus what is M2? 2 kg. 8.314 by 40 by M1 plus M2. क्या आप मुझे इक्विवेलेंट गैस कांस्टेंट दे सकते हैं? बोलो बोलो. .2375. तो यहां पुट कर लेना सर. So therefore you put it here. So we have calculated mixture का equivalent gas constant find out किए. तो यहां पुट करना सर. Put it here. Initial pressure is 100. Volume I don't know. Total mass is 1 plus 2. Mixture mass is 3 kg and equivalent gas constant is 0.2375 and the initial temperature is 300 Kelvin. तो यहां से I can calculate the initial volume. How much is the initial volume sir? Yeah, 2.18. Yes. Is this correct? Correct, correct, correct. Excellent, sir. Excellent. अब क्या करेंगे सर आगे? Now, this is first part. There is a second question.
देखो, there are two questions in this. The second question is the heat added is approximately the initial volume is 2.137 and the change in volume is given. The volume increases by 1 meter cube. The pressure is remaining constant at 100 kilopascal. Is it correct, sir? एक बार देखो. The pressure is constant, volume increases by बोला है, not increases to. अगर increases to बोलता है तो फाइनल होगा. Increases by means difference is 1 meter cube. और क्या दिया है सर? हाँ, he is asking what is the heat added. कैसे करेंगे सर? मस्त क्वेश्चन है सर, मैं आपको बताऊंगा. डोंट वरी सर. What is the heat added? D dash Q is equal to du plus D dash W. Excellent sir. तो d dash q is equal to heat added du mcv t2 minus t1 प्लस यहां पे वर्क है सर. विच वर्क इज टेकिंग प्लेस सर? आई नो वेरी वेल. कौन सा वर्क हो रहा है सर यहां पे? बताओ सर, कौन सा वर्क हो रहा है सर यहां पे? कांस्टेंट प्रेशर वर्क इज प्रेशर इंटू V2 माइनस V1. ये तो वर्क हो रहा है सर. ठीक है सर. नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज, बट ये पूरा मिक्सचर है सर, इंडिविजुअल नेम. M, what is CV? R by gamma minus 1 into T2 minus T1 plus P into V2 minus V1. Excellent, sir. I have written CV. देखो, this equation I have applied for complete mixture. अब ये individual argon nitrogen नहीं है सर, ये mixture के लिए अप्लाई किया. Mixture mass, mixture CV, mixture के है सारे. ठीक है सर. Now देखो, now what I do is CV can be written as R by gamma minus 1, लेकिन यहां पे ये CV मिक्सचर का है तो ये R मिक्सचर का होना चाहिए. ओके, व्हाट इज MrT2? इट इज P2V2. व्हाट इज MrT1? P1V1 बाई गामा माइनस 1 प्लस ये किसका गामा है सर? मिक्सचर का, प्लस P इंटू V2 माइनस V1. एक्सलेंट सर. सो द हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, मित्रों आराम से, टेंशन नहीं लेने का. सो द हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू P1 P2 इज सेम, तो P को बाहर ले लेना, V2 minus V1 because P1 P2 is same by gamma minus 1 plus P into V2 minus V1. So therefore the heat transfer is equal to P into V2 minus V1. P into V2 minus V1 बाहर लेना, 1 by gamma minus 1 plus 1. Therefore now देखो, the heat transfer is equal to P into V2 minus V1. तो ये गामा माइनस 1, तो ये होगा गामा बाई गामा माइनस 1. दिस इज द इक्वेशन सर. आई नो द प्रेशर, आई नो द चेंज इन वॉल्यूम. द प्रेशर इज 100 किलो पास्कल एंड द चेंज इन वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब डेल्टा वीज, बट आई डोंट नो गामा. गामा ऑफ द मिक्सचर, डायरेक्ट मोल निकाल. क्या ये बात समझ में आया सर? देखो, अब मैं बताता हूं गामा किसका है सर? इक्विवेलेंट है. बहुत सिंपल है सर, टेंशन मत लेना सर, बहुत सिंपल है. तो कैसे कैलकुलेट करूं सर? गामा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सीपी इक्विवेलेंट बाय. तो व्हाई आई एम डूइंग इन दिस मैनर इज वी डोंट नो वेदर ही बीच में वो सीपी पूछेगा, सीवी इक्विवेलेंट पूछेगा, इसलिए ये सब कर रहा हूं सर मैं, इसलिए मैं कर रहा हूं. तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट सीपी? M1 CP1 plus M2 CP2 by M1 plus M2. Similarly, CV equivalent is M1 CV1 plus M2 CV2 by M1 plus M2. Excellent, sir. M1 is 1, M2 is 2. Okay, now you tell me. Yes. तो why I am doing all this is tomorrow अगर एग्जामिनेशन में आपको CP equivalent, CV equivalent, R equivalent पूछता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं सर. अब देखो, आई डोंट नो CP, ध्यान से सुनो सर. देखो एक सेकंड. CP इज इक्वल टू गामा R बाई गामा माइनस 1. तो CP1 इज इक्वल टू गामा 1 R1 बाई ये. तो 1 इज नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन के लिए व्हाट इज CP1 सर? गामा 1 नाइट्रोजन के लिए 1.4, R इज 8.314 बाई नाइट्रोजन का 8.314 बाई 28 इंटू, देखो गामा 1 is 1.4 for nitrogen, R for nitrogen is 8.314 by 28, gamma 1 minus 1. तो gamma is 1.4 minus 1 is 0.4. क्या आप मुझे CP1 दे सकते सर? सर बोलो सर, हो गया सर, वी आर नियरिंग.
एंड व्हाट विल बी CV1 सर? CP by CV is gamma. तो देखो CP1 by CV1 is equal to gamma 1. Gamma 1 is 1.4. तो डिवाइड बाई 1.4, तो CV1 आ रहा है 0.7423 मेरे प्यारे दोस्तों. सिमिलरली ओके, थैंक यू थैंक यू. हाँ, ये हो गया सर. सिमिलरली कैन आई कैलकुलेट, देखो एक बार, कैन आई कैलकुलेट मित्रों, मित्रों आराम से, टेंशन नहीं लेने का. कैन आई कैलकुलेट CV2 R2 बाई गामा 2 - 1. R2 इज, ये किसका है सर? ये आर्गन का है. आर्गन इज दिस. गामा फॉर आर्गन इज 1.667. 1.67 - 1 इज 0.667. तो ये बताइए सर कितना आ रहा है सर? फटाफट फटाफट. मैं डिटेल में कर रहा हूं सर. गलत है सर? सीपी बाई सीवी इज गामा. तो इसको गामा से मल्टीप्लाई कर, इसको सीवी को गामा से मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट 0.51946. Once this is known, I can calculate equivalent CV equivalent CP. So from equivalent CP equivalent CV, I can calculate equivalent gamma. कर सकते सर अभी? So you will get, चलो नहीं कर सकते, मैं ही कर दूंगा सर, आपसे नहीं हो पाएगा. CV equivalent is equal to M1 is 1, CV1 is 0.7423 plus M2 is 2, CV2. What is CV2? 0.3116 by M1 plus M2. Please give me the value of CV equivalent. Purposefully, I am doing it in a detailed manner. Then CP equivalent is equal to M1 CP1. What is CP1? 1.03925 plus M2 CP2. What is CP2? 0.51946 by M1 plus M2. So gamma equivalent is equal to CP equivalent by CV equivalent. So divided by 0.45516. तो ये आ रहा है ऑलरेडी. CPE is known, CVE. This divided by this CPE CVE. तो ये आ रहा है 1.522. Once it is known, यहां पुट करना 1.522, 1.522, 1.522 यहां पुट करना सर. देखो एक बार. सो 1.522. सो हीट ट्रांसफर पूछा है सर. सो हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू प्रेशर इज 100, द चेंज इन वॉल्यूम इज 1 into gamma equivalent 1.522 by gamma equivalent minus 1. 1.522 minus 1 is 0.522. This आ गया सर. टू 91.5. 291.5. क्या है यार वो क्वेश्चन? यस यस आया. वंडरफुल सर. ओके, विल टेक द लास्ट क्वेश्चन. ये he is asking compressibility factor. Can you tell me what is compressibility factor? इधर देखो. PV by MRT is known as compressibility factor. For ideal gas, PV is equal to MRT. MRT by MRT is 1. For ideal gas, compressibility factor is 1. तो इस गैस के लिए पूछा है.
What is the pressure given, sir? Pressure is given as 18 point. So pressure is 18.56. Mega means 10 power 3 kilopascal. Megapascal. Megapascal is 10 power 3 kilopascal. And what is the volume given, sir? 6.14 liter. Sorry, 6.4 liter means 10 power minus 3 meter cube. Very good, sir. What is the mass given, sir? Mass is given as 1 kg. Very good, sir. And R, what is R, sir? R bar, 8.314 by, what is the molecular weight of this one? Kitna diya, sir? The molecular weight is 16 RB hai. And what is the temperature, sir? It should be in Kelvin, 13 degrees centigrade. 273 plus 13 is 286. And please note down that these critical pressures and critical temperatures are superficial in this. तो अगर आपको reduced quantities calculate चाहिए, it will be that volume by critical. समझ में आ रहा है? ये अभी इसमें जरूरी नहीं है. Calculate करो सर. Calculate करो. So 18.56 into 10 power 3 and the volume is 6.4 into 10 power minus 3 by mass is 1. R is 8.314 by 16. That 16 will go to the top and the temperature is 286. Calculate karo, sir. Very good. Very good. Someone said point. आ रहा है 0.799 और 0.8. आई थिंक कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है. Yes, correct. So I tried my level best. अभी 2 क्वेश्चंस बचे हैं सर, अभी हम रोक देंगे. So क्या ये सेशन यूजफुल है सर आपको? बिकॉज नाउ आप सब्जेक्ट छोड़ दो सर, अभी कुछ बात करेंगे सर. विल टॉक. आई टेक 5 मिनट्स. क्या ये सेशन आपको यूजफुल हुआ सर? आप कर लेना, उसके मैं पीडीएफ दे दूंगा सर. मैं अपने साइड से कोशिश किया सर. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. सो आई हैव कवर्ड टेरिफिक क्वेश्चन सर. And please note down that my itna dekho, we have covered in every question. In every question, my dear loving students, in every question there were 2 to 3 questions, 2 to 3 questions, 2 to 3 questions. तो do you next subject कौन सा करूं सर, आप बताइए. Thank you Anil, thank you Anil. In fact, अगर आप काउंट करेंगे तो 88 to 90 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व सर. एक्चुअली एक्सी लेवल के क्या किए सर हम, मतलब बहुत ही अच्छा किए सर, बहुत ही अच्छा किए सर. सॉम वेरी गुड. विल स्टार्ट सॉम. मुझे ना 1-2 दिन का ब्रेक दीजिए सर, थोड़ा आई हैव सम पर्सनल वर्क्स टू अटेंड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू पीपल आर नॉट. नेक्स्ट विल बी सॉम ओनली. Very good. So next will be SOM. SOM. उसके बाद fluid. उसके बाद like TOM. उसके बाद mathematics. Likewise will do. And it's a humble request to all of you, because at this age I have taken 7 hours of session at this age. And you should respect this. I am telling you. मतलब जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, you should get motivated from us, sir. And kindly after the class leave a message. Comments में message करना कि class कैसा लगा सर आपको. And you should respect this. I am telling you. जैसे you should get motivated, sir. Please after the class leave a message. Very good. I'll teach. Don't worry. Industrial engineering. So luckily at our institute, subject wise is also available.
complete course is also available. Whatever the subject you want, you can take that. Okay. So first I'll be starting. Don't worry. Production se hum start karenge. So after the class, please, it's a request, sir. Leave a message. Message leave करना. तो बीच बीच में स्ट्रीम का प्रॉब्लम हुआ तो भी नहीं छोड़े सर हम. ठीक है. Thank you, Anil. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So I'm ending the session. Don't forget to leave a comment. Okay. Bye bye. Next, we'll be starting some terrific questions, XC level questions. So your ME will become easy. Okay. ठीक है. चलो. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. I'm ending the session. Okay.